हॅलो. हा सामना कन्सल्टंट प्रीमियर लीग मध्ये अतिशय उत्कंठावर्धक सामना आहे. या सामन्यामध्ये नाशिक पेनकिलर संघासमोर ओम वॉरियर्स संघाने हो अच्छा हॅलो. पण मला कोरच नाही, तुम्ही काय अपडेट करू? नाही कॉमेंट्री सांगता आता अंदाज सांगितलं राहू द्या, थोडा आवाज त्यांना ऐकू द्या. ओम वॉरियर्स संघासमोर ओम वॉरियर्स संघाने 111 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. ते पेनकिलर संघासमोर सुदर्शन पाटील काहीसा गुडलेंग तसा टप्पा टाकलेला आहे आणि डॉट चेंडू टाकलेला आहे त्यांनी, तो साखर डुकळे यांना. डॉक्टर सुदर्शन पाटील अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करताना आपल्या संघासाठी या षटकावर ह्या मॅचचा निर्णय ठरवला जाणार आहे. हे षटक कुठल्या संघाकडून झुकतं ते आपण बघूया. सुदर्शन पाटील यांचा काहीसा आखूड असा टप्पा भिरकवलेला आहे तो फाईन लेगच्या दिशेने. फाईन लेग त्याच्या मागे धावतात, बॉल अडवतात, तोपर्यंत दुसरी डाव चोरलेली आहे ती फलंदाजांनी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते आहे ती लक्षाजवळ. अजूनही त्यांना साधारण 16 चेंडूमध्ये जवळजवळ 48 धावांची आवश्यकता आहे. 8 षटकार किंवा 4 षटकार आणि 4 चौकार मारले तर ही मॅच होऊ शकते. आणि हा त्याच्यातला उत्तुंग असा मारलेला फटका त्याच्या खाली जे, आणि हा षटकार सागर डुकळे यांच्या बॅट मधून येत आहे तो उत्कृष्ट षटकार. आपला आवाज जातो का यांना मध्ये मध्ये मध्ये? हॅलो. आणि हा षटकार पहिला षटकार आलेला आहे तो. अजून त्यांना 7 षटकारांची आवश्यकता. बघूया काय घडतं ते. सुदर्शन पाटील पुढील चेंडू डुकळे यांना. गुडलेंगला टाकलेला चेंडू भिरकवलेला हवेमध्ये आणि बॉल जात आहे तो सीमा रेषे पार आणि हा ट्रू लॅप चौकार. याच्या आधी जो मारला होता तो षटकार त्याचे स्पॉन्सर आहे डॉक्टर अथर्व सिद्धी क्लिनिक चे डॉक्टर दिनेश ठाकूर आणि डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर श्री गजानन डेंटल क्लिनिक यांच्यातर्फे मॅक्सिमम सक्सेस अवॉर्ड देण्यात येत आहे. तर आधीचा षटकार त्यासाठी पात्र झालेला आहे. सागर डुकळे सुंदर फलंदाजी करताना पेनकिलर संघामध्ये चैतन्याचे वातावरण पसरलेले आहे. आखुडाचा टप्पा, पंचांचा इशारा, अतिरिक्त धाव, वाईडचा इशारा, अतिरिक्त धाव वाढते. या अतिरिक्त धावा, चौकार, षटकार यांच्या साहाय्याने पेनकिलर संघ नक्कीच सामना जिंकायच्या तयारीमध्ये. पुन्हा एकदा आखूड टप्पा आणि काहीशी सोयीरसी गोलंदाजी केलेली आहे ती सुदर्शन पाटील यांनी. 1 षटकार आणि 1 चौकार खाल्ल्यानंतर ते थोडेसे आपल्या लेंथ मध्ये परिवर्तन करताना, पण त्यामध्ये त्यांचा मारा थोडा सोयीर झाला आणि अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये वाढ होत आहे. पुन्हा एकदा सागर डुकळे सामना करतात. सुदर्शन पाटील यांचा गुडलेंगवरचा टप्पा असलेला चेंडू थ्रो केलेला आहे तो डॉक्टर किरण तोरणे यांनी. फक्त एकच धाव्यावर समाधान मानावं लागले. ते लॉंग ऑफला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे ते डॉक्टर किरण तोरणे यांनी. ते थ्रो करतात आपल्या उजव्या हाताने पण फलंदाजी करतात आपल्या डावखुऱ्या हाताने. बघूया सुदर्शन पाटील पुढील चेंडू. रोशन पाटील सामना करतील. आकुडाचा टप्पा कट करण्याचा प्रयत्न केला पण बॅटला आतमध्ये लागल्यामुळे डॉक्टर मयूर पंजाबी जे काय संघमालक आहेत त्यांच्याकडे गेला आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण करून फक्त 1 रन दिला. त्याच्याकडे नाही, मध्येच विचारावं लागेल. नाही ना, आता 12 चेंडूंमध्ये किती धावांची आवश्यकता आहे? 12 चेंडू 38 धावा. 12 चेंडू 38 धावांची आवश्यकता. हे थोडस अशक्यप्राय असं आव्हान वाटतं आहे, पण क्रिकेटमध्ये तुम्ही काही बाकी तर करू शकत नाहीत आणि काहीही पॉसिबिलिटी असतात. बघूया ओम वॉरियर संघासाठी पुढील षटक घेऊन आलेले आहेत ते डॉक्टर कपिल पाळेकर.
अशा परिस्थितीमध्ये पेनल्टीमेट षटक जे काय असतं ते आपला बेस्ट बॉलर टाकत असतो नेहमी. या षटकात आपल्याला या सामन्याचा निर्णय नक्कीच कळणार. फुलटॉस असा चेंडू भिरकवलेला आहे तो सचिन यांच्याकडे आणि त्यांचा उत्कृष्ट असा झेल आणि या झेलच्या साहाय्याने कपिल पाळेकर यांनी आपल्या संघाला विजयाच्या नजीक पोहोचवलेलं आहे. हे उत्कृष्ट बळी मिळवलेलं आहे. रोशन पाटील यांची अतिशय महत्वाच्या क्षणी विकेट पडलेली आहे. त्यामुळे पेनकिलर संघामध्ये जरा चिंतेचे वातावरण पसरलेले आहे. आणि हा झेल पात्र होत आहे तो डॉक्टर दिनेश ठाकूर अथर्व सिद्धी क्लिनिक आणि डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर गजानन डेंटल क्लिनिक यांच्या उत्कृष्ट झेलसाठी. सचिन यांनी तिथं अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन घडवलेलं आहे. लॉंग ऑन जणू काही ते त्यांचं स्वतःचं घरच आहे असं त्यांनी तिथं दाखवलेलं आहे. आणि त्या घरामध्ये कोणालाही ते प्रवेश करू देत नाही आणि आपल्या मागेही जाऊ देत नाही चेंडूला. उत्कृष्ट अशी क्षेत्ररक्षण कपिल पाळेकर यांचा. पुढील चेंडू 11 चेंडू 38 धावा आणि गुडलेंगला टाकलेला चेंडू डॉक्टर सचिन देवरे नवीन बॅट्समन आणि ते मिस झालेले आहेत. या प्रकारे पुन्हा एक असा निर्धाव चेंडू डॉक्टर आणि हा ट्रू लॅब निर्धाव चेंडू. गुड बॉलिंगचं अतिशय सुंदर षटक टाकत आहेत ते डॉक्टर कपिल पाळेकर आपल्या संघासाठी. आपल्या संघाला विजयाकडे नेताना कपिल पाळेकर पुढील चेंडू घेऊन येणार आहेत ते डॉक्टर सचिन देवरे जे की भूल तज्ज्ञ आहेत. कपिल पाळेकर स्वतः पॅथॉलॉजिस्ट आहेत. या इथं जवळजवळ 100हून अधिक कन्सल्टंट सुपर कन्सल्टंट नाशिक जिल्ह्यातील जमा झालेले आहेत. त्यांचे कुटुंबीय पण जमा झालेले आहेत आणि महात्मा नगर परिसर एकदम दर्शकांनी खचाखच भरलेला आहे. लोकांना बसायला जागा नाही. लोक तिकिटासाठी आतुरतेने वाट बघतायत पण तिकीट मिळणं अवघड झालेलं आहे. पुन्हा एकदा आणि हा कपिल पाळेकर यांनी झेल सुटलेला आहे. तिथे सुंदर असं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे ते किरण तोरणे यांनी. बॉल अडवतात परत देतात तोपर्यंत फक्त 2 धावा. या 2 धावांच्या साहाय्याने आता लागतायत ते 9 चेंडूमध्ये 9 चेंडू 36 धावा. 9च्या 9 चौकार मारले तर सामना कदाचित पेनकिलर संघाकडे झुकेल. बघूया. आणि स्लोवर वन टाकायचा प्रयत्न पण तो थोडासा स्वैर असा गेल्यामुळे पंचांचा इशारा वाईडचा आणि अतिरिक्त धावसंख्येमुळे 9 चेंडूमध्ये फक्त 35 धावांची आवश्यकता आहे ती पेनकिलर संघाला. आणि उत्कृष्ट असा भिरकवलेला आहे मिड विकेटच्या दिशेने. बॉल जातोय तो सीमा पार. अजूनही त्यांना 8 चौकारांची आवश्यकता. 8 चेंडू 31 धावा. सचिन देवरे यांचा उत्कृष्ट असा फटका. त्यांनी गुडलेंक वरील टप्पा हलकासा त्यांनी टटवलेला आहे तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. नाही आले ना. अरे स्कोर सांगायला स्कोरही कळत नाही काय. 8 चेंडू. अरे आज तिकडे असेल ते. 8 चेंडू 31 धावा आणि गुडलेला टाकला चेंडू भिरकवलेला तो सचिन यांच्याकडे आणि त्यांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केलेला आहे आणि बॉल गेलेला आहे. तो बॉल कुठे पडलेला आहे ते क्षेत्ररक्षकाला विचारण्यात येत आहे. दोन चौकारानंतर उत्कृष्ट असा निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे तो कपिल पाळेकर यांनी. तिकडे विचार तिकडे. 6 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 27 धावा. बघूया षटकामध्ये चमत्कार घडतात. आता आपण बरेचसे चमत्कार बघितलेले आहे. 6 चेंडू 23 धावा सुद्धा निघालेल्या होत्या पण ते पेनकिलर संघाविरुद्ध रोबोटॉक संघाने काढलेल्या होत्या. सेम आता कंडिशन आहे. फक्त 6 चेंडू मध्ये 27 धावा आहे पण त्या पेनकिलर संघाला स्वतःला पाहिजे आहे. बघूया आता समोर त्यांना बॉलर कोण मिळत आहे. बॉलर दिलेला आहे त्यांनी तो डॉक्टर सुदर्शन पाटील यांच्या रूपामध्ये. त्यांनी मागचं षटक चांगलं टाकलं होतं. साधारण 14-15 रन दिले होते फक्त.
जर आता 27 धावा लागताय आणि त्या हिशोबाने जर त्यांनी 15 रन दिले तर सामना नक्कीच ते खिशात टाकतील. आणि सागर डुकळे अतिशय सुंदर फलंदाजी करतायत. त्यांच्याकडून पेनकिलर संघाला खूप आशा आहे. त्यांनी जर 5 षटकार मारले आणि मॅच जर जिंकवली तर डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांच्याकडून त्यांना 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात येत आहे. हे सध्या आवाज येत आहे का रे? 500 रुपयाचं बक्षीस. आणि आकुडाचा टप्पा. सुंदर असा निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे तो सुदर्शन पाटील यांनी. ट्रू लॅब निर्धाव चेंडू. आणि हा भिरकवलेला आहे हवेमध्ये झालेला चेंडू. त्याच्या खाली येते डॉक्टर कपिल पाळेकर. उत्कृष्ट असा झेल घेताना पण तो सुटलेला आहे. 2 धावा पूर्ण. 4 चेंडू 26 धावा. बघूया काय घडतं ते. 4 चेंडू 26 धावा. या 4 चेंडू मध्ये 26 धावांची आवश्यकता. चारही षटकार जर मारले तरी सुद्धा हा सामना ओम वॉरियर यांनी खिशात घातलेला आहे. जर सुदर्शन पाटील यांनी एकही अनैतिक चेंडू टाकला नाही, सगळे न्यायिक चेंडू जर टाकले तर ते मॅच आपल्या खिशात घातलेली आहे त्यांनी. आणि सामना जवळजवळ ओम वॉरियर संघाने आपल्या खिशामध्ये घातलेला आहे. सागर डुकळे यांची एकतर्फी फलंदाजी पेन किलर संघाला सामना जिंकवण्यात थोडीशी अपयशी ठरली. त्यांना दुसऱ्या बाजूने सुद्धा षटकारां चौकारांची अपेक्षा होती, पण ती साथ न मिळू शकल्यामुळे सामना पेन किलर संघाच्या हातातून निसटलेला दिसतो आहे. सुदर्शन पाटील. आकुड असा चेंडू. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. लोटस हॉस्पिटल निर्धाव चेंडू. पुढील चेंडू घेऊन येत आहे ते डॉक्टर सुदर्शन पाटील. 2 चेंडू बाकी आहेत. गुडलेंकला पडलेला टप्पा. मिलिंद गांगुर्डे यांचे सुंदर झेल आणि सामना गमावलेला आहे तो पेनकिलर संघाने. 1 चेंडू मध्ये जवळजवळ 26 धावांची आवश्यकता. 25 1 चेंडू 24 धावा. लगातार 3 नो बॉल भेटल्यावरच हा सामना पेनकिलर जिंकू शकतो, नाहीतर हा सामना ओम वॉरियरने खिशात घातलेला आहे. आणि या प्रकारे ओम वॉरियर संघ क्वालिफाय झालेला आहे तो सेमी फायनल मध्ये. उत्कृष्ट असं फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणचं प्रदर्शन केलेलं आहे ओम वॉरियर संघाने. आणि ते सामना जिंकून डॉक्टर मयूर पंजाबी संघ मालक डॉक्टर मयूर पंजाबी ओम वॉरियर संघाचे अतिशय खुश. आणि ते पोहोचलेले आहेत ते सेमी फायनल मध्ये. याच्या पुढील सामना आहे तो डॉक्टर भूषण नेमाडे यांचा संकल्प सुपरनोवा वर्सेस डॉक्टर आनंद नागरे यांचा सह्याद्री शेराज. या 2 तुल्यबळ संघांमध्ये बघूया. ती एक व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल आहे, ज्याच्यामध्ये जो जिंकेल तो सेमीफायनलला डेफिनेटली क्वालिफाय होणार.
आजची मॅच नाशिक पेन किलर वर्सेस ओम वॉरियर्स ही क्वार्टर फायनल सारखीच मॅच होती. यामध्ये नाणेफेक जिंकत पहिले क्षेत्ररक्षण नाशिक पेन किलर्सनी घेतलं होतं आणि एक 10 षटकांमध्ये ओम वॉरियर्सने अत्यंत घणाघाती अशी फलंदाजी करत 111 धावा फलकावरती लावल्या होत्या. त्याच्या प्रत्युत्तरात मात्र नाशिक पेन किलर तेवढी धावसंख्या गाठू शकला नाही आणि नाशिक पेन किलर्स या सामन्यामध्ये पराभूत झालेला आहे. ओम वॉरियर्स संघाचा विजय झालेला आहे. तर मॅचमध्ये सर्वात जास्त सिक्सेस डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे यांच्या बॅटमधनं आलेले आहेत. त्यामुळे गजानन डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दिनेश ठाकूर आणि डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर यांच्या हस्ते मॅक्झिमम सिक्सेसचा अवॉर्ड मी डॉक्टर विशाल गुंजाळ सरांना विनंती करतो की त्यांनी मिलिंद गांगुर्डे सरांना द्यावा. थँक्यू.
यानंतर बेस्ट कॅच ऑफ दिस मॅच चा अवॉर्ड गजानन डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दिनेश ठाकूर, डॉक्टर मीनाक्षी दिनेश ठाकूर यांच्यातर्फे बेस्ट कॅच ऑफ द मॅच हा अवॉर्ड जातोय डॉक्टर सचिन पाटील यांना. मी विशाल गुंजाळ सरांना परत एकदा विनंती करतो की त्यांनी हा अवॉर्ड द्यायचा आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन सचिन. थँक्यू विशाल सर. पहिला चेंडू डॉक्टर भूषण नेमाडे. निलेश आहेर यांनी तो चेंडू कव्हरच्या दिशेने मारला आणि संघाची धावसंख्या संघाचा अकाउंट ओपन केलेला आहे. आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये आजच्या तिसरा दिवस दुसरी मॅच संकल्प सुपरनोवा वर्सेस सह्याद्री शेराज. आणि सह्याद्री शेराजची प्रथम फलंदाजी संकल्प सुपरनोवा. क्षेत्ररक्षण नाणेफेक जिंकून त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. ही मॅच उपांत्य फेरीसारखीच आहे कारण या मॅच मध्ये जो जिंकेल तो उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. डॉक्टर भूषण नेमाडे सुशांतसाठी हा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू 2 डॉट्स निर्धाव चेंडू. भूषण नेमाडे यांची सुरेख अशी गोलंदाजी. धावसंख्या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1. सुरेख असा चेंडू तटकावलाय त्यांनी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. तिथे सुंदर फिल्डिंग केली आहे डॉक्टर जितेंद्र देशमुख यांनी आणि फक्त 1 धाव पूर्ण करू शकली सह्याद्री शेराची टीम. याबरोबर धावसंख्या 2. निलेश आहेर पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सामना करतील भूषण नेमाडे यांचा. हा चेंडू सुंदर असा चेंडू ऑफस्टंपच्या दिशेने. भूषण एक सुरेख गोलंदाजी करताना दिसत आहे. त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये वैविध्य तर आहेच पण पेस, बाउन्स, टप्प्यामध्ये अचूक बदल या सगळ्या गोष्टी भूषण नेमाडे यांच्या गोलंदाजीत आपल्याला दिसत आहे. पुढचा चेंडू हा पुन्हा एकदा वाईड. मात्र पंचांनी हा वाईड घोषित केलेला चेंडू आणि अवांतर धावेचा पण खातं उघडलेलं आहे. अशा तऱ्हेने संघाची धावसंख्या 3. हा मला वाटतं शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकामधला. डॉक्टर भूषण नेमाडे निलेश आहेर. हा चेंडू खाली राहिला होता पण तेवढी सुंदर अशी फलंदाजी केलेली आहे निलेश आहेर यांनी आणि हा चेंडू मात्र सीमापार 4 धावा चौकार. शेवटचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या दिशेने थोडासा खाली राहिलेला चेंडू पण सुरेख अशी फलंदाजी केली निलेश आहेर यांनी आणि पहिला चौकार
सह्याद्री शेराचा. याबरोबर पंकज निकम नाही. डॉक्टर वैभव पवार गोलंदाजीत बदल, संघाचं दुसरं षटक घेऊन येताना दिसत आहेत. डॉक्टर वैभव पवार डावखुरे, रॉंग फुटेड ऍक्शन, थोडस वेगळं वैविध्यपूर्ण. पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू सोहेल तन्वीर सारखी थोडीशी ऍक्शन, थोडस साधर्म्य. सुशांत सामना करतील दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा. क्षेत्ररक्षण मात्र सजवलेलं आहे. 2 खेळाडू बाहेर, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन. बाकी सर्व 30 यार्ड्सच्या आतमध्ये. मिड ऑफला दिनेश ठाकूर आहेत. यष्टीरक्षणाची धुरा देवा कुलकर्णी सांभाळतायत. हा चेंडू वैभव पवार यांचा सुंदर असा चेंडू कट केलाय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने आणि फक्त 1 धाव पूर्ण करण्यात यशस्वी झालेले आहेत डॉक्टर सुशांत बदाने. चेंडू खेळपट्टीवरती पडल्यानंतर काहीसा धीमा येताना दिसतोय. बॅट्समनला वेळ घेऊन चेंडू मारायला लागणार आहे. हा चेंडू भूषण वैभव पवार यांचा हा चेंडू सुरेख अशा पद्धतीने लॉंग ऑफच्या वरून मारलेला आहे. भूषण तिथे पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करताना सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आणि या दरम्यान 2 धावा पूर्ण करण्यात यशस्वी डॉक्टर निलेश आहेर. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण करताना लॉंग ऑन वरून पळत येऊन अक्षरशः लॉंग ऑफच्या दिशेने हा चेंडू जात होता. भूषण नेमाडे यांनी अडवला आणि तेवढाच उत्कृष्ट थ्रो. वैभव पवार पुढचा चेंडू घेऊन निलेश आयरसाठी. हा चेंडू अत्यंत धीमा टाकण्याचा प्रयत्न, सुदैव त्यांचं की बॅट लागली नाही. चेंडू वाईड म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे. मात्र हा चेंडू जर बॅटच्या संपर्कात आला असता तर चौकार मात्र निश्चित होता. फाईन लेगच्या दिशेने दोन्ही फिल्डर वरती आहेत. स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग दोघे 30 यार्ड्स मध्ये असल्यामुळे खूप जास्त जागा तिथे चौकार मारण्यासाठी. हा चेंडू मारलेला आहे, थर्डमॅनच्या दिशेने जातो. तिथे स्वतः यष्टीरक्षक क्षेत्ररक्षण करताना डॉक्टर देवा कुलकर्णी. हा चेंडू ऑफ साईडच्या दिशेने हा चेंडू होता आणि अंपायरचा इशारा वाईड चेंडूचा. थोडासा लेट पण थेट इशारा. देवा कुलकर्णी यष्टींच्या मागे अत्यंत उत्साही असं अपील करत असतात नेहमी ते. हा चेंडू ऑफ स्टंपची बेल घेऊन गेलेला हा चेंडू. सुशांत मात्र बघतच राहिला आणि त्रिफळाचीतून तंबूत परतताना पहिली सफलता संकल्प सुपरनोवासाठी. डॉक्टर वैभव पवार सुंदर अशी गोलंदाजी. याबरोबर डॉक्टर आनंद नागरे संघमालक चांगले खेळाडू 1 डाऊनच्या भूमिकेमध्ये. हा चेंडू मारलेला आहे मिडॉनच्या दिशेने. तिथे भूषण नेमाडे स्वतः क्षेत्ररक्षण करताना आणि हा थ्रो सुंदर असा थ्रो.
एकच धावेवरती समाधान मानायला लागलं आनंद नागर यांना. पॉवर प्लेची दुसरी ओव्हर, धावसंख्या मात्र अडकलेली आहे 13 धावा. हा चेंडू मारलेला आहे मिड विकेटच्या दिशेने. एकच धाव मात्र घेण्यात यशस्वी. अशा तऱ्हेने दुसऱ्या षटकाची समाप्ती. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 15, एक गडी बाद, 15 धावा. धावसंख्या 15, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. पुढचं षटक घेऊन येत आहेत डॉक्टर देवा चौधरी. सामना करतील डॉक्टर निलेश आहेर. देवा चौधरी इथे सामना. देवा चौधरी. हा चेंडू मारलेला आहे कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहे तिथे आणि 2 धावा मात्र पूर्ण करण्यात यशस्वी झालेले आहेत. अत्यंत धीमा असा थ्रो डीप कव्हर वरनं आलेला. एक धाव अजून काढू शकले असते फलंदाज. पुढचा चेंडू देवा मारलेला आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. जितेंद्र देशमुख अत्यंत उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, तेवढाच उत्कृष्ट थ्रो विकेट किपर कडे आणि फक्त एक धाव मात्र त्यांनी दिलेली आहे. जितेंद्र देशमुख चित्त्याच्या चपळाईने क्षेत्ररक्षण करताना. हा चेंडू मारलेला आहे आनंद नागरे यांनी मिड विकेटच्या दिशेने. भूषण मात्र तिथे चेंडूवरती आणि एकच धावेवरती समाधान. 3 चेंडूमध्ये 4 धावा देवा चौधरी यांच्या. धावसंख्या 19. हा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने मारलाय डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांनी. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण केलंय. एकच धाव मात्र तिथे मिळू शकली आहे. सुरेख गोलंदाजी करतायत देवा चौधरी. अचूक टप्पा, अचूक मारा. हा चेंडू उचलून मारलेला आहे आणि बघूया झेल होतोय का. आणि हा झेल बाद. डॉक्टर भूषण नेमाडे यांचा उत्कृष्ट असा लॉंग ऑनला झेल आणि आनंद नागरे मात्र बाद. याच बरोबर डॉक्टर बोरसे मैदानात. संतोष बोरसे डावखुरा फलंदाज. तिथे असतात सिलेक्ट करायचं आपण सांगायचं. डावखुरा फलंदाज असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणात बदल मात्र अपेक्षित आहे. देवा चौधरी यांचा शेवटचा चेंडू या षटकामधला. पहिल्याच षटकामध्ये त्यांना एक सफलता मिळाली आहे आणि आनंद नागरे बाद. हा चेंडू वाईड घोषित केला आहे. थोडस वेगळा विचार करतायत देवा चौधरी.
माफ करा, संतोष बोरसे उजव्या हाताने फलंदाजी तर डाव्या हाताने गोलंदाजी करतात. पुढचा चेंडू, हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या दिशेने मारलाय, कव्हरच्या दिशेने, आणि तिथे मात्र एकच धाव पूर्ण. अशा तऱ्हेने षटकाची समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22. दिनेश ठाकूर गोलंदाजीसाठी येत आहेत. दोन चेंडूवरती लागोपाठ 2 षटकार संतोष बोरसे यांच्या बॅटमधून. बघूया पुढचं षटक घेऊन कोण येत आहे. थोडस बॅट्समन ड्रिंक ब्रेक घेतला आणि यानंतर नाही, अजून देवा चौधरी यांची ओव्हर पूर्ण होण्यास बाकी आहे. 2 चेंडू अजून बाकी आहेत. 42 धावा. चेंडू मारायचा तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, मात्र तो अयशस्वी असा प्रयास आणि फक्त 1 धाव मिळू शकली. 1 धाव वाढ. 42 धावा सह्याद्री शहराचा. हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने मारलेला आहे. बघूया किती रन काढतायत ते, आणि हा 2 धावा मात्र पूर्ण करण्यात यशस्वी झालेले आहेत. अशा तऱ्हेने या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 45. विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 45. सह्याद्री शेर आणि संकल्प सुपरनोवा या 2 टीम मध्ये उत्कंठावर्धक अशी मॅच. बघूया कोण उपांत्य फेरीसाठी पात्र होते. या दोघांमध्ये जो मॅच जिंकेल तो मात्र उपांत्य फेरीसाठी पात्र होणार आहे. आणि चौथी टीम असणार आहे ही उपांत्य फेरीतली, कारण मॅच जिंकल्यानंतर 4 पॉईंट त्या टीमचे होणार आहेत. त्यामुळे चौथ्या स्थानावर मात्र ही टीम जाईल. पहिलं आणि दुसरं स्थान हे रोबोडॉक्स आणि मिरोप्लस वीर मराठा यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच मध्ये आपल्याला समजेल. त्याप्रमाणे उपांत्य फेरीत पहिला संघ चौथ्या संघाची आणि दुसरा संघ तिसऱ्या संघाची खेळणार आहे. देवा कुलकर्णी गोलंदाज, सामना करेल पंकज संतोष. चेंडू उंच फटकावण्याच्या नादामध्ये शरद शिरोळे होते, आणि पुन्हा एकदा मला असं वाटतं हा वेवड थ्रो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जितूने अडवलेला आहे. आणि 4 धावा मात्र यात पूर्ण करण्यात यशस्वी झालेले आहेत. धावसंख्या पोहोचली 49 धावा. पुढचा बघूया. संतोष चेंडू मारलेला आहे, अंगाला लागून हा चेंडू वैभव पवार यांच्याकडे गेला. वैभव पवार यांची मिस फील्ड झाली आणि 1 धाव मात्र तिथे पूर्ण झाली. लेग बायचा इशारा. 50 धावा मात्र यात पूर्ण झालेल्या आहेत सह्याद्री शहराच्या.
येत आहे देवा कुलकर्णी निलेश आहेर साठी. बघूया चौकार षटकार की विकेट जाते. नाही, चौकार नाही, षटकार नाही, मात्र एक धाव पूर्ण करण्यात यशस्वी. दुसरी धाव मात्र संतोष बोरसे यांनी पळालेली आहे. सुंदर असं रनिंग बिटवीन द विकेट. मात्र पंकज निकम यांनी थ्रोचा एक रन होण्यापासून संकल्प सुपरनोवा संघाला वाचवलेला. कोहलीची महागोहर 52 धावा, 7 धावा आलेल्या आहेत आतापर्यंत. पुढचा चेंडू देवा कुलकर्णी यांचा आहे सामना. हा चेंडू मारलेला आहे कव्हरच्या दिशेने आणि बघूया एक धाव पूर्ण केलेली. दुसरी धाव पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आणि यशस्वी झालेला आहे प्रयत्न. अशा तऱ्हेने 2 धावा मिळालेल्या आहेत आणि या 2 धावांनीशी संघाची धावसंख्या झाली 54. शेवटचा चेंडू या षटकामधला. 6 ओव्हरची समाप्ती होईल या चेंडू नंतर. स्वतः दिनेश ठाकूर आता डीप कव्हर या स्थानावरती. डॉक्टर शरद शिरोळे लॉंग ऑफला, डॉक्टर भूषण नेमाडे लॉंग ऑन. निलेश आहेर पुढचा चेंडू सामना करतील देवा कुलकर्णी यांचा. शेवटचा चेंडू या षटकातला. हा चेंडू मारलेला आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि बघूया कॅच होतोय का. हा अत्यंत सुरेख असा प्रयत्न जितेंद्र देशमुख यांचा. सोडक्यामध्ये हा कॅच. फार चतुर क्षेत्ररक्षक आहे जितेंद्र देशमुख. पटकन चेंडूवर पोहोचतात. खूप सुंदर असा प्रयत्न झेल घेण्यासाठी. थोडा अयशस्वी ठरला पण उत्कृष्ट असा प्रयत्न होता. या तऱ्हेने या षटकाची समाप्ती. या षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 55. 2 गडी बाद 55. स्ट्रेट ड्राईव्ह चौकार. निलेश अय्यर यांच्या बॅट मधून आलेला घणाघाती प्रहार चौकार. स्ट्रेट ड्राईव्ह दिनेश ठाकूर यांच्या गोलंदाजीवरती आणि या 7व्या षटकातल्या पहिल्याच चेंडूवरती स्वागत केले दिनेश ठाकूर यांचं चौकार मारून निलेश अय्यर सरांनी. धावसंख्या 59 वरती पोहोचलेली आहे या चौकारानिशी. हा चेंडू फुलटॉस चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने तटवलेला आहे. तिथे अडवलेला आहे चेंडू आणि एकच धाव पूर्ण करण्यात यशस्वी. अरे येऊन परत गेला तो. धावा काढण्यामध्ये यशस्वी सह्याद्री शहराची टीम. पुढचा चेंडू दिनेश ठाकूर यांचा वैयक्तिक दुसरा षटक. तिसरा चेंडू. हा चेंडू सरळ मारलेला आहे आणि चेंडू देवा कुलकर्णी यांच्याकडे त्यांनी अडवलेला आहे. सुरेख असा थ्रो. एकच धावेवरती समाधान मानायला लागलेलं आहे. चतुर क्षेत्ररक्षक देवा कुलकर्णी लॉंग ऑफच्या दिशेने. यष्टीरक्षणाची जबाबदारी डॉक्टर वैभव पवार यांच्यावरती सोपवून ते लॉंग ऑफला स्वतः क्षेत्ररक्षणासाठी आलेले आहेत. निलेश अय्यर सामना करेल डॉक्टर दिनेश ठाकूर. हा उंचावलेला तडकवलेला चेंडू आहे आणि हा बघूया झेल होतोय का. व्हॉट झेल, व्हॉट कॅच.
सुरेख असा हा कॅच, पडल्याशिवाय कॅच घेत नाही देवा कुलकर्णी सरांचं वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा ते दिसलं, पण आता मात्र ते जेन्युइन पडलेत. डॉक्टर देवेंद्र कुलकर्णी. जितेंद्र ते जी काढलाय 10 काढलाय आहे गजेंद्र हा जर फॉर्म मध्ये आला साठी रेडिओलॉजी असोसिएशन तर्फे 1001 चं बक्षीस जाहीर. एवढा उत्कृष्ट जेल घेतलाय. हा चेंडू लेगवरचा चेंडू हलकासा तटावलाय, तो स्क्वेअर लेगच्या फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे फिल्डिंग करतात पंकज निकम, त्यांनी तो चेंडू उचलला पुन्हा एकदा गोलंदाजाकडे. तोपर्यंत एक धाव मात्र पूर्ण करण्यात यशस्वी संतोष. आणि हा मारलेला चेंडू उंच असा चेंडू अडवलेला आहे शॉर्ट थर्डमॅनला. सुरेख फलंदाजी, सुरेख क्षेत्ररक्षण आणि 7 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 63. सुंदर असं षटक दिनेश ठाकूर यांनी टाकलंय. एक महत्वपूर्ण विकेट कर्णधाराची डॉक्टर निलेश आहेर यांची घेण्यात ते यशस्वी झाले. सुंदर झेल त्यांचा देवा कुलकर्णी यांनी लॉंग ऑफ वरती अक्षरशः बाउंड्रीवरती तो पकडला. सीमारेषेच्या जवळ असा तो त्यांनी पकडला नसता हा झेल तर निश्चितच 6 षटकार होता. 63 63 धावा 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर. डॉक्टर वैभव पवार. वैभव पवार, संतोष बोरसे स्ट्राईक वरती हा मारलेला आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने. भूषण नेमाडे बॉलवरती आणि त्यांनी अडवलेला चेंडू तेवढ्याच ताकदीने फेकलेला आहे आणि एकच धाव मात्र पूर्ण करण्यात यशस्वी डॉक्टर जितेंद्र पाटील. हार्ड हिटर, आयएमएचे हार्ड हिटर, षटकारांचे बादशाह डॉक्टर जितेंद्र पाटील. बघूया काय करताय या षटकामध्ये. हा मारलेल्या फाईन लेगच्या दिशेने बघूया, तिथे नाही, एकच धावेवरती समाधान. उत्कृष्ट अशी फिल्डिंग तिथे पंकज यांची. हॅलो 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 हा चेंडू मारलेला आहे फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे पुन्हा एकदा फिल्डिंग केली पंकज यांनी आणि एका धावेवरती मात्र समाधान मानायला लागले. सुरेख अशी ओव्हर डॉक्टर वैभव पवार यांच्या तर्फे. वैयक्तिक दुसरं षटक टाकतायत ते. चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकतायत. बॅट्समनला मात्र त्यांनी बांधून ठेवलेला आहे. दोघंही संतोष बोरसे आणि डॉक्टर जितेंद्र पाटील एक धावेवरती मात्र समाधान मानायला लागतंय त्यांना. वैभव पवार हॅमस्ट्रिंग पुल झाल्यामुळे काहीशी दुखापत घेऊ नये गोलंदाजी करताना, पण सुरेख अशी गोलंदाजी करतायत ते. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये हा चेंडू आणि अपील देवा कुलकर्णी यांचं एसटी मागे झेलबाद असल्याचं नाकारलंय पंचांनी. वैभव पवार सुंदर अशी गोलंदाजी. मागचंही षटक दिनेश ठाकूर यांनी उत्कृष्ट असं षटक टाकलं आणि त्यानंतर लागोपाठ डॉक्टर वैभव पवार सुद्धा बांधून ठेवतायत दोन्ही फलंदाजांना. आणि हीच काय ती जमेची बाजू असते. इथेच धावा रोखल्या जातात.
सुंदर चेंडू, सुंदर असं यष्टी रक्षण, यष्टींच्या मागे देवा कुलकर्णी यांचं 66 धावा. नप्पी तुली गोलंदाजी म्हणतात ज्याला, त्या पद्धतीने डॉक्टर वैभव पवार यांची अक्षरशः नप्पी तुली अशी गोलंदाजी, किफायतशीर गोलंदाजी. शेवटचा चेंडू बघूया. हा चेंडू मात्र मारलेला आहे लॉंगॉनच्या दिशे, बघू कॅच घेतोय का. उत्कृष्ट असा झेल, उत्कृष्ट असा झेल डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांचा. सुंदर क्षेत्ररक्षण, उत्कृष्ट झेल, संकल्प सुपरनोवाला ज्या गोष्टींची गरज आहे 100% योगदान, 100% डेडिकेशन डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांचं. झेलबाद केलंय. सुंदर असा शॉट होता जितेंद्र पाटीलचा, चौकार निश्चित होता, परंतु ज्या पद्धतीने तो झेल घेतलाय, ज्या पद्धतीने तो कॅच मध्ये कन्वर्ट केला दिनेश ठाकूर यांनी, कौतुकास्पद गोष्ट आहे. हे डेडिकेशन हवंय संकल्प सुपरनोवाला आणि ते त्यांनी दिलंय. 100% योगदान ज्याला म्हणतात ते दिलंय डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांनी. आणि याच पद्धतीने संकल्प सुपरनोवाची जर वाटचाल चालू राहिली तर निश्चित 66 धावा फलकावरती 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर डॉक्टर भूषण नेमाडे कर्णधार, संघमालक संकल्प सुपरनोवाचे पुढचे षटक घेऊन येत आहेत. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 66. बघूया 2 षटकांमध्ये किती धावा सह्याद्री शिराची टीम काढू शकते. आव्हान मात्र 85-90च्या पुढे असावं. आव्हानात्मक धावसंख्या उभारायची असेल तर मग मात्र चौकार षटकारांची आतषबाजी निश्चितच करायला लागणार आहे. लगातार हा 3रा दिवस आणि 5वी मॅच आहे आणि रिटायर्ड होऊन येत आहेत डॉक्टर रवींद्र गायकवाड. डॉक्टर संतोष बोरसे रिटायर्ड हर्ट, त्यांच्या जागी फलंदाजीसाठी डॉक्टर रवी गायकवाड. भूषण नेमाडे आणि पुन्हा एकदा भूषण नेमाडेंच्या ऐवजी गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. त्यांचा सामना करतील रवी. बघूया काय करता रवी. आणि हा चेंडू मारलेला आहे शॉट थर्ड मॅनच्या दिसून, मात्र एकच धाव पूर्ण करण्यात यशस्वी.
हनुमंतगिरी डॉक्टर हनुमंत चेंडू मारलाय मिड विकेटच्या दिशेने. बघूया किती रन घेण्यात यशस्वी होत आहेत ते. मात्र एकाच धावेवरती त्यांना समाधान मानायला लागणार आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण मिड विकेटच्या दिशेने आणि धावसंख्येत भर 68 धावा. बांधून ठेवलंय संकल्प सुपरनोवाच्या संघाने सह्याद्री शेराजला. हा चेंडू सुंदर चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू, निर्धाव चेंडू. संकल्प सुपरनोवाने जी भरारी घेतली, पहिल्या दिवशी दोन्ही मॅचेस ते हारलेले होते, दुसऱ्या दिवशी सकाळची मॅच ते हारले, त्यानंतर मात्र दुपारची मॅच ते जिंकत आज या मॅच मध्ये मात्र त्यांनी फलंदाजांना बांधून ठेवलंय. धावसंख्या जास्त वाढू दिलेली नाही आणि आता हे 90 षटक सुरू आहे देवा कुलकर्णी यांचा. हा चौथा चेंडू आणि हा चेंडू मारण्याचा असफल प्रयत्न. 22च्या रूपाने एक धाव संपन्न. धावसंख्या आहेत 69, 69 धावा. देवा यांचा पुढचा चेंडू. हा चेंडू मारलेला आहे मिड विकेटच्या दिशेने. तिथे भूषण नेमाडे फिल्डिंग करतायत आणि त्यांनी सुरेख पद्धतीने अडवलेला आहे चेंडू. आणि बघूया 2 धाव होत आहेत का. सुंदर असा थ्रो आहे आणि 2 धाव यशस्वी. रवी गायकवाड यांनी स्प्रिंट मारली आणि नॉन स्ट्रायकर रेटला चप्पाईने पळत ही धावसंख्या या 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये वाढ. 71 धावा सह्याद्री शेराच्या. पुढचा चेंडू. हा चेंडू ऑफ साइडला कव्हर आणि याच्यामध्ये मारला आहे. दुसरी धाव मात्र पळून काढण्यात ते यशस्वी ठरलेली आहे आणि आता तिसरी धाव नाही, तोपर्यंत थ्रो पोहोचलेला आहे आणि 2च धावांवरती समाधान मानायला लागलेलं आहे. 73 धावा 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर 73, 73 धावा. शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत डॉक्टर भूषण नेमाडे. ओव्हर होऊन जाऊ दे मग सर. एवढी ओव्हर होऊन जाऊ दे मग सर. भूषण नेमाडे सामना करतील रवी गायकवाड. हा चेंडू मारलेला आहे थर्डमॅनच्या दिशेने आणि बघूया तिथे सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मात्र पूर्ण करण्यात यशस्वी रवी गायकवाड. धाव संख्येत भर 74, 74 धावा. शेवटचं षटक सह्याद्री शेरा फलंदाजी करताना शेवटचं षटक. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मारलाय मिड विकेटच्या दिशेने. पुन्हा एकदा 2 धावा पडतायत का बघूया. देवा कुलकर्णी नाही, एकाच धावेवरती समाधान मानायला लागलं. देवा कुलकर्णी यांचं सुरेख क्षेत्ररक्षण. 4 चेंडू बाकी. चेंडू मारलाय कव्हरच्या दिशेने. पुन्हा एकदा 2 धावा होत आहेत का बघूया. दिनेश ठाकूर चेंडूवरती आणि थ्रो केलेला आहे. मात्र 2 धावा या दरम्यान पूर्ण करण्यात यशस्वी सह्याद्री शेराची टीम. धावसंख्येमध्ये वाढ. सत्याहत्तर धावा, 4 विकेट, 9.3 षटकं झालेली आहेत. भूषण नेमाडे चौथा चेंडू त्यांचा दुसऱ्या षटकातला आणि निर्धाव असा चेंडू
सुरेख पेस काढलेला आहे त्यांनी. निर्धाव चेंडू. मारलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. दिनेश ठाकूर तिथे फिल्डिंग करतायत आणि एकच धावेवरती समाधान. 78 धावा. 78. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला भूषण नेमाडे. हा चेंडू मारला आहे लॉंग ऑफच्या दिशेने, मात्र झेल होऊ शकणार नाही. या दरम्यान 2 धावा पळून काढणार आहेत रवी पोहोचलेले आहेत आणि अशा तऱ्हेने ही इनिंग पूर्ण. सह्याद्री शहराच्या 80 धावा. 80 धावा जिंकण्यासाठी 81 धावांची गरज. 81 टू विन फॉर संकल्प सुपरनोवा टू गो इन सेमीफायनल्स. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन संकल्प सुपरनोवाच्या टीम कडनं बांधून ठेवलं त्यांनी सह्याद्री शहराच्या टीमला.
थांब तसं जा माईक माईक येतच आहे.
We are back live on YouTube. This is Dr. Milind Gangude now, your fellow commentator. Sankalpa Supernovas need 6-7 runs in 42 balls. It's been a slow start for Sankalpa Supernovas. 3 overs, 14 runs, 2 wickets. Oh, it's a slow start here for Sankalpa Supernovas. But they have the key batsman Deva on strike. Deva can hit. He's a 360 player. Jitendra Patil, the pillar of Sayadri Shiraz. He'll ball the next over to Deva Kulkarni. Ball hit short. Hit to deep, fine leg. Nilesh Iyer in pursuit. Oh, what a save! What a brilliant diving effort there at the square leg boundary. Saved a certain boundary, saved 1 run. Every run counts in this match. It's a potential quarter-final match. Winner will go through to the semis. What an athlete Dr. Nilesh Iyer is. He sprinted almost 60 meters to reach to the ball. He seems cramped up. But he's a fighter. I know he'll just get up in the next few minutes. He's up. He's a fighter. Three runs the result. Score moves on to 17 for 2. Fourth over in progress. I think he's calling for a substitute fielder. Back live. Hit to deep long on. Hanumantgiri there. Very good running between wickets by Deva. He stole the second run there. Missed by Sharad. Dot ball results. One more dot ball. I welcome Dr. Nikhil Challawan in the commentary box, my fellow commentator. Nikhil, what do you feel? Do you think this match will go to the wire? थँक्यू मिलिंद. हा सामना अतिशय अटीतटीचा होणार आहे, कारण हे या मॅचला आपण क्वार्टर फायनल मॅच म्हणून समजू शकतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, आणि हा एक आखूड चेंडू त्यांनी टाकला. बाउन्स होऊन खूपच चांगला बॉल. डॉक्टर शरद शिजोळे हे बीट झालेले. तर डॉक्टर मिलिंद यांच्या प्रश्नाचं खरं उत्तर आहे की हा सामना अतिशय अटीतटीचा होणार आहे. आणि अजून जे मॅजिक बॅट्समन आहेत डॉक्टर दिनेश ठाकूर आणि भूषण नेमाडे,
हे अजून मैदानावर उतरलेले नाही आहे. आणि आपण हा एक जसा हा कॉमेंटेटरनी कमेंट करताच हा बदल झालेला आहे. डॉक्टर शरद शिजोळे आता बाहेर येत आहेत रिटायर्ड हर्ट आणि रन रेटची गती वाढवण्यासाठी बॅटिंगसाठी सज्ज झालेले आहेत जुने वॉरियर्स संकल्प सुपरनोवाचे डॉक्टर दिनेश ठाकूर. नाही नाही दीपक आहे. दीपक आहे. Now to accelerate the score, we have Dr. Dinesh Thakur has come in. Dr. Sharad Shiroy has been declared as retired out. 36 balls, 62 runs is the requirement. So it comes to 10 balls, 10 runs per over now. Let's see what magic Dinesh can bring to this match. Deva has had a very slow start. Is Deepak Ahir now? Full toss, reverse sweep, and this could be a boundary. Oh, what a wonderful shot by Deva. Opening up his shoulders. Excellent boundary. This was needed. After the slow start they have, this is what they needed. डॉक्टर अनिरुद्ध भंडारकर आमच्या फेलो कॉमेंटेटर मिलिंद गांगुर्डे यांना अभिनंदन करताना, कारण त्यांना मिळालेली ऑरेंज कॅप. तसे ते मित्रांना टोपी घालण्यासाठी फारच फेमस आहेत डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. हा चेंडू छोटासा नच केलेला आहे आणि 1 रन चोरून घेतलेला आहे. हा सामना अतिशय अतितटीचा होणार आहे, कारण रिक्वायर्ड रेट 10 रन्स पर ओव्हर आहे. पण टेनिस बॉलवर माझ्या मते डॉक्टर मिलिंद 10 रन प्रति ओव्हर हा खूप डिफिकल्ट टास्क नाही आहे. पिचवर राहणं हे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट. They'll have to take it over by over and ball by ball. Dinesh Thakur cuts it. A single results. They just have to keep their cool, both the teams. The team which will keep the cool will win this match. There are still batsmen to come. There are still good bowlers to come. So it is going to be a very good tussle here. I think the wicket of Deva would be key here. Deva to face the next ball. Hikes it. It takes a cut, going to deep. Third, deep fine leg. Oh, it's a boundary. A lucky boundary for Deva. 10 runs have already come off this over. That is what they require. And Deva is just doing it very smartly. Score moves on to 29. देवा हे अतिशय चतुरपणे क्रिकेट खेळत आहेत. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा उद्देश, या वेळेस बॉल एजला लागून 1 रन चोरून घेतलेला आहे. देवांची स्ट्रॅटजी आहे की ते बॉलसाठी थांबत आहेत. बॉलचा टप्पा पडल्यावर आपला शॉट डिसाईड करत आहेत. दिनेश ठाकूर आता स्ट्राईकवर आलेले आहेत. दिनेश ठाकूर हे एक जुने खेळाडू आहेत जे चौकार आणि षटकार पटापट लावू शकतात आणि धावसंख्या पटापट जमा करू शकतात. फाईन असा हा पूल करून दिलेला आहे आणि हे क्षेत्ररक्षण जसं अपेक्षित होतं तसं नाही झालेलं आहे. कदाचित 3 रन अडू शकले असते प्लेयर, पण दुर्दैवाने ते अडू नाही शकले. बट दीज रन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू द टीम नाव. स्कोर मूव्स ऑन 34 runs at the loss of 2 wickets at the end of 5 overs. 34 runs at the loss of 2 wickets at the end of 5 overs. किती बॉल पाहिजे? 30 बॉल 47 रन ची आवश्यकता. 30 balls, 47 runs. बॉलिंग करायला आलेले आहेत जितेंद्र. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बॅटिंगसाठी सज्ज झालेले आहेत देवा कीपरशी काहीतरी संवाद करताना. देवा हे एक रेडिओलॉजिस्ट आहेत आणि कीपर डॉक्टर भदाणे हे पण एक रेडिओलॉजिस्ट आहेत. एका संघाकडनंच खेळतात. ह्यालाच म्हणतात स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट. देवा आणि आपल्या सवयीप्रमाणे फिल्डिंग पोझिशन पाहत आहेत, किती प्लेयर आत आणि किती बाहेर. शॉर्ट लेगचा प्लेयर आता आत आणलेला आहे त्यांनी. थर्ड मॅन शॉट फाईन लेग, शॉर्ट लॉंग ऑफ
आणि शॉट फाईन लेग. पुन्हा अपीलची जोरदार कॉट बिहाइंडची अपील, पण अंपायर्स आर नॉट कन्व्हिन्स्ड अँड दे से नॉट आउट. द एंड ऑफ 2 विकेट फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स ॲट एंड ऑफ 6.2 ओव्हर्स. या ओव्हरचा 2 बॉल झालेले आहेत. देवा काहीसे थकलेले. डेड बॉलचा इशारा. रनअप कदाचित थोडा चुकला होता बॉलरचा. अतिशय अटीतटीचा हा सामना होणार आहे आणि या सामन्याचा विजेता सेमीफायनलपर्यंत मध्ये प्रवेश करणार आहे. रिव्हर्स पुल मारायचा हा प्रयत्न कॅच घेतलेला आहे आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा विकेट इथं पडलेला आहे. अतिशय चतुर अशी ही बॉलिंग आणि फील्ड प्लेसमेंट. राहुल निरगुडे यांना माहिती आहे की देवा रिव्हर्स पुल हे रेग्युलरली खेळतात. प्लेयर तसा तो त्यांनी प्लेस केला होता. बघा चतुर रीतीने हा चेंडू त्यांनी टाकलेला आहे. आउटसाइड ऑफ चा हा बॉल होता. रिव्हर्स पुल केला आणि सरळ डॉक्टर भदाणे यांच्या हातामध्ये. आता उतरलेले आहेत संघाचे कर्णधार डॉक्टर भूषण नेमाडे. इक्वेशन अशी आहे की 22 बॉलमध्ये आता 37 रन धावा पाहिजे आहेत. कॅच घेतलेली आहे डॉक्टर भदाणे. डॉक्टर भदाणे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. राहुल निरगुडे रेडिओलॉजिस्ट. आणि हा महत्वाचा झेल सुटलेला आहे. पहिल्याच बॉलवर राहुल निरगुडे यांनी खूप सुंदर असा हा चेंडू पायावर टाकला होता. बॅट्समनला ट्रॅपही केलं होतं, पण दुर्दैवाने फिल्डर कॅच पकडू नाही शकले. हा कॅच अत्यंत महत्त्वाचा होता. कॅचेस विन मॅचेस. या 2 विकेट्स हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत या मॅचसाठी, कारण या 2 बॅट्समननी टाईम अँड अगेन दाखवलेलं आहे की ते मॅच सिंगल हँडेडली जिंकू शकतात. हे जर 2 विकेट शेराज घेऊ शकले तर मॅच पलटू शकते. But if these 2 players play full 10 overs, then Sankalp Supernova might win. Wild swing and miss. Trying for 1 run. Denied by Dr. Dinesh Thakur. Score moves on to 50 runs at the loss of 3 wickets at end of 6.5 overs. Required run rate is 9.79. Full toss असा हा बॉल डिफेन्सिव्हली टॅप केला. बॉलरच्या पायाला लागून कीपरच्या हातात. ॲट एंड ऑफ 7 overs 50 runs at loss of 3 wickets. Seven overs 50 runs at loss of 3 wickets. 18 बॉल 31 रन रिक्वायर्ड असा हा इक्वेशन आहे. फिल्डिंग टीम डिसाईड करते की कोणी बॉलिंग करावी आणि क्षेत्ररक्षण कसं असावं. असं वाटतंय की डॉक्टर आहेर बॉल देणार आहे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रवी गायकवाड यांना. रवी गायकवाड बॉलिंगसाठी सच्चा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ही एक खूप महत्त्वाची ओव्हर असणार आहे. दिस ओव्हर माइट डिसाइड द कोर्स ऑफ द मॅच. रवी गायकवाड यांनी निर्णय घेतलाय की ते कदाचित बॉलिंग टाकणार नाही आणि बॉलिंगसाठी आलेले आहे डॉक्टर बोरसे. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ही ओव्हर अत्यंत महत्त्वाची असली
ही ओव्हर अत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे कदाचित टीमने हा निर्णय घेतला की डॉक्टर संतोष बोरसे ही ओव्हर टाकतील. ते राऊंड द विकेट न येता ओव्हर द विकेट येत आहे. ओव्हरचा पहिला बॉल फटकारण्याचा प्रयत्न. दिनेश ठाकूर यांची अपेक्षा की कदाचित तो वाईड आहे, पण अंपायरचा पंचांचा निर्णय अंतिम डॉट बॉल. प्रयत्न मिस. पुन्हा एक डॉट. Like my fellow commentator told, dot balls are like golden dust, creating pressure. सुंदरसा हा फटकार एक टप्पा घेऊन बाउंड्रीच्या पलीकडे 4 रन. स्कोर मूव्स ऑन टू 54 रन्स. This partnership will decide where the match progresses. If the bowling team is able to break this partnership, they have an upper hand. If the batsmen continue, they might win the match for Sankalp Supernovas. तीन बॉल झालेले आहेत या ओव्हरचे. सुंदरसा हा शॉट मारलेला आहे बाउंड्रीच्या पलीकडे. पाहूया कॅच होतोय का. हनुमंतगिरी यांनी कॅच पकडून घेतलेला आहे. जसं की मी सांगत होतो की दिस कॅच विल डिसाइड, दिस पार्टनरशिप विल डिसाइड वेअर द मॅच प्रोग्रेसेस. हा एक क्लीन कॅच आहे. दिनेश ठाकूर यांना आउट करार देताना हनुमंतगिरी यांनी अतिशय सुंदर हा झेल घेतलेला आहे. कदाचित catch of the tournament. Good morning, everyone. I welcome all our viewers from all over the world for this first ever consultants tournament organized here in Nashik. Played back in here in Mahatma Nagar, Nashik, with a thunderous response from all the crowd down here. अपडेट का नाही होत कोणाकडनं क्रिक हिरोज कोण करतोय मग जरा सांगा ना कुठे तो क्रिक हिरोज
Welcome to the important match between Sankalpa Supernovas and Sahyadri Sheras. Sahyadri Sheras have set up a good target, and in pursuit, Sankalpa Supernova, they have lost. They've lost 4 wickets. We recently saw fall of Dinesh Thakur, an experienced campaigner. But Sankalpa Supernovas do not have to worry. Who they have today? They have Bhushan Nemade on strike. Bhushan Nemade, he's been amongst this cricket fraternity for so long. He understands the game. He has won so many games for his team. Supernovas need 22 more runs in 2 overs. They need 22 runs in 12 overs. A shot of good length ball, tried to play towards mid-wicket region. It's quite humid out here in Nashik. You can see players stretching out. There's a very important passage of play here. They need 22 more runs in 11 balls. Almost Bhushan Nemade will have to strike with 200 strike rate if he needs to see his team home. The players, the fatigue is catching up. This tournament has been spanned for 3 days. This is the third and last day today. These are all consultants, if you see. And this 3-day workout, definitely all this fatigue at catching up with the players as well, catching up with the age as well. So there is a slight change in field. We still have 10-11 balls to go in this match and 22 runs required, and we have experienced Bhushan Nemade, who has been captaining his side for so long here in Nashik in season cricket. Let us see if he can do miracle here in terrace cricket as well. Another shot of woodland ball, good ball. Tried to play towards square leg region. Beaten by the pace Bhushan Nemade. Superb bowling. Superb bowling. 2 important dot balls, golden dot balls here. Another shot of woodland ball, try to repeat the same heroics, went high up in the air to the cow corner. A dropped catch. An important opportunity, important passage of play here. Every single ball is important. That just went high up in the air, if you see. Easy catch. A dolly missed out by the fielder. Will this be costly to Sheraz? Another shot of good length ball, another heave, went straight to the fielder, same shot, same ball, and a good catch this time. And that is the demise of Bhushan Nemade. Nilesh Aher bowling superbly. He started with the dot balls, 2 consecutive dot balls to Bhushan Nemade, and that built up the pressure. And Bhushan Nemade, no option, had to go after the bowler, went high up in the air. A good catch. Nilesh Aher bowling superbly, gave away only 2 runs in this over. When they needed 22 runs in last 2 overs, he has given only 2 runs. So they require now 20 runs in 9 balls. Fielderचं नाव काय? Sushant Badane was a fielder. Nilesh Aher bowled superbly. Got an important wicket of Bhushan Nemade. Meanwhile, next ball, another shot of good length ball, tried to play towards square leg, took
the outside edge. And a good field down there. A superb fielding. Look at the commitment of the players. That almost went to the boundary. Definitely saved 2 runs for his team. All these consultants, they're putting all their effort. Saved important 2 runs. They required 18 runs more. 1 ball to go in this over. Prashant Bhadane was on strike. Good ball. Precious, important dot ball. End the over with the dot ball. 18 runs required for Supernovas. Prashant Bhadane is batting on 2. Thanks to all our sponsors. Nitin S. Dhatruk, Medal Spark, Spark Diagnostics, Panasia, Dr. Tushar Devre, Meghanand Dental Care and Implant Care, Jagdamba Hospital Private Limited, Sanjeev Health Tech Private Limited, Eye Speech and Hearing India Private Limited, and Lotus Hospitals, Dr. Pritesh Junagade. We thank all our sponsors to bring this important tournament here from Nashik. Delta Healthcare, all our title sponsors, co-sponsors, True Lab. If not for these guys, this would have been very difficult for us to bring all these live actions for you. A superb tournament. It's good to see all these consultants taking some time out from their own profession, a busy schedule, come out to the ground and spend all these 3 days here. This match has been played between Sahyadri Sheraz and Sankalp Supernova. An important match here. They need 18 more runs in the last over. This is the first year of Nashik Consultants Premier League 2023, and what a response that they received. Mind-boggling response here. Superb matches played on Mahatma Nagar cricket. Sahyadri Sheraz won the toss and they elected to bat first. They set up a damn good target. Now they are defending 18 runs. They need to defend 18 runs here in last over. And who's on strike? Prashant Bhadane on strike. Wide ball. Started with the wide. Not a good start. An important over here. 17 more runs required. It's cricket. Anything can happen in cricket. 3 big hits. 3 big hits in this over, and Supernovas can clinch this thrilling victory. Sahyadri Sheraz, they fought so well. They're almost there. They're almost there. Captain taking his time to set the field on. Tense situation here at Mahatma Nagar ground. You can see Captain wants every single player to be precisely placed because 6 balls to go in this over and they required 17 more runs. Meanwhile, next ball, a full length ball played towards cow corner. They will settle for a single. They might look for 2 because 2 is the call of the hour. Good fielding back there. Restricted batsman for a single. 5 balls to go. $15 more runs required. Left hand, right hand combination is always a headache to the fielding side and a bowler as well. He needs to keep on adjusting his line. Let us see. Another shot of good length ball.
And that is just went high up in the air. Boundary signal by the umpire. Try to bowl a bouncer. Four important runs, important boundary here in this over. Nail biting encounter. Nail biting encounter here. A lot of tensed environment around the ground. The pressure is everywhere. They require 11 more runs in 4 balls. Another shot of good length ball. Pulled towards a short fine leg for another boundary. 2 consecutive boundaries here for Sankalpa Supernova's much needed boundary. As I said, right hand and left hand combination is always a headache to a fielding team. Bowler needs to adjust his line, and that's where it falters. You see the result of it. He gave 2 consecutive boundaries, an important over, 3 balls to go in this over. What a match. They require 7 more runs in 3 balls. Can he do it? Another full length ball. This time, change of pace. Went for the hoik. But will definitely take a single. 6 runs required. Leg buys. 2 balls to go. 6 runs required. Change of side for a bowler. Superb bowling. An excellent encounter. Players are running. They're running for their life now. Who could have imagined that this match would turn into a nail biter when it started? Meanwhile, another full toss ball played towards cow corner. Fielder coming underneath, but that's a 6. That's a 6. That's a 6. Boundary. Called boundary by the umpire. Boundary by the umpire. Oh my god, it went high up in the air. Fielder coming underneath. Went for a 4. A full toss ball. Went so high up in the air in the cow corner. Important 4 runs. What a match. 3 more runs required in 1 ball. Oh my goodness. What a start for a day. Consultants League 2023. Nashik Consultants Premier League. Meanwhile, important ball inside edge. They went for a single. They might go for 2. And that is end of the over. Sankalpa Supernovas, they have scored 80 runs. The match has been tied. The match has been tied. What a match. A nail-biting finish here for Sankalpa Supernovas. They were lagging behind. But what an effort. What an effort. They've coped up with the pressure. Almost got their team home. But an excellent tie here.
Welcome to Nashik Consultants Premier League 2023. I welcome you all for the last league match of Nashik Consultants Premier League Season 1. The match is being played between Nashik Robodogs and Neuroplus Veer Maratha. This has been played on Mahatma Nagar Cricket. Neuroplus Veer Marathas. They have won the toss and opted to field first. This is the last league match. The winner of this, they will play with Sankalpa Supernovas in semi-finals. Sankalpa Supernovas, they are placed 4th on the table. These are the two top teams of the league of this season. The second over is being bowled by Dilesh. 5 runs so far. Now Vishal Nikam is on strike. Vishal Nikam represents Nashik Masters in season league. An excellent bowler and a batsman. A full length ball. Good ball. A precious dot ball has been bowled. End of 2 overs. End of 2. At the end of 2 overs, there are 6 for no loss. Vishal Nikam is batting on 3. Sanket Solte. He's batting on 3. Excellent start for Veer Marathas. They have played consistently well throughout the series. And Robodogs have won all their 4 matches. So these are two top teams of this season. Going to be an interesting match for sure. Meanwhile, the change of bowling, Mr. Yogesh has come into bowl. Yogesh. Dr. Sanket Sote is on strike. A full length ball played towards square leg region. That could be a run out. Good throw at the end. Restricted batsman for a single. Started with a full toss on the leg side. Ojas. Right arm medium pace bowler. Ojas Upasni. That brings Vishal Nikam on strike. The change of field. The square leg has been dropped back. Another full length ball. Way outside the off stump. Called wide by the umpire. Extras are going to play an important role in these matches. As I told you that these are the two top teams of this season. Meanwhile, right arm over the wicket. Next ball. Good length ball. Did not give any room whatsoever to Vishal. He wanted to go to the leg side. A slight misfield down there. But a good pick up and throw. Restricted batsman for a single. That brings your total to 9 runs at the end of 2.2 overs. A very disciplined bowling by Ojas. Another full length ball played towards long on region. 1 bounce. 1 run in this over. Another full length ball. Tried to play over mid off. Could not strike the ball properly. Super bowling by Ojas, not giving any room whatsoever, not giving any pace whatsoever. The tennis cricket ball, if you try to bowl faster, you have to bowl fastest. Because if you err in the line, you will be punished. And Ojas bowling superbly, another block hole. What a bowling. Pinpoint bowling by Ojas. A very disciplined attack. Bowling from a pavilion end, Ojas Upasni to Dr. Sorte. Another full end delivery. Played towards the square leg region for the first boundary of this match. Dr. Sanket Sorte. A good end to the over. That brings total to 15 runs at the end of 3 overs. This match has been played for 8 overs aside. To let our viewers know, and Dr. Sanket Solte, he has hit the first boundary of this match, ending the over on a good note. As a change in bowling as well. An interesting captaincy by the Marathas. The captain is opting all the options that he has for a bowling. This is the 4th
new bowler is bringing in. To remind our viewers, it is an 8-over match. 3 overs has been bowled. Manoj has come into attack to bowl from a pavilion end. Vishal Nikam will be on strike. Full toss ball. A no ball called by the umpire. Potential no ball. Yes, it is a no ball. That might be a free hit to the batsman as well. Started with a no ball, an extra. That could be a problem. Welcome Mr. Sunny Kakde on Mahatma Nagar. A free ball, a free hit to Dr. Sanket Sorte, but a good comeback by the bowler. Dr. Sanket Sorte could not do much on a slower ball. If you could see that, it has been seen, if you do not give any pace, it is getting difficult for a batsman to hit the balls outside the park. Superb bowling, superb comeback by Manoj. Second ball of this over. Another slow delivery, played towards long off region, a fielder coming underneath, superb fielding. A good stop by one-handed stopper, left hand with the left hand. Good throw at the end. Definitely saved 2 runs for his team. A good shot by Vishal Nikam, played straight to the throat of long off, but a super fielding by Manoj. Another slow delivery. Batsman tried to play over the fine leg region, missed completely, beaten by the pace. Super bowling by Manoj. He definitely started with the extra delivery, but he coped up with the pressure. He bowled superbly so far. Another good ball, another dot ball, another important precious golden dot ball has been bowled. You might say that this is a practice for semi-finals which are going to be played after this match. To remind our viewers, I tell you again, these are the 2 top teams of this league. Marathas and Robodogs. Robodogs are batting. Another golden dot ball. Vishal Nikam not able to find his way. He has been struggling throughout this season, searching in his form. Will this be costly for Robodogs? 14 balls and 8 runs. That is slower than Chateshwar Pujara in Test cricket. Another slower ball, went high up in the air, fielder coming underneath, good stop there. Definitely saved another run for his team. Wanted to go for the catch, but it was way far. End of an important over. Superb over by Manoj Bhamre. At the end of 4 overs, Robodogs are 21 for no loss. They might have not lost a wicket, but they did not score any runs as ever. Sushil Anturlikar is running in to give a message to batsmen, it seems. What message it could be? I wonder. They haven't lost a wicket, but they haven't scored runs either. 4 overs, 21 runs. Robodogs must be very happy. Robodogs must be very much under pressure. Hey, bowler name. Mukesh Dhande has been brought in from pavilion and left arm over. Started off with a wide. The Marathas, they have started with extras, but they come back good. Another shot of good length ball went towards square leg region, and he went outside the ground, and that's a 6. He definitely caught the ball, but lost his balance. Look at that. It went high up in the air over square leg region. Dilesh, he caught the ball, but off balanced and went outside the park. So the first 6, and the best 6 has been sponsored by Dinesh Thakur, Atharva Siddhi,
Clinic and Meenakshi Dinesh Thakur Gajanan Dental Clinic. Another shot of good length ball played towards deep square leg, only for a single. There might have been two, as the time requires. Robodogs, they need to run. They need to score runs. They're lacking behind. They're only on 29 in 2 balls. 4.2, 29 for no loss. Another full in delivery. Try to play a switch hit. Sanket Solte, who's batting on 10 in 11 balls. Both these openers from Robodogs, they failed to capitalize on initial 2 overs. And now the pressure is on Robodogs. 27 balls have been bowled so far in this innings, and they've scored only 29 runs. Another shot of good length ball, tried to play over fine leg region, took a top edge, and this is the first wicket of Robodogs, Sanket Solte. Manoj took a fantastic catch there. 5 मिनिट थांबा बंद पडतं सगळं A superb catch, and the catch has been sponsored by Dr. Dinesh Thakur, Atharva Siddhi Clinic, Karmayogi Nagar, and Dr. Meenakshi Dinesh Thakur, Sri Gajanan Dental Clinic. The best catch of the match will be given by Dr. Dinesh Thakur and Dr. Meenakshi Dinesh Thakur. Meanwhile, Sushil Anturlikar, the captain of Nashik Masters, played for seasons on strike, known for his big hittings. A good start to the over, a block hole. Took an inside edge. Sushil Anturlikar quick on his feet. He went for two, and he stole another single. So 2 runs. Sushil Anturlikar. Dr. Sushil Anturlikar, known for his big hitting. Will he put life into Nashik Robodogs team? On the shot of Gulen delivery, down the leg side, try to play over fine leg region. A dot ball. End of 5 overs. Nashik Robodogs 31 for 1. Vishal Nikam got out from 16. Sushil Anturlikar is batting on 2 in 2 balls. I beg your pardon. Solte is got out and Vishal Nikam on strike. Vishal Nikam is there right from the start. He's batting on 16 in 17 balls. He needs to get going. Mukesh Khairnar has been brought back here from the pavilion end. As I said, it is interesting to see that the captain has changed bowler every after over. This is the 5th new bowler that we have for Veer Marathas. There's a slight confusion there on the field. They're discussing about the bowling super sub and the batting super sub. A slight confusion there with the tournament's rules and regulation, but I think it's sorted out. So we have Mukesh Khairnar bowling right arm over from pavilion end. Vishal Nikam on strike. A full length ball played towards long on region. The fielder coming underneath, restricted batsman for a single. Sushil Anturlikar wanted second, but a good throw at the end. Gave only 1 run so far in this over, Mukesh Khairnar. Mukesh Khairnar, he does practice with Evershines and Nashik Masters Academy in season sports. Dr. Sushil Anturlikar, he leads Nashik Masters in seasons cricket. A good length ball, tried to play towards square leg region, got an inside edge. Sushil Anturlikar definitely want another 2, another second run. It might be close, but he reached safely back there. 2 runs for Sushil Anturlikar. That's a sense of emergency that Nashik Robodogs need. They need to score runs on a faster pace than what they are doing right now. And Sushil Anturlikar might be just perfect in this situation. Good bowling by Mukesh Khairnar. He's bowling in right areas, not giving any room whatsoever. The ball does not even come to the bat.
took an inside edge of Sushil Anturlikar earlier. Meanwhile, another full length ball. Superb good length ball by Mukesh Khainar. A precious dot ball has been bowled. Now the initial overs where Robodogs did not score runs, that pressure is adding up. So Sushil, he must be under pressure. He would like to score on every ball which has been bowled now. Another full length ball and that's out. Clean bowled by Mukesh Khainar. Got rewarded for his excellent disciplined bowling. Mukesh Khainar. Super bowling. Comes slow towards the pitch with a unique action. Look at that. Tried to play towards square leg region. Missed out and took off the leg stump of the batsman. Super bowling. With the fall of Sushil Anturlikar, we have Sachin Ahir. Sachin Ahir in the crease. All these players, they've been playing together for so many years, so they're known to each other. They know each other's game as well. What a bowling by Mukesh. Superb bowling. A start to Sachin Ahir. Left hand batsman started off with a boundary. Mukesh Khainar, as I said, left hand right hand combination is always difficult. Bowler needs to adjust his line, and that's exactly where he erred in line. And he got penalized. Meanwhile, Mukesh Khainar right arm over the wicket. Another full in delivery. Sachin Ahir went after the ball towards cow corner for a single. Vishal Nikam definitely stole on a run. He stole a run on his throw. Superb thinking by Vishal Nikam. End of 6 overs. And Veer Marathas, they are 40 for the loss of 2 wickets. Neuro plus Veer Maratha opted to field first. And as you can see, they have successfully fielded. They did not give any freebies. There's a change in bowling. Mahajan. Atul Mahajan has been brought back. We have short fine leg, deep square leg, cow corner, long on, long off, covers, extra cover, point, short third man. Atul Mahajan. He's bowling his second over. Picked up the length, Vishal Nikam. He's been there right from the start. He has seen the first over of Atul Mahajan. A good pickup shot. Picked up early. It seems that he had an extra second to play this shot. Look at that. Came into a position. Pulled the ball over to a deep square leg for first boundary of this over. Good start to this over for Nashik Robodogs. Another full length ball went high up in the air. Another boundary. Oh, the six. First 6 of this match. Vishal Nikam, full length ball by Atul Mahajan. Penalized. Look at that. He bowled way into the range of Vishal Nikam in the slot.
went up the air for the first 6 of this match. I tell you, the 6 of this season is going to be sponsored by Dinesh Thakur and Minakshi Dinesh Thakur. Another good length ball, tried to play towards leg side, got an inside edge. Sachin Ahir wants to. Good start to this over for Nashik Robodogs. 11 runs so far. Sachin Ahir on strike, and you can see rightly the field has been changed. As I said, this definitely plays on bowler's mind as well. Meanwhile, Atul Mahajan, full length ball played towards deep mid wicket, and Vishal Nikam is looking for second. Good running by Vishal Nikam. Now you can see a sense of emergency here by Nashik Robodogs. Sachin Ahir batting on 8. Vishal Nikam batting on 13, 22 balls. Atul Mahajan, another full length ball. Almost got a wicket. What a comeback. Did not start off so well. He started with a boundary and then a 6, followed by single and double. But a good important dot ball has been bowled. 1 ball to go in this over. Atul Mahajan. Oh, way in the block hole. Vishal Nikam denied the run. He wanted the strike, it seems. At the end of 7 overs, Nashik Robodogs 53 for 2 runs. Dr. Sanket Sote got out on 10. We have Vishal Nikam batting on 30. Sachin Ahir batting on 8. 1 over to go. The projected score is 61. Mukesh Khairnar, a successful over. A successful last over. Took an important wicket of Sushil Anturlikar. Mukesh Khairnar. Now you have Vishal Nikam on strike, who's batting right from the first ball. 30 runs in 22 balls. He needs to do maximum of the 6 balls to be left. To remind our viewers, the winning team in this tournament will play against Supernovas, Vishal Nikam. 2 easy runs. 2 easy runs for Vishal Nikam. But he must not be very much happy with this. He wanted boundaries and 6s in this over. Robodogs wants Vishal to hit boundaries and 6s. 5 balls to go. Meanwhile, Mukesh, right arm over the wicket. A very unique action. Full length ball played straight to the bowler. A good field back there. But Sachin Ahir quick on his feet. 2 runs. Stole a second on a throw. Superb running by Sachin Ahir and Vishal Nikam. Vishal seems pretty much tired. He's there right from the first ball. 4 balls to go. He needs to collect all his energy. Another full length ball. That went high up in the air. Might have kissed an air hostess and came down. Superb shot by Vishal Nikam. He needs to capitalize on this freebies. And he definitely can. What a shot. What a shot. Superb shot. That was right in the slot. Another full length ball. Made room to leg side. Vishal wanted to play over square leg region. Did not have a good connect with the bat. Only settled for a single. So far 30 runs partnership in 12 balls with these two. Vishal Nikam batting on 41. 2 balls to go in this over. 2 balls to go in this innings. So far 11 runs in this over. Sachin Ahir. 8 runs in 5 balls. Can he score off this ball? Full toss ball played towards long off region. Vishal Nikam, he might have come for 2. And he's tired. He's running with tired legs. He might get out, but reach safely. Good running by Vishal. 1 ball to go in this league.
This is the last league match. 1 ball to go of the first innings here. Sachin Ahir on strike. And a wicket. Sachin Ahir got out. Run out by Mukesh Khainar. So Robodogs, they've scored 66 runs in 8 overs. They've lost only 2 wickets. Vishal Nikam, who somehow batted superbly, scored 41 runs in 26 balls. या आधीचा सामना झाला होता तो सुपरनोवाज या आधीचा सामना झाला होता तो संकल्प सुपरनोवाज वर्सेस सह्याद्री शहराज यांच्यामध्ये. हा सामना अतिशय उत्कंठावर्धक झाला. हा सामना एक व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल होता. कन्सल्टंट प्रीमियर लीग सीझन 1चे व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल होता. जो जिंकेल तो संघ क्वालिफाय होणार होता, पण हा सामना टाय झाला. हा सामना टाय झाल्यामुळे संकल्प सुपरनोवा या संघाने किंचितसा त्यांचा नेट रन रेट चांगला असल्यामुळे सेमीफायनलमध्ये क्वालिफिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं अभिनंदन. आणि त्याचे को ओनर जे आहेत ते डॉक्टर महात्मे सर, हर्षद महात्मे, संकल्प सुपरनोवाचे ते को ओनर आहेत. त्यांच्या हस्ते आपण या मॅचमध्ये मॅक्सिमम सिक्सेस आणि बेस्ट कॅचचा अवॉर्ड देणार आहे. मॅक्सिमम सिक्सेस अवॉर्ड आणि बेस्ट कॅचचा अवॉर्ड डॉक्टर दिनेश ठाकूर, अथर्व सिद्धी क्लिनिक आणि डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर, श्री गजानन डेंटल क्लिनिक यांच्याकडून स्पॉन्सर करण्यात आले. आम्ही त्यांचे धन्यवाद करतो. आणि ह्या मॅचचे आम्ही लवकर या ना. आपण डॉक्टर हर्षद महात्मे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते मॅक्सिमम सिक्सेस अवॉर्ड जाते ते डॉक्टर संतोष बोरसे यांना, पण त्यांची तब्येत थोडीशी खराब असल्यामुळे ते आपण त्यांचे कप्तान, सह्याद्री शहराचे कॅप्टन डॉक्टर निलेश आहेर यांना सुपूर्द करूया. आणि ह्याच मॅचमध्ये 2 उत्कृष्ट झेल टिपले गेले होते. एक झेल टिपला होता तो डॉक्टर देवेंद्र कुलकर्णी यांनी. तो अतिशय सुंदर त्यांनी उंच उडी मारून त्यांच्या कॅप्टनचा झेल टिपला होता. आणि तो एक झेल होता. आणि दुसरा एक झेल घेतला होता तो डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांनी स्वतः एक डाईव्ह मारून त्यांनी डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांची कॅच घेतली होती. त्याच्यामुळे सर्व क्रिटिक्स अवॉर्डनुसार त्यांना बेस्ट कॅचचे अवॉर्ड डॉक्टर दिनेश ठाकूर यांना. मग मी केव्हाचा आवाज देतोय? धन्यवाद. मग मी केव्हाचा आवाज देतोय की तुम्ही इकडे या.
ते त्याच्यामध्ये वीर मराठा न्यूरो प्लस यांनी रन चेस ते अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजीच्या जोरावर डॉक्टर मुकेश खेरनार यांचं ते असे IMA नावाजलेले गोलंदाज आहेत, पण आज त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं की ते ऑलराऊंडर म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे आणि त्यांनी अतिशय उत्तुंग असे 3 षटकार मारले. याच्यामध्ये अजूनही 3 षटकार मारणारे अजून एक प्लेयर होते, ते म्हणजे डॉक्टर विशाल निकम हे होते, पण त्यांच्यापेक्षाही लांब 6 मारून यांनी ते प्राइज स्वतः घेतलेलं आहे. हे प्राइज डॉक्टर दिनेश ठाकूर अथर्व सिद्धी क्लिनिक आणि डॉक्टर मीनाक्षी ठाकूर श्री गजानन डेंटल क्लिनिक यांच्याकडून पुरस्कृत केलेलं आहे. मी तो कुठे गेला कोणीच नाही. सुहास पाटील यांना सुहास घुगे यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी हे बक्षीस आपले मित्र डॉक्टर मुकेश खेरनार यांना प्रदान करावे. मॅक्सिमम सक्सेस अवॉर्ड या सर. थँक्यू सर. मस्त आम्ही इथंच थांब नाही जाऊन इथंच थांब. आणि ह्याच मॅच मध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा झेल टिपलेला आहे तो आमचे सर्वा आणि या टुर्नामेंटचे चेअरमन पॅट्रन आणि सर्वांचे आधारस्तंभ असे डॉक्टर अनिरुद्ध भांडारकर. त्यांना मी सुहास घुगे यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी अनिरुद्ध भांडारकर सरांना हे बक्षीस द्यावे. आणि मी सुहास घुगे यांना विनंती करतो की हे जे सामने चालू आहे आणि हे जे बक्षीस वितरण होत आहे त्याच्याविषयी त्यांनी आपलं मत मांडावं. अतिशय सुंदर रोमांचक राहिला हा सामना. ओव्हरमध्ये सुद्धा निर्णय बदलायची क्षमता ठेवणारे चांगले उभरते बॅट्समन आणि सगळ्यांना आपल्या जागेवर आणून दाखवण्याची ताकद ठेवणारे सुद्धा गेंदबाज लढाऊवरचे पूर्ण प्लेयर तयार होत आहेत आणि याच्या पुढचे तर अजून जास्त मजा येईल असं वाटते. एव्हरी मॅच काउंट्स, एव्हरी बॉल काउंट्स. अतिशय सुंदर नियोजन. थँक्यू. डॉक्टर सर छानच झाली मॅच. म्हणजे हातात नव्हती असं वाटलं होतं एके वेळेस, पण लकीली शॉर्ट बॉल मिळाले, ते कन्वर्ट करता आले 3-6 अँड वी वेंट. प्राईज विशाल यांच्याकडून ते विशाल निकम आमचे मित्र ते वेल डिझर्विंग आहे. ते ही इज द बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ टुर्नामेंट, नो इश्यूज. बट आज लक आमचं होतं. धन्यवाद. भांडारकर सर, तुमचं पूर्ण स्पर्धेविषयी व प्राइज डिस्ट्रीब्युशन विषयी काय म्हणणं आहे ते थोडक्यात मांडावं. छान चालू आहे आणि सगळे प्लेयर्स अति उत्साहाने खेळत आहे आणि डॉक्टर दिनेश ठाकूर आणि मीनाक्षी ठाकूर यांनी जे उपक्रम राबवला आहे त्याच्यामध्ये फार कौतुक आहे आणि अशीच आता आपण पुढे तो सेमीफायनलचा मेगा सेमीफायनल बिटवीन सुपरनोवास अँड विनर त्यांचे अपोनंट कोण आहे ते थोड्याच वेळात तुम्हाला डिसाईड करून सांगण्यात येतोय. तोपर्यंत डॉक्टर दिनेश ठाकूर सायनिंग ऑफ.
धन्यवाद सभी दर्शकों का पहले हार्दिक स्वागत करता हूं महात्मा नगर के मैदान से। नासिक कंसल्टेंट प्रीमियर लीग 2023 का ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्का से खेला उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन जब तक फील करते 1 रन लेने का मौका। नासिक कंसल्टेंट प्रीमियर लीग 2023 ये तीसरा दिन चलता हुआ पहला सेमीफाइनल। बॉलर फिर एक बार तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पर, काला के सारे मोड़ने की कोशिश की उन्होंने लेग साइड में, लेकिन जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। CPL 2023 नासिक कंसल्टेंट प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। हालांकि 100 के ऊपर कंसल्टेंट, हालांकि डॉक्टर्स फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 18 मैचेस खेले गए और लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के ऊपर चल रहा है इस वक्त। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद उछल कर विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी बिना किसी रन के। संकल्प सुपरनोवाज और न्यूरो प्लस वीर मराठा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, पहला सेमीफाइनल चलता हुआ। इस बार खेल दिया था उन्होंने गली के ऊपर से थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। सभी दर्शकों का पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। संकल्प सुपरनोवाज और न्यूरो प्लस वीर मराठा के बीच में मुकाबला चलता हुआ। न्यूरो प्लस वीर मराठा के कप्तान ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। 3 रन बिना किसी क्षति के जितेंद्र देशमुख और देवेंद्र कुलकर्णी मैदान के ऊपर पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। अतुल महाजन अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। जितेंद्र देशमुख हालांकि 1 रन पर खेल रहे हैं। इस बार गेंद शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने की कोशिश, उनको स्क्वेयर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, जैसे कि थ्रो आता दिखा, अपने पांव को खींच लिया, अपने क्रीज पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। और इसी के साथ ये पहले ओवर के समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। पहले ओवर के समाप्ति पर 4 रन बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के
धूप काफी बिखरी हुई थी इस वक्त, लेकिन हल्की सी क्रिकेट के लिए अच्छा वातावरण तैयार होता हुआ मैदान के ऊपर। नेहरू प्लस वीर मराठा के कप्तान ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। संकल्प सुपरनोवाज देखते हैं 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक एक रन के लिए कांटे की टक्कर चलेगी, जैसे कि यह सेमीफाइनल चल रहा है। देवेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 2 रन पर, स्ट्राइक का सामना करें इस बार। ओ अच्छी गेंद थी, हल्के से पैड पर लगती है, लेकिन जब तक विकेट कीपर दौड़ते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। 11 रन फील्डिंग का प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। एक एक रन के लिए कांटे की टक्कर होने के जरूर संकेत मिल रहे हैं। कुणाल देसाई आए हैं गेंदबाजी के लिए और उनके सामने देवेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 2 रन पर। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद पड़कर और बाहर जा रही है। इस वक्त हालांकि दोनों ही बैट्समैन एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीपीएल नासिक कंसल्टेंट प्रीमियर लीग का ये तीसरा और अंतिम दिन। ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, स्केले के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा, 4 रन का आता हुआ। अच्छा स्ट्रोक। और कहते हैं ना कि जब तक आप बड़े गैप्स नहीं निकालते तब तक बड़े स्ट्रोक नहीं आते। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ संकल्प सुपरनोवाज का। नौ रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। कुणाल देसाई गेंदबाजी के लिए आते हुए इस बार देवेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 6 रनों पर। एक चौका उन्होंने अब तक लगाया। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद द गुडलैंड स्पॉट से उछलकर विकेट कीपर के ग्लोन में चल गई थी। बॉल अचिंभित रहे कुलकर्णी की, गेंद ने टप्पा खाने के बाद इतना उछाल कैसे लिया। कभी कभी गेंद उछल कर आती है तो कभी गेंद काफी नीचे रहती है, बैट्समैन को खेलने के लिए मजबूर कर देती है। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक ऊपर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पहले खेल दिया था कवर के क्षेत्र में। जब तक फील करते तब तक 1 रन लेने का मौका। इसी के साथ ये पहले दूसरे ओवर के समाप्ति होती हुई 2 ओवर के समाप्ति हुई संकल्प सुपरनोवास का कुल स्कोर 2 ओवर के समाप्ति पर 10 रन हुए हैं 2 ओवर के समाप्ति पर। न्यूरो प्लस वीर मराठा की कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन 2 ओवर के समाप्ति पर 10 रन बने हैं बिना किसी क्षति के, यानी 5 रन प्रति ओवर का रन रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जितेंद्र देशमुख खेल रहे हैं 2 रनों पर, स्ट्राइक का सामना करेंगे। देवेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 7 रन पर। देखते हैं पहले विकेट के लिए कितने रनों की साझेदारी होती है, सब कुछ निर्भर करता है उसके ऊपर। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्का सा बैक ऊपर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेले शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात। लेकिन इस 1 रन के साथ संकल्प सुपरनोवास का कुल स्कोर 11 रनों पर पहुंचता हुआ। मुकेश खन्नार को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। देखते हैं मुकेश सर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से परेशानियां बॉलर के सामने खड़ी करते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं ऑन साइड में लॉन्ग ऑन से फील्डर आते, 1 रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर, दूसरा रन लेना चाहते थे, जैसे कि सीधा थ्रो आता हुआ विकेटों के ऊपर सीधी गेंद हालांकि आती हुई मुकेश खन्नार के हाथ में। 1 रन के साथ स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी क्षति के। इस बार लेग स्टंप पर गेंद खेल दिया था लेग साइड के क्षेत्र में, जब तक फील्डर वहां पर पहुंचते तब तक 1 रन लेने का मौका। हर गेंद पर रनों की गुंजाइश होती रहती है मैदान के ऊपर, और कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना कि रनों के लिए केवल बहाने ढूंढते रहते हैं, उनको केवल बहाना चाहिए रन बनाने के लिए, और उनकी भी सही बात है।
इस बार गेंद मिडल और लेफ्ट नंबर खेल दिया था स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में, जब तक फील्डर वहां पर पहुंचते ही 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। संकल्प सुपरनोवास का कुल स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के। देवेंद्र कुलकर्णी 9 रन पर, जितेंद्र देशमुख 4 रनों पर खेल रहे हैं। खैरनार तैयार गेंदबाज के लिए, इस बार अच्छा स्ट्रोक कवर्स में फील्डर वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक 1 रन पूरा किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। जैसे कि स्ट्रोक खेला उसके साथ साथ उन्होंने रन लेने की मनीषा जरूर पूरी की अपनी। कभी उतार कभी चढ़ाव का ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक रन बनते रहते हैं। ये केवल बात मन में होनी चाहिए और आपने बल्लेबाजी में विश्वास होना चाहिए। मुकेश खैरनार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए इस ओवर में, अच्छी गेंद थी। इस बार गुडले स्पॉट से गेंद उछलकर सीधी विकेट कीपर के ग्लोव में जाती हुई बाहर आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी। और इसी के साथ ये तीसरे ओवर के समाप्ति हुई। 3 ओवर के समाप्ति पर 15 रन बिना किसी नुकसान के। जितेंद्र देशमुख खेल रहे हैं 4 रन पर, देवेंद्र कुलकर्णी पहुंचे 2 अंकों में 10 रन पर। टीम का कुल स्कोर 3 ओवर के समाप्ति पर 15 रन बिना किसी नुकसान के। पहले टॉस जीता मराठा के कप्तान ने, पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। पहले बल्लेबाजी के लिए अनुरोध किया है। सब भी इसका सहकार्य इसको मिलता जा रहा है, इसलिए एक अच्छे क्वालिटी का ये मैचेस हम देख रहे हैं इस वक्त। 3 ओवर के समाप्ति पर 15 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार लेग स्टंप पर गेंद कला के सारे मोड़ने की कोशिश, उनको उसके के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है। हल्के से मिस फील्डिंग हुई, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों की। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फील्डर के ऊपर दबाव डालकर लिया। क्या कला होती है खिलाड़ियों के पास रन बनाने के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर संकल्प सुपरनोवास का 17 रनों पर पहुंचता हुआ 17 विदाउट लॉस। न्यूरो प्लस वीर मराठा टीम कैप्टन विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फर्स्ट फील्ड नो। यस सर, बैठो। ये ओवर के बाद हमारा साथ दीजिए थोड़ा सा। माइक दे सर, दूसरा हाँ यस सर। हल्के से मिस फील्डिंग होती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई थी, 4 रन के लिए बाहर। टीम का कुल स्कोर इन 4 रनों के साथ संकल्प सुपरनोवास का 21 रनों पर पहुंचता हुआ 21 विदाउट लॉस। देवेंद्र कुलकर्णी 16 रनों पर खेल रहे हैं, जितेंद्र देशमुख खेल रहे हैं 4 रनों पर। 21 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। सुहास कोटक गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी, खेल दिया था ठीक, बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं। अपने फील्डिंग के ऊपर गर्व होना चाहिए, तब एक अच्छी फील्डिंग होती रहती है। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं, लेकिन एक थर्ड मैन है, पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डिप मिड विकेट। इस बार अच्छा स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन देखते हैं रोकने की कोशिश करते या नहीं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पर संकल्प सुपरनोवाज 23 विदाउट लॉस। चौथा ओवर चल रहा है इस वक्त। देवेंद्र कुलकर्णी पहुंचे 18 रनों पर। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से चकमा खाया और गेंद विकेट कीपर के हाथ में चल गई थी बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 23 रनों पर बिना किसी क्षति के। चौथा ओवर चलता हुआ देवेंद्र कुलकर्णी 18 रनों पर खेल रहे हैं, जितेंद्र देशमुख खेल रहे हैं 4 रन पर, 9 स्ट्राइक रन पर। सुहास कोटक गेंदबाजी के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी, इस बार बाहर हटकर खेला उन्होंने।
गेंद हल्की सी थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाते हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर चौथे ओवर के समाप्ति हुई। 4 ओवर के समाप्ति हुई। टीम का कुल स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। जितेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 4 रन पर, जितेंद्र देशमुख खेल रहे हैं 4 रन पर, देवेंद्र कुलकर्णी खेल रहे हैं 19 रन पर। 4 ओवर के समाप्ति। To be the first semi-finals of CPL 2023. Meanwhile, a full toss ball played towards cow corner for a single. Batsman needs second. Looking for a second run, but a superb fielding. Good throw in time. Restricted batsman for a single. Started with a single. Devendra Kulkarni on strike. Tried to play towards mid-wicket region, got an outside edge, went to a short third man. So far, so good. Kunal Desai. This is the first semi-final of CPL 2023 played between Sankalpa Supernovas and Veer Marathas. Meanwhile, a full-length ball gave only a single. An important first semi-final of the season. Whoever team wins, it will advance to the finals. First ever final of the season 2023. Supernovas, they have coming off a nail biter before this. Another good length ball played towards square leg region, but there's a fielder. A good field, batsman won second. Denied rightfully. Supernovas might not have lost any wickets, but they haven't scored much. The match is 8 overs aside, so we are halfway through of the game. Another outside edge, went to a short third man. A superb disciplined bowling by Veer Marathas. They're restricting Supernovas to score off any fast runs. We have seen this in earlier match as well. When Veer Marathas were bowling, they bowled superbly. They restricted the Robodogs as well. Meanwhile, another full length ball, cross horizontal bat shot, tried to get a run out, a misfield and overthrow. Could have been a dot ball, but end of the overs, end of 5 overs, 30 runs for loss of no wicket. 3 overs to go. No score whatsoever. If you score like this, it seems that Supernova, the game is slipping out of their hands. The first semi-final, even though it's a semi-final, you need to have a respectable score if you want to win this game. And the par score here at this ground is 75 runs in 8 overs. Bowler's name. Barambe has come to bowl. Good start to the over. Tried to play towards square leg, missed out. टू पॉइंट तो देतात फक्त बटनला हात नका लागू. Another shot of good length ball, played towards fine leg. Batsman looking at the ball. Wrong decision, but took a second on his throw. Good running between the wickets by Supernovas, but they are lagging behind. The scoring rate is so less. Another shot of good length ball played towards fine leg region, but there's a fielder placed. Oh, good dive towards his right. But in vain, went to the boundary, first boundary of this over. Look at that. A short pitch ball.
played towards fine leg region, a good dive towards his right, but could not stop the boundary. Much needed boundary for Supernovas, bringing the total to 37 runs. 3 balls to go in this over. Devendra Kulkarni is batting on 28 in 22 balls. Another switch hit played towards third man for another boundary, second consecutive boundary for Devendra Kulkarni. Supernovas would want much more of these. What an innovative shot by Devendra Kulkarni. 41 runs in 5.4 for loss of no wickets. Now they are picking up. They've got only 14 balls left. 14 balls left in this first semi-final. Another good length ball played towards point region that might go for third consecutive boundary. Superb batting by Devendra Kulkarni, unleashed his force to third consecutive boundary of this over. Much needed runs for Supernova. They need to cope up with the pressure of the semi-finals. 75 is a par score, as I said. Another shot of good length ball played towards covers region for another boundary, fourth consecutive boundary of this over. Still 1 ball to go. Superb batting by Devendra Kulkarni. It seems that Dilesh has no answer whatsoever. I beg your pardon, that is the end of over. That is an end of the over. At the end of 6 overs, Supernovas at 49 for loss of no wicket. It seems the batsman has been retired. We thank our sponsors who helped us to bring this action live for you on YouTube. All our sponsors and title sponsors. This is the first season of CPL 2023 and we are here at the first semi-final in Mahatma Nagar, Nashik. Supernovas, they are coming off a nail-biting match. Before this match, it was a tie. On a basis of net run rate, Supernovas were advanced to the semi-finals. So this is the first semi-finals being played between Supernovas and Veer Marathas. And we have a change of a batsman. Hey, Dinesh Thakur alay re batting la. Thakur, a very experienced campaigner, very much experienced. Supernovas have Bhushan Nemade yet to come. So they have 2 overs and a lot of firepower left. Can Dinesh Thakur turn the tide for Supernovas? Meanwhile, Mukesh Khairnar, full length ball, tried to play over long on region, got an outside edge, straight to the keeper for a single. That brings Devendra Kulkarni on strike, the man in form who already hit 4 boundaries in the previous over. Mukesh is being so economical, gave away only 6 runs so far in 1.1 overs. It's going to be an amazing tussle between Devendra and Mukesh. Well bowled, right into the block hole. Mukesh, what a bowling. Mukesh Khairnar, what a bowler he is. He bowled superbly in the last match as well. And even now, right in the block hole. Did not give any room whatsoever for Devendra. But could not restrict for a single. Dinesh Thakur on strike. A shot of good length ball, tried to play fine leg region, got an inside edge, man in pursuit and a good stop there. A good field, definitely saved, 2 runs. But batsman looking for third, Dinesh Thakur in pursuit, that might be a run out. Close run out, a good dive at the end. What a commitment. What commitment is this for Supernovas by Dinesh Thakur? An athletic 52 years old young boy. Dinesh Thakur snatched 3 runs of this ball, almost went to a boundary. What commitment these consultants are showing on the field. Amazing.
Mukesh Khairnar, precious dot ball. Superb bowling, superb. Devendra Kulkarni is in excellent form, batting on 41. 2 balls to go in this over, 54 for no loss. Another full length ball played towards long off region for a single. Good over so far by Mukesh. Direct throw. Mukesh is limping. He's struggling with some injury down there. But what a commitment. As I said, the age is catching up. It's quite humid out here in Mahatma Nagar, Nashik. And these consultants, I tell you what, they are giving more than 100%. They're throwing their bodies all over the ground. It is not that easy. Last ball of this over. Dinesh Thakur on strike. Mukesh Khairnar. Can Dinesh Thakur make maximum out of this? Good ball. Good dot ball. A blind heave over square leg. Missed out straight to the keeper's hand. End of an important 7th over. At the end of 7 overs, Sankalp Suvanovas at 55 for no loss. Dinesh Thakur batting on 4. Devendra Kulkarni batting on 42. It seems that message has been sent. Last over to be bowled. Pantavan. As I said, we thank our sponsors. This is the first season of CPL 2023. All the consultants around Nashik, in and around Nashik, they have participated in this CPL 2023. An amazing response. If time allows, I could tell you a lot of spectators here. Meanwhile, Atul Mahajan is bringing the last over of this first semi-final. Devendra Kulkarni on strike. Try to play a switch hit. Appealed for a catch out. Veer Marathas do not mind this. It doesn't matter for Veer Marathas as long as it's a dot ball. Wickets are not important here, but dot balls are. I tell you what, a cheeky shot played towards point region, backward point for a single. Switching the strike to Dinesh Thakur. Dinesh Thakur has got a lot of task at his hand. 4 balls to go in this over. They are merely at 56. I told you, the par score is 75. Can they reach to a par score? If they cannot, then it will be a trouble for Supernovas. Another full end delivery, try to play towards leg side region, went high up in the air to the backward point leg. Went high up in the air. Meanwhile, he fields the ball. Dinesh Thakur took 2 runs. Veer Marathas would not mind this. They would not want boundaries in this last 3 balls. Singles and doubles will do for them. And Supernovas, they would want much more than that. 3 deliveries left. Atul Mahajan, right arm over the wicket. Full length ball. Took an outside edge. A lucky escape for Dinesh Thakur. Went straight up the air above keeper's head for the first boundary of this over. Warning for the first bouncer has been given. If you see that, went straight high up in the air over the keeper's head for the first boundary. It doesn't matter how runs come. Supernovas will be happy as long as they are coming. 2 balls to go. 62 runs. 75 is a par total here. They need 2 big hits if they want to reach to a par score. Another full length ball, another heave, another miss. Single run. Throw towards bowler. Sensible fielding, sensible bowling by Atul Mahajan. 1 ball to go. 63 for no loss. Devendra Kulkarni on strike. Full length ball. Played towards point region. Devendra looking for double. That could be close, but comfortably reached home. End of the 8 overs. Supernovas at 65 for no loss. And still 2 overs to go.
बॉलरचं नाव काय विचारा बरं. Has been brought back in. He's bowling its second over from pavilion end. Dinesh Thakur on strike. You have fine leg, deep square leg, cow corner, long on, long off, covers, extra covers, backward point and point, and a short third man. Shot of good length ball, no room whatsoever, heap towards long on. Thakur being very lazy in the middle, that could have been two. Suhas Kotak is being very stingy. With the single, Devendra Kulkarni is on strike, is batting on 45 runs. A good length ball, played for single. Good disciplined bowling by Suhas Kotak. In a 10 overs game, the par score is 85. The batsman has been changed. Devendra Kulkarni has been retired, hurt, and that brings Bhushan Nemade in. Dinesh Singh Thakur and Bhushan Nemade, two experienced campaigner. They both play for Nashik Masters. Bhushan Nemade, he leads the side for Nashik Masters. They recently won the cup in Nanded. I beg your pardon, in Aurangabad. Bhushan Nemade played an excellent role there. Dinesh Thakur is known for his big hitting. Can he convert this over into a big over for Supernovas? Full toss ball. And a no ball called. Misfield back there. A sloppy field. And that went to a boundary. A rare sloppy field by Veer Marathas. Look at that. Full toss ball way above the west. Called no by the umpire. Sloppy fielding by the fielder. And that costed them 4 runs. In fact, 5 runs. 1 extra ball to be bowled. The pressure is taking the best of both the teams. Can Suhas Kotak survive this room? Another good length ball, played towards long on region, fielder coming underneath, a big bounce for a single. Bhushan Nemade quick on his feet, comfortably completed double. Bhushan Nemade, lightning quick between the wickets. 74 for 1. Dinesh Thakur. It seems his age is catching up. 3 balls to go in this over. Another shot of Woodland ball played towards deep square leg region. A fielder could only be a spectator. That went towards boundary. A superb shot by Dinesh Thakur. Nothing wrong with the delivery. A good length ball. He went way outside the off stump, made room on a leg side, picked that ball up. No chance whatsoever for a fielder. An important boundary in this over. '78. '78 runs, 2 balls to go in this over. Dinesh Thakur batting on 17 and 10 balls. Bhushan Nemade is yet to face a ball. Another shot of good delivery played towards long off region, fielder coming underneath, and that is a dolly. He missed out on a dolly. Easy catch, dropped by the player. Will that be expensive? Will that be expensive for Marathas? That brings Bhushan Nemade on strike.
A horizontal bat slap. Bhushan Nemade wanted to slap it over deep mid wicket. Look at that. That ball just went high up in the air towards long off region. That's dolly catch dropped by the fielder. Will that be costly for Veer Maratha? The time will tell. At the end of 9 overs, 79 for 1. Dinesh Thakur batting on 18. Bhushan Nemade batting on 0. 6 balls to go in this innings. 6 balls to go. This brings the last over. Navnath is going to bowl the last over. Mautham. A dropped catch by Dinesh Thakur. A wicket. A dropped catch. The 2 catches have been dropped of Dinesh Thakur. Look at that. Good attempt. We went from short third man to short fine leg. It is difficult while running the catch. Navnath to Bhushan Nemade. Good ball. Slap towards cow corner for a single. Good disciplined bowling by Navnath. An overthrow. Dinesh Thakur denied it. Bhushan wanted second. But a good backup back there by Veer Marathas. Superb bowling by Navnath. Gave only 2 runs so far in this last over. 4 balls to go. A long run up for Navnath. A very clean action, neat and clean action comes slowly towards pitch. And what a pickup shot, went high up in the air above Cow's corner for the second 6 of this match. Dinesh Thakur, as I said, maximum 6 awards will be given by himself to himself. Dinesh Thakur, look at that, what a pickup. What a pickup. That just went high up in the air, way above Cow's corner. An important 6, much needed 6 in this over. Taking this total to 87, Dinesh Thakur batting on 25, 3 balls to go. Navnath, long run up. Another full end delivery play towards leg region, fielder coming underneath, that will be straight into hands. Finally, Dinesh Thakur got out on the 3rd chance. Look at that. He just went inside the off stump, made some room to the leg side, always wanted to play that shot. Went high up in the air, but straight into the hands of Dinesh. End of Dinesh Thakur. A very brisk inning, 25 runs in 13 balls. Dinesh Thakur played so well, but at the end fell short of the boundary. That brings Dr. Pawar, Dr. Amol Pawar. '87. 2 balls to go in this over. Navnath, right arm over the wicket to Amol Pawar. Full toss ball! And that just went out of this park. No ball. Above the west. That was a close call by the umpire. It seems the ball was dipping, but a no ball call by the umpire. Free hit. Free hit, 2 balls to go. And out of that, 1 is a free hit.
2 balls to go. Another full toss ball played towards mid-off region. Bhushan Nemade lightning quick on his feet. Stole 2 runs. That could be run out of the batting end. What a running. What running between the wickets between these two. Bhushan Nemade so quick on his feet. Dr. Pawar batting on 8 runs in 2 balls. 1 ball to go in this over. त्यांना सांग ना आवाज येतो म्हणा इथे माईक मध्ये सांग त्यांना. Another slow ball played towards square leg region. What a finish. Finished with a boundary. 100 up. 100 runs in 10 overs. Look at that. Slower ball. Change of pace for Navnath. He picked it up very surely. One bounce over the fielder's head for the boundary. 100 runs at the end of 10 overs. Sankalpa Supernovas. 100 for 2. They set up a wonderful target for Neuro plus Veer Maratha. They need 101 runs in 10 overs. It is going to be an interesting chase. I'll see you in 1 minute.
101 runs. सर 101 रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर जिस तरह से आप दूसरी बारी में बल्लेबाजी करते ना कि आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को देखते हुए आपके विकेट कभी कभी गिर जाते हैं और उसमें आप फंस जाते हैं। 101 रन बनाना 10 ओवर में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और फिर एक अच्छे स्ट्रोक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। Meanwhile, what a ball by Bhushan Nemare. He tried to play towards leg side, went to the offside. Leg byes by the umpire. We've seen in the last season as well that Bhushan Nemare has bowled so well. The way that he is bowling, it seems that they have started off really well. सही सर आपका कि भूषण नेवाड़े सर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चौधरी प्रोफेशनल प्रीमियर लीग में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर एक गेंद। हल्की सी अपील जरूर करना चाहते हैं खिलाड़ी, लेकिन हम अंपायर का निर्णय अंतिम माना जाता है क्रिकेट में। आप सभी दर्शक जानते हैं अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, अंपायर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। लॉट ऑफ spectators in this match. Very true, very true. So far so good. Bhushan Nemare, it was close to the leg stump. A full length ball, and that's a wicket. Bhushan Nemare, a typical celebration by Bhushan Nemare. Look at that. A winning dance by Bhushan Nemare, as we will keep saying, as rightfully mentioned by Kulkarni sir, he has bowled superbly in Chaudhary Premier League. Look at that. If you see in replay, a very nice and soft action, way outside the off stumps, tried to play towards covers region, took an outside edge straight into the keeper's hand. First wicket down for Veer Maratha. भूषण नेवाड़े बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चल गई। जैसे कि विकेट मिला उनको खुशियों का इजहार उन्होंने मैदान के ऊपर किया। That's the way that Bhushan Nemare celebrates. Still one ball to go in this over. What a start for Supernovas. First they put up a superb score of 100 runs, and now they have started off with the wicket in the first over. सर एक और एक बात होती है कि जैसे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है तब आपके गेंदबाज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, यदि स्कोर कम होता है तो बॉलर भी क्या कर सकते हैं आखिरकार। Rightfully said Kulkarni sir. Another full length ball. Navnath Jondale was on strike, straight to the short fine leg, end of the first over. They've scored 4 runs for the loss of 1 wicket. Bhushan Nemare, in a pursuit of 101 runs in stipulated 10 overs, Veer Maratha, they are struggling. Got an early wicket in the first over. This brings Dr. Pawar from Pavilion End. He is bringing second over of the season. काफ़ी कामयाबी ओवर की समाप्ति हुई भूषण नेवाड़े की। पहले ओवर में विकेट लेने के बाद उत्साह में बढ़ोतरी हो जाती है, फिर आने वाले गेंदबाज उसका पूरी तरह से फायदा उठाते रहते हैं। इस बार गेंद लेग स्टंप पर कला के सारे मोड़ी की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर स्केले के ऊपर। जैसे कि उनके पास गेंद आई तुरंत उन्होंने हालांकि नॉन स्ट्राइक गेंद पर हालांकि अच्छा थ्रो किया और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। अपना आनंद व्यक्त करते हुए खिलाड़ी मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट का जो सवाल होता है वो कभी कभी इस तरह से फंस जाता है। As he rightfully said, that when you have a lot of huge score to chase down, the batsman usually falls under pressure, and you see the pressure is taking toll of Veer Marathas. There are 2 consecutive wickets in this over. लगातार के 2 ओवर में 2 विकेट लेने के बाद डॉक्टर दिनेश ठाकुर, जिनके चेहरे पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है इस वक्त। Dinesh Thakur is proactively in the field, setting up the field. We have mid-on, mid-wicket, square leg, short fine leg. There's a slight fielding change. Now we have a long on. Navnath Jondale on strike. Dr. Pawar, left arm round the wicket. That was close to the leg stump. Wide called by the umpire. An extra run.
extra run, extra delivery. So far, Veer Marathas do not have any answer to this superb disciplined bowling by Supernovas. They're crumbling under the pressure, Veer Marathas. Dr. Pawar, who hit one boundary and a six in the last over of this innings, now bowling superbly. If you see, is a great field setup there for a right-hand batsman. Good proactive captaincy by Bhushan Nemade and Dinesh Thakur. So far, only 2 runs are given away in 2 balls. No ball call, play towards the covers region. The man in pursuit, but in vain. The first boundary of this innings. Through the bat of Suhas Kotak. इन 4 रनों के साथ निरोप्लस वीर मराठा का कुल स्कोर 2 विकेट पर 11। सुभाष कोटक 4 रनों के साथ खेल रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक पुल करने की कोशिश, उनको मिड विकेट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाद जाती हुई 6 रन का इशारा अंपायर का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। सर क्या कहेंगे 6 रनों के साथ? That is a much needed 6. V Marathas, they're pursuing, they're chasing 101 runs. They require 10 runs per over. And when you have such a huge run rate, you need to go after the bowler. डॉक्टर वैभव पवार देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब सुहास कोटक फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 अंकों में पहुंचे, 10 रन पर खेल रहे हैं। टीम का कुल स्कोर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर निरोप्लस वीर मराठा 100 रनों का पीछा कर रही है इस वक्त। 2 विकेट पर 17 रन। इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर और बाहर जा रही है। खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथ में चल गई थी बिना किसी रन के। 17 रनों पर 2 विकेट गिर चुके हैं। लगातार पहले 2 ओवर में 2 विकेट गिरे तो हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आप आ जाता है बल्लेबाजी के ऊपर, फिर उसका बॉलर फायदा उठाते हैं। लेकिन इस वक्त हालांकि सुहास कोटक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने हिसाब से। When you have 2 consecutive wickets, it's definitely the batting side is under pressure. But the way that Suhas Kotak is batting, he is not feeling any pressure. He's batting on different pitch. Now that is again try to bowl way outside the off stump. In that attempt, he wanted to get outside the reach of a batsman. In that attempt, he went way outside, and it's called wide. Now you see the pressure is on the bowler. लगातार 2 वाइड डालने के बाद हालांकि प्रेशर इस वक्त हालांकि बॉलर के ऊपर निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि, लेकिन जिस तरह से सिक्सर लगाया था सुहास कोटक ने, उसके बाद में बॉलर के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी करते हैं डॉक्टर वैभव पवार। इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार, ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने कवर के क्षेत्र में, लेकिन देखते हैं वहां पर मिस फील्डिंग हुई, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सारा खिला हुई स्ट्रोक, जमीन को चीरती हुई गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सर इस स्ट्रोक के बारे में आपको क्या लगता है? A superb shot by Suhas Kotak. He is in excellent form. The way that he is batting today, he has scored 2 boundaries and a 6 in this over. Nothing is stopping him today. They are chasing down a huge momentous score today, and they need this kind of an inning. 14 runs of 4 balls, Suhas Kotak, still 1 ball to go, and definitely Dr. Pawar is under pressure. Look at that, the pressure is telling. Dr. Pawar is under pressure. He needs to bowl 1 more ball to complete this over. 22 runs so far, 18 runs. He's given 18 runs in his 5 balls. He needs to bowl 1 ball more. Another good ball, cut through the short third man, just for a single. That is the end of 2 overs, and Veer Marathas, they are batting at 23 for the loss of 2 wickets. Suhas Kotak batting on 15, Navnath Jondale batting on 2. With the single, Suhas Kotak will keep the strike, and you will have a change of bowling. 2 ओवर के समाप्ति हुई। निरोप्लस वीर मराठा का कुल स्कोर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 23 for 2 after 2 overs now.
Navnath Jondole playing on 2 and the Suhas Kotak playing on 15, whereas the Krishnas or the 19 partnership. We have a toss between the next semi-final match, the second semi-final match. The toss has been done. The match is going to be played between Nashik Robodogs. Nashik Robodogs has won the toss, and we'll come to know what they have opted for. But there's going to be a second match. Coming back to the first semi-final that we have, after 2 overs, they are 23 for 2, and we have Dinesh Thakur as a bowler. He is a very experienced campaigner, Dinesh Thakur. Yeah. डॉक्टर दिनेश ठाकुर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनके पास, लेकिन देखते हैं किस तरह से इस बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश बैट्समैन की, लेकिन पूरी तरह से बीती होती हुई और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ। रन किस तरह से बनते क्रिकेट में, कौन किसी की परवाह करता है, लेकिन एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दिनेश ठाकुर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक सीधा उठा दिया उन्होंने, डीप स्केल के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाद जाती हुई 6 रनों के लिए बाहर। Dinesh Thakur is erring in his line. If you see, he is giving so much room on the leg side. Suhas Kotak in excellent form. He made room on the leg side. That just went high up in the air. इन 6 रनों के साथ सुहास कोटक पहुंचे 21 रनों पर। नवनाथ जोंदड़े खेल रहे 2 रनों पर 26 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए बनती हुई जा रही है। टीम का कुल स्कोर 30 रन 2 विकेट पर। The way that Suhas Kotak is batting, it seems that Veer Maratha, they have taken on their mind Dinesh Thakur. He's slow in the air. Now this is a typical Dinesh Thakur delivery, but played towards point region. Good field there. Restricted batsman for a single. Good comeback by Dinesh Thakur. The way that Suhas Kotak is playing, I feel that Veer Maratha, they're really serious about the chase. सुहास कोटक के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। यदि आखिरी गेंद तक सुहास बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से चित्र हालांकि अलग हो सकता है। Meanwhile, what a ball by Dinesh Thakur, what a comeback. Beaten the batsman with the pace. Dinesh Thakur went in the keeper's gloves. Nobody appealed for it, but I told you, he is a very experienced campaigner. See, another dot ball. Now that was the mistake that he made against Suhas Kotak. He was bowling on the leg side. Now for this batsman, he's bowling on the off side. ऑफसाइड दी स्टंप, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रयास इस वक्त डॉक्टर दिनेश ठाकुर का। पूरी तरह से उन्होंने बांध के रखा हुआ है क्योंकि वो लेग स्टंप के ऊपर ज्यादा जाना नहीं चाहते। Another good ball played towards long off region. Meanwhile, the fielder comes. Suhas Kotak wants to. That could be risky, but a poor throw. A very poor throw. Suhas Kotak comfortably reached home, completed 2 runs in this over. पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फील्डर के ऊपर दबाव डालकर लिया। क्या कला है ना खिलाड़ियों के पास रन बनाने के लिए, बहाने ढूंढते रहते हैं लेकिन रन आते रहे हैं उसके साथ साथ। That was excellent running between the wickets. Again, way down the leg side, played to a short fine leg, but good field down there. Good throw back in the keeper's gloves. End of 3 overs. Veer Marathas, they're batting on 34. They are batting with the required run rate what they needed. 3 ओवर के समाप्ति हुई। 3 ओवर के समाप्ति पर 34 रन 2 विकेट पर। 34 for 2। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुहास कोटक खेल रहे हैं 22 रन पर, नवनाथ खेल रहे हैं 5 रन पर। 30 रन की साझेदारी हुई है तीसरे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ी के बीच में। और सुहास कोटक जब तक मैदान के ऊपर रहेंगे तब तक बड़े स्ट्रोक आते रहेंगे, क्योंकि यदि लेग स्टंप के बाहर गेंद होती है तो उसका पूरा समाचार हालांकि सुहास कोटक लेते रहे अब तक। The way that Suhas Kotak is batting on 22 in 7 balls and he has hit 2 sixes and 2 boundaries. So if you see that he is in an excellent form, Suhas Kotak. He knows how to play tennis cricket. Tennis cricket is altogether a different ball game as compared to seasons cricket. If you see, batsmen tend to go towards offside and try to hit the ball towards leg side all the time. टेनिस क्रिकेट जो होता है वो अदर खेलों से बहुत निराला खेल ये साबित होता रहता है। गेंद हालांकि टप्पा खाने के बाद कब बाउंस होगी ये तो पता ही नहीं चलता कभी कभी।
Meanwhile, we have a bowling change. We have Devendra. Look at that. As I said, every batsman want to play on a leg side. There's a throw down there. A restricted batsman for a single. एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ निरो प्लस वीर मराठा का 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। सुहास कोटक 22 रनों पर खेल रहे हैं, अब स्ट्राइक का सामना करेंगे देवेंद्र चौधरी। क्या बॉल है? इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक ऊपर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, स्ट्रोक के लिए पहले जगह बनी, खेल दिया था स्ट्राइक आउट के क्षेत्र में से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले दूसरा रन भी पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल के साथ। ये 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ निरो प्लस वीर मराठा का 37 रनों पर 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। Veer Maratha must be very happy that Suhas Kotak is on strike because he is batting on 24 and 8 balls. So they want much of the strike to Suhas Kotak because he can damage the opposition. Look at that. What a shot. There was a full toss played over deep mid wicket. Bhushan Nemade, who's patrolling the boundary down there, could not do anything but to see the ball sailing over his head. Suhas Kotak batting on 30 runs in 9 balls. Another full toss ball played towards deep square leg. There's a misfield there. Navnath wanted second, denied by the Suhas. Devendra Chaudhary, expensive so far, given away 10 runs in 4 balls, and that's what exactly Veer Maratha needs. They need 10 runs per over if they want to win this game, and they are actually keeping up with the required run rate. Good comeback by Devendra. Gave only a single that brings Suhas on strike. 1 ball to go in this over. 3.5 ओवर में अब तक 45 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं इस ओवर के आखिरी गेंद पर सुहास क्या करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बैक ऊपर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं कवर के क्षेत्र में फील्डर बहुत दूर, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाने की कोशिश, थ्रो आता हुआ विकेटों के ऊपर, लेकिन तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों ही खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल के साथ। इसी के साथ ये चौथे ओवर के समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति पर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर 47 for 2। सर, This is the first semi-final of CPL 2023. Supernovas, they batted first and they put up a score of 100 runs. They were very happy with the end of the first innings, but the way that Veer Maratha is chasing is so dramatic. They've lost 2 early wickets, and then you have Suhas Kotak, who came into a crease, and he has played a hell of an inning. 33 runs in 11 balls, and they're again in the game. 11 गेंदों में 33 रन बनाए हैं अब तक सुहास कोटक ने। अच्छी बल्लेबाजी की, 2 चौके और 3 सिक्सर लगाकर 33 रनों पर खेल रहे हैं इस वक्त। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनका दिखाई दे रहा है इस वक्त। 47 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति। करंट रन रेट इस वक्त 11.75 का, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9 रन प्रति ओवर बनता हुआ। सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है दोनों खिलाड़ियों की। But as you rightly mentioned in the earlier innings, if you want to win this game, you have to bat throughout the 10 overs with the same run rate, and that is very difficult to keep up the task. Will Veer Marathas be able to keep the required run rate up to the task till 10th over? Now that will be an interesting thing to see. Meanwhile, we have a change of bowling, and you have Navnath on strike. Devendra Kulkarni, who has come to bowl from pavilion end, he is going to bowl the 5th over of this game. A good start to the over, tried to play towards leg side, took an outside edge, a top edge I would say, went high up in the air. Devendra Kulkarni. Now this is going to be interesting. You have Suhas on strike. What is it stored for a bowler? Good ball, appealed,
appealed, a close call. Close call, a very important wicket, a good ball. Bowler and a keeper, they're not happy with the decision. But as we say, the umpire's call is the last call and a final call. We could see why fielding side is so excited to get this wicket, because Suhas is in excellent form. That was close. That was very close. काफी नजदीक का मामला हो सकता था, लेकिन अंपायर डिसीजन नहीं दिला, डिसीजन आप कुछ नहीं कर सकते। फिर देवेंद्र इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार, ऑफ स्टंप पर गेंद बैक पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला, कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। देखते हैं वहां पर एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए, लेकिन अंपायर के इशारा था हुआ 4 रन के लिए, गेंद बाहर चली गई थी। और इसी के साथ ये 50 रन भी पूरे हुए। नेहरू प्लस वीर मराठा के 50 रन पूरे 52 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। सुहास कोटक खेल रहे हैं 37 रनों पर, 13 गेंदों में 3 चौके और 3 सिक्सर लगाकर एक बेहतरीन बल्लेबाजी का। The way that Suhas Kotak is batting, it reminds me the batting of Harmanpreet Kaur yesterday. The way that Harmanpreet Kaur batted, she scored 65 runs in 30 balls. Another good ball, good comeback by Devendra. It was a good length ball. It rose to his body. Suhas could not find a room to play towards leg side and got caught in the middle. Important dot ball. So far given away only 5 runs in 4 balls. Devendra Kulkarni. As we see that everybody wants to play on a leg side, this time it went to a short fine leg for a single, and Supernovas would be happy that they got Suhas Kotak off the strike here. You have Navnath Jondale on strike, 1 ball to go in this over, 53 for 2 in 4.5 overs. White ball. White ball called by the umpire. One ball to go. 1 ball to go in this over. Navnath on strike. इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद खेल दिया था, उसको कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ ये ओवर के समाप्ति का इशारा था वो अंपायर का। 5 ओवर के समाप्ति, 2 विकेट पर 55 रन, यानी आने वाले अभी भी 5 ओवर में लगभग रिक्वायर्ड रन रेट 9.20 का, उस हिसाब से अभी भी 46 रनों की जरूरत आने वाले 30 गेंदों में। सर, We are halfway through this game and we have seen that the chase is on. The chase is on. Halfway through, 5 overs, 55 runs. They required 46 more. And the way that these guys are batting, it seems easy for Veer Marathas. Meanwhile, you have Dinesh Thakur again. दिनेश ठाकुर अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में दिनेश ठाकुर ने 11 रन दिए थे, एक बड़े छक्के लगाए थे सुहास कोटक ने। और फिर अब ये इस ओवर में देखना यह है कि 2 विकेट पर 55 रन, 5 ओवर के समाप्ति, आने वाले 5 ओवर में अभी भी 46 रनों की जरूरत। This is going to be an important over for Supernovas. A full length ball. Appealed for a catch, caught behind. What a ball.
दिनेश ठाकुर अपनी गेंदबाजी में लगातार विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से हालांकि दबाव बनता जा रहा है और विकेट लेने के आसार तैयार करते जा रहे हैं। विकेट ऐसे वैसे नहीं मिलती, जैसे कि उसके लिए वातावरण पहले तैयार करना पड़ता है, फिर बाद में विकेट मिलती रहती है। Another good ball went towards offside in deep cover for a single. Veer Marathas do not mind this since they have Suhas Kotak on strike, and that's what exactly Veer Marathas want. सर बराबर, जैसे कि सुहास कोटक जिस अंदाज में खेल रहे हैं ना, वो एक अलग अंदाज में खेल रहे हैं तो रन जरूर बन सकते हैं उनके लिए, तो यही बल्लेबाजी के लिए आना बहुमूल्य होता है। नवनाथ को यही सोचना पड़ता है कि उनके लिए स्ट्राइक दे एक रन लेकर। Meanwhile, a helicopter shot played by Suhas Kotak towards cow corner for a single. Devendra Kulkarni is fielding there. So far so good, Dinesh Thakur. A very experienced campaigner, as we said. He's got a lot of variety in his bowling. Got a wise head on his shoulder, Dinesh Thakur. नंबर का एक्चुअली था नमस्कार गेट वरती समोर एक्सयूव्ही लावलेली आहे, ज्याची असेल त्याने काढून घ्या। गेट समोर आपलं बंद आहे ना? आगे आकर खेला था स्ट्रेट डीप बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। Last ball of this over, Dinesh Thakur. He's bowled a very economical over. This is going to be interesting because Veer Marathas, they did not score much end of this over, and Supernovas would want to finish this over on high. And that could be a catch. Fielder coming underneath, and that's a catch, an important wicket. Dinesh Thakur bowled superbly. As Kulkarni sir rightly said, we need to create pressure. You see that a slower ball tried to play over long off region, went high up in the air. A good catch at the covers, Dinesh Thakur. An important fall of Suhas Kotak. He got out on 39. सुहास कोटक का विकेट की तलाश वहां पर डॉक्टर दिनेश ठाकुर को दी, और जो विकेट चाहिए था वो उनको मिलता हुआ। कहती है ना कि कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, टेक द कैचेस विन द मैचेस, लूज द मैचेस लॉस द मैचेस, ये होता है क्रिकेट में। और इसी के साथ सुहास कोटक का एक सबसे बड़ा विकेट लेकर डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने ये साबित किया कि वो अभी भी इस खेल में वापसी कर सकते हैं। The way that Suhas Kotak has got out, now Supernova is back in the game again. That was the biggest hurdle that they had. At the end of 6 overs, 58 for loss of 3 wickets. They required 43 more runs in 4 overs to be bowled. 6 ओवर के समाप्ति हुई, टीम का कुल स्कोर 58 रनों पर पहुंचता हुआ तीसरे विकेट के लिए। और विकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सुहास कोटक जैसा विकेट जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैदान के ऊपर। 58 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ नीरो प्लस वीर मराठा रिक्वायर 43 रन, 24 डिलीवरीज टू कम नाउ। 4 ओवर में 43 रनों की जरूरत, 7 विकेट हाथ में है, लेकिन रिक्वायर रन रेट इस वक्त हालांकि 10.75 का बनता हुआ जा रहा है, लगभग 11 रन प्रति ओवर। देखते हैं आने वाले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। On the non-striker's end. Meanwhile, we have Navnath Jadhav on strike, and Devendra Kulkarni is back in attack. He's bowling his second over. He's given away 8 runs in his first over. Right arm over the wicket from pavilion end. A full length ball played towards square leg region. Bhushan Nemade. What a catch by Bhushan Nemade. Superb catch. Veer Marathas. Second consecutive wicket in the second consecutive over for Veer Marathas. It has happened before earlier in the innings. They have lost first 2 wickets consecutive overs, and again now 2 wickets in consecutive overs. लगातार के 2 ओवर में 2 विकेट यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी के ऊपर हालांकि इस वक्त हल्का सा प्रेशर जरूर लग रहा है, लेकिन हवाई रास्ते से आप खेलेंगे ना तो इसी परिस्थिति के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। आप ग्राउंड स्ट्रोक खेलनी चाहिए।
चाहे सिंगल्स मिले चाहे डबल्स मिले, लेकिन आप चौकिया और सिक्सर लगाने के लालच में अपना विकेट क्यों गंवाए, ये तो मेरा कहना आपके लिए। Meanwhile, we have Amol Rajdev in crease. A good length delivery, a dot ball. It seems that Veer Marathas, they're falling under pressure. सही है सर, जैसे कि सुहास का विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाज हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में जरूर दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र कुलकर्णी उसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। It's a good setup out there for Supernovas. Dinesh Thakur and Bhushan Nemade had set the field really well. We have short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on, long off, covers, extra covers, short third man. As I said, short third man, and the ball went to the short third man just for a single. Supernovas would not mind this, giving singles. जैसे कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो सिंगल्स के ऊपर सर काम चलते रहना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जहां चाहे वहां सिंगल्स के ऊपर आप लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। देवेंद्र कुलकर्णी फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, अच्छी गेंदबाजी, नेतृत्वली गेंदबाजी देवेंद्र कुलकर्णी की। Mukesh Khairnar is going to face the first ball. As you see that we have two new batsmen in the crease now, so it seems that Veer Maratha will have to start again. Another ball went high up in the air. Devendra Kulkarni was in pursuit, wanted to catch the ball. Bowler himself is running behind the ball. Comedy of errors here by Supernova. No fielder was backing up the bowler. Bowler is doing all the work. Look at that. A shot of good length ball, tried to play over mid wicket region, went high up in the air. Bowler went after the ball. Nobody replied. It's quite humid out there. All these consultants, they're putting their 100% on the field. It's very humid and hot here in Nashik. हल्की हल्की ड्रिंक्स भी मैदान के ऊपर जाती रहती है, क्योंकि गर्मी का मौसम इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से खिलाड़ियों के लिए कभी कभी रसायनें भी मैदान के ऊपर जाती रहती है, लेकिन वो बात अलग है। आप बड़े बड़े मैचेस देखते हैं तब उसमें आप देखते रहते हैं 61 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ न्यूरो प्लस वीर मराठा 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं देवेंद्र कुलकर्णी क्या करते हैं मुकेश खैरनार के लिए। 6.4 overs, 61 runs for the loss of 4 wickets, 2 consecutive wickets for Supernovas, and they are very happy with this. 2 balls to go in this over. Devendra Kulkarni. A full length ball played towards long on region. Dinesh Thakur in pursuit. He might successfully stop the ball for a single. Well, could not save 3 runs, but definitely saved 2 runs for his team. Dinesh Thakur. दिनेश ठाकुर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कम से कम 2 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाए। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग डॉक्टर दिनेश ठाकुर, क्या लाजवाब फील्डिंग करते हैं अक्सर। Last ball of this over. टीम का कुल स्कोर 63 रन 4 विकेट पर। Another shot of good length ball played towards cow corner. Bhushan Nemade very quick in the field. Wayward throw costed another run. Missed field in a backup. Now Supernovas need to be patient. They need to be disciplined if they want to win this game. These silly mistakes will cost them dearly. हालांकि वाइड और जो थ्रो हुआ उसके ऊपर उनको नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आप थ्रो जरूर करें लेकिन थोड़ा सोच समझ कर करते थ्रो तो शायद एक जो रन ज्यादा मिला है उनका वो उनको नहीं मिलता। 7 ओवर के समाप्ति पर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 18 गेंदें बाकी है और 36 रनों की जरूरत यहाँ पर मैच जीतने के लिए। If you see in tennis cricket, 36 runs in 3 overs is an easy task to be done. लेकिन सर जिस तरह से आप कहते कि टेनिस का ये अलग माहौल होता है, लेकिन अनसर्टन बाउंस भी होती है
जिसकी वजह से हालांकि बैट्समैन को कभी कभी तकलीफ पहुंच जाती है, हल्की सी बॉल को भी आप कभी कभी अपना विकेट देते हैं। Rightly said, it's altogether a different ball game when it comes to tennis. But tell you what, this match is evenly balanced. It's evenly poised. Any team can win this game here on. सात ओवर के समाप्ति पर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर आने वाले 18 गेंदों में यानी 3 ओवर में 36 रनों की जरूरत यहां पर निरोप्लस वीर मराठा ओवर के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक जरूर एक अच्छा खेला था उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद बहुत देर तक हवा में थी और पूरी तरह से वहां पर नेमाड़े सर पहुंचते, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा कैच भी देखने को मिला। सर जजमेंट के साथ कैच उन्होंने लिया। Superb catch by Bhushan Nemade. He is an excellent fielder and excellent player. Bhushan Nemade appreciating his teammates. An important wicket here. भूषण नेवाड़े सर की एक विशेषता सर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो जहां जाकर खड़े होते ना वहां पर कैच आ जाता है। ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। Another slow delivery. Devendra, a wise bowler, a very smart bowler, not giving any pace whatsoever to the batsman to play the shot. लगातार 2 गेंदों पर कोई रन नहीं, डॉट के रूप में देवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं। अच्छी और नतीतुली गेंदबाजी, जो कि अंतिम ओवर में हम अपेक्षा करते कि बड़े बड़े स्ट्रोक आएंगे, लेकिन यहां पर डॉट गेंदबाजी कर रहे हैं देवेंद्र, मानना पड़ेगा उनको। इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के से ढकेल देने की कोशिश उनकी पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले 1 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल और समझबूझ के साथ। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बहुत देर के बाद स्कोर बोर्ड में तब्दीली होती हुई 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर 66 for 5। As we said that 101 runs is a huge target to be chased down, and you need consistency while you're chasing the target. Again a heave went high up in the air, keeper coming underneath, and that's another wicket for Devendra. What a successful over he is bowling today. Devendra Chaudhary, he is on high. Still 1 ball to go in this over. If you see that, he did not give any pace whatsoever. Batsman wanted to hit it over square leg region, but went high up in the air, and keeper took the catch comfortably. So another wicket fell down. जैसे कि सुहास कोटक का विकेट गिरा, उसके बाद में हालांकि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं, और मैं तो समझता हूं कि हाजिरी लगाने का काम नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर टीम के कप्तान ज्यादा भरोसा करते हैं, उस भरोसा को आपको प्राप्त करना है बल्लेबाजी करके, एक अच्छी बल्लेबाजी करते। 6 विकेट पर 66 रन, 66 for 6। You have last ball to go in this over. Devendra Chaudhary. Another good ball, another miss, another precious dot ball. Devendra Chaudhary bowled superbly, 2 overs, 14 runs for the loss of 2 wickets. Super bowling by Devendra. Supernovas, they are all over this game. Bhushan Nemade leading from the front. It seems that Bhushan Nemade is going to bowl this penultimate over. 8 ओवर के समाप्ति हुई। निरोप्लस वीर मराठा का कुल स्कोर 6 विकेट पर 66 रन, यानी अभी भी 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। लेकिन देखते हैं निखिल मैदान के ऊपर पहुंचे हैं, अक्षर सारडा 1 रनों पर खेल रहे हैं। दोनों ही नए बैट्समैन है सर, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश यहां पर निमाड़े सर जरूर कर सकते हैं। Well, Veer Maratha has always been under pressure since they have lost Suhas Kotak, and we've seen that earlier as well. They have lost 2 early wickets. Then Suhas and Navnath, they had a good partnership between them till Suhas was there in the crease. It seemed that Veer Maratha was about to chase down the score as well, but since the fall of Suhas, they have lost the track as well. Meanwhile, you have an excellent bowler, Bhushan Nemade. Bhushan Nemade is playing all over Maharashtra throughout the season, and he's been part of
many more leagues. He's been part of Doctors League, part of Chaudhary Premier League. Yeah. Now he's playing the CPL as well. A very experienced campaigner. He has a lot of experience to play in different format of the game as well. What a ball, right into the block hole. Bhushan Nemade. He is funny. He loves to enjoy his game. He was not going to get the batsman out. He was just playing with him. A very easy going run up. Bhushan Nemade, if you see, starts with the small steps, reaches softly towards the stumps. Right arm over the wicket, Bhushan Nemade. Smooth action. Good length ball. Again the same thing. This time he's out. Keeper did not correct the ball, it seems. It seems that game is over for Supernovas now. Veer Marathas now. They do not have enough firepower, it seems, to chase down the required run rate, but they need to. If they want to get into finals, they need to win this game. आठ गेंदों में 33 रनों की जरूरत, यहां पर 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर। भूषण नेवाड़े तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार अच्छी गेंद आगे आकर खेल लिया था, बैक टू बॉल और कोई रन नहीं। अपनी गेंदबाजी के ऊपर फील्डिंग करना ये कोई मामूली सी बात नहीं होती, लेकिन भूषण नेवाड़े की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो अपनी गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन भी अक्सर करते रहे हैं, 2 कैचेस लेकर उन्होंने मैच को बदल दिया। इस बार गेंद लेग स्टंप पर, कला के सारे मोड़ने की कोशिश उनकी, पांडे के क्षेत्र में बैट्समैन की, एक रन पूरा किया। इक्का दुक्का रन से कुछ काम नहीं चलेगा। बड़े स्ट्रोक कहां गए? लेग बाय का इशारा अंपायर का, ओवर के समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। 90 ओवर के समाप्ति हुई। At the end of 9 overs, Veer Marathas, they've scored 69 runs for the loss of 6 wickets, and what an excellent spell by Bhushan Nemade, given away only 5 runs in his 2 overs and got an important wicket as well. 9 ओवर के समाप्ति हुई, 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 32 रन, बहुत ही बड़ा लक्ष्य अंतिम ओवर में। निखिल खेल रहे 1 रन पर, अक्षय सारड़ा खेल रहे हैं 2 रनों पर, और 2 नए बैट्समैन के ऊपर निश्चित रूप से दबाव इस वक्त। हालांकि अंतिम ओवर में 32 रन बनाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है आपके लिए। But as I said, anything can happen in cricket. If you get 2 good big hits in the start, the bowler can come under pressure. So it's going to be interesting. Can he start this over with a bang? Dr. Pawar. And started off with a wide. लेग स्टंप पर पड़कर गेंद बाहर जा रही है, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रनों पर अब पहुंचता हुआ, लेकिन अभी भी 6 गेंदों में 31 रन की जरूरत। पहले 2 या 3 गेंदों में यदि 2-4 छक्के लग जाते हैं या तो मैच का फांसा पलटने में आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। Another good ball played to a short fine leg, but a good stop there. Definitely saved a boundary for his team. अंतिम ओवर में एक अच्छी फील्डिंग जरूर करनी पड़ती है और रन बचाने की जरूर कोशिश करनी पड़ती है। वाइड और नो बॉल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है फिर आखिरी के 2 ओवर में। Veer Marathas still need 30 runs in 5 balls.
this delivery can decide the fate of Veer Maratha here. ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, एस लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के क्लोड में चल गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो गेंद पॉइंट और कवर के बीच में से खेल पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। कहते हैं ना कि हर एक टीम में एक बुद्धिमानी खिलाड़ी होता है, वो टीम को चलाता रहता है, लेकिन अंतिम ओवर जो डालता है ना, उसका दिल काफी मजबूत होना चाहिए। अंतिम ओवर में कुछ भी हो सकता है। Just a mere formality left. Supernovas, they've already advanced in the final. It seems a comfortable win here for Supernovas against Veer Marathas. Nothing much left in this game today now. 3 balls to go. A full toss ball played towards cover's region, deep cover, filter in pursuit, misfield, went for a boundary. Look at that, full toss ball played towards covers, a good cover drive down there. A sloppy fielding by Supernova, but it seems that it might not hurt anything to their campaign. They've already advanced to the finals now, merely 2 deliveries left. And a wicket. And a wicket for Dr. Pawar. A good catch at short fine leg. If you see, Akshay Sarda wanted to hit this ball over short fine leg region, but a good catch back there. It's not that easy how it seems, but a good catch. अब केवल एक गेंद का खेल बचा हुआ है और एक गेंदों में 25 रनों की जरूरत वहां पर मैच जीतने के लिए। बहुत ही असंभव वाली बात अब नीरो प्लस वीर मराठा के लिए। 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट को इतना महत्व नहीं जितना कि रन के लिए था, लेकिन एक गेंद केवल आना बाकी है और 25 रनों की अभी भी जरूरत। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं एक स्कोर के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने और इसी के साथ ये मैच हालांकि संकल्प सुपरनोवाज के खाते में जाता हुआ। पराभव का सामना करना सर, जिस तरह से हालांकि सुहास कोटक खेल रहे थे तब ऐसा मजबूत लग रहा था कि बल्लेबाजी बहुत शीर्षक तक लग रही थी, लेकिन सुहास के विकेट गिर जाने के बाद अचानक हालांकि उनकी टीम रन नहीं बना पाई। Well, that's what happens in big matches, the pressure situations. When you have a huge score to chase down, you need batsmen who can score consistently. And as we said, that when tough gets going, tougher gets going. So, Veer Marathas, they failed to comply with the toughness, and it seems they are now out of the tournament, and Supernovas, they are advanced to the final. So, we have our first team for CPL season 1 2023, who's advancing into the finals is Sankalpa Supernovas. इसकी बातों बातों में संकल्प सुपरनोवाज ने फाइनल में प्रवेश किया है। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे हैं उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुहास कोटक का विकेट बहुत ही बहुमूल्य था। वो शायद रहते आखिरी गेंद तक तो शायद मैच का नतीजा अलग होता, लेकिन उनका विकेट गिरा। बाद में एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और पराभव का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ओम वॉरियर आणि नाशिक रोबोडॉक्स. डीजी लायन्स ना, हां डीजी लायन्स नाही, ओम वॉरियर्स नाशिक रोबोडॉक्स. Hello, 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 and welcome all the YouTube viewers from the Mahatma Nagar cricket ground. This is the second semi-final being played between the Home Warriors and Team Robodox Nashik Road. Third ball of second over. This was a bouncer, but it's a wide ball, so one more extras to the total. The Home Warriors, the score reaches to 20 runs for the loss of 1 wicket, and this is the second over in progress. Next ball from Dr. Suhas Guge. To Dr. Sachin. Lovely ball, just played over the mid fielder for a single, so the scoreboard moves to 21 runs for the loss of 1 wicket. Little bit misfield over there, one more extra added to the total in the form of overthrow, so the scoreboard moves to 21 runs for the 22 runs for the loss of 1 wicket. Next ball from Dr. Suhas Guge to Dr. Sachin. Right arm over the wicket. Lovely ball, full length ball. The batsman just tucking it to a single. So the scoreboard moves to 23 runs for the loss of 1 wicket. And this is the second over in progress. This is a 10-over tournament. This is the second semi-final being played. First semi-final was won by the Sankalpa United. So they are in the finals now. And the second finalist will be decided from the winner of this second semi-final match. Next ball by Dr. Suhas to Dr. Milind Gangurde, right arm over the wicket. Just try to cut it over the third man, but very well fielding there. So one more to the total. The scoreboard moves to 24 runs for the loss of 1 wicket, and this is the second over in progress. Good start by the Home Warriors team. Last ball of second over to Dr. Sachin. Right arm over the wicket. Lovely shot in the mid wicket area. The fielder just not able to concentrate, and it was a drop. Very good shot, but equally well tried by the fielder. So the scoreboard moves to 25 runs for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. This is a 10-over match. This is the second semi-final match played between the Nashik Road team and Home Warriors. This is for the first time in the history of the medical field in Nashik that all the consultants, super consultants are playing under one roof in this tournament. Very good concept by IMA, and this is the first CPL, that is the Consultant Premiers Leagues. All the medicos enjoying the game.
just getting some physical activity for themselves and also some mind relaxation from their daily busy schedule. Next bowler is Dr. Suchil Anturlikar. Right arm round the wicket. Oh, lovely ball. The ball just remaining low and the batsman not able to capitalize on it. So one more to the total in the form of byes. Scoreboard moves to 26 runs for the loss of 1 wicket. This is the third over in progress. Lovely ball, the ball bouncing just over the wicket keeper, and the third man just not able to stop it. So 4 runs added to the total of Dr. Milind Gangude. Scoreboard moves to 30 runs for the loss of 1 wicket. Yeah, Nilesh. Next ball by Dr. Sushil Anturlikar, right arm over the wicket to Dr. Milind Gangude. Lovely played. He is a very cunning batsman. Very cheeky shot towards the third man boundary for a 4. Lovely batting by Dr. Milind Gangude. 4 more to his total. The scoreboard moves to 34 runs for the loss of 1 wicket, and Dr. Milind Gangude is playing on 23 runs. Lovely 23 runs of just 9 balls. So his batting average is about 300. That's a great average for any batsman in the power play. Next ball. Again the ball remaining low from Dr. Anturlikar. A dot ball, a very rare dot ball. Fifth ball from Dr. Anturlikar to Dr. Milind Gangude. Full toss ball, ball going towards the short third man area, square leg area for a single. So one more total added. Scoreboard moves to 35 runs for the loss of 1 wicket. In these 35 runs, Dr. Milind Gangude is on 31 and Dr. Sachin is just on 5 runs. One more to the total to end the over. The scoreboard moves to 36 runs at the end of 3 overs. So at an average of 12 runs per over, they have scored 36 runs in 3 overs. Lovely batting by Dr. Milind Gangude in this initial power play. So at the end of power play, the scoreboard moves to 36 runs for the loss of 0 wicket in 3 overs. New bowler from the pavilion end. Dr. Mohan Walke, right arm round the wicket to Dr. Sachin. Oh, lovely ball, but very well judged by Sachin. One moves to the extras. So the scoreboard moves to 37 runs for the loss of no wicket. Next ball from Dr. Walke. Oh, it was a good length ball. It's a bold, clean bold. Dr. Sachin is bold. Very good bowling by Dr. Walke. So the first blow to the Om Warriors in this first ball of the 4th over. Very good change of pace by the bowler Dr. Walke.
resulting in wicket of Dr. Sachin. This is the fourth over in progress for the Nashik Road team. Next ball from Dr. Mohan. Right arm left over the wicket to our left batsman. Just for a single. Very well ball, very well played towards the long on boundary. For a single, the scoreboard moves to 37 runs for the loss of 2 wickets. Many guests and dignitaries present today for this lovely final day play because we are going to have a mega final after this semi-final match. All the families, all the children of the IMA and also the medicos of all the fields from Nashik. Again a bouncer ball, tried to hook the ball but just upper edge of the bat from Dr. Milind Gangude over the keeper for a boundary. So welcome boundary and scoring to Dr. Milind Gangude and also his team Home Warriors. Scoreboard moves to 42 runs for the loss of 2 wickets. Dr. Milind Gangude is playing a lovely innings for his team. Dr. Varke, right arm over the wicket to Dr. Milind. Lovely ball and equally well square cut towards the boundary for a 4-4-4. Lovely boundary by Dr. Milind Gangude. He is a lovely batsman to watch. Good batting by Dr. Milind Gangude. He is a pediatrician by profession in Sunrise Hospital. Next ball from Dr. Mohan to again a full toss ball, lovely shot towards the mid wicket area, equally well fielded by the by the fielder over there. So no question of a second, just a single to the total. The scoreboard moves to 46 runs for the loss of 2 wickets, and this is the fourth over, last ball in progress of the fourth over. Next batsman is Dr. Next ball, lovely ball towards the square leg boundary for a 4-4-4. Lovely batting by the Home Warriors. So it's 50 up for the Home Warriors team. All the players clapping and bucking up their team for a 50-50. Welcome 50 for the Home Warriors. Nashik Robodogs have to, if they have to win this match, they have to control these very important runs. They are going to be very crucial in the second innings because they have to earn that runs. New bowler from the pavilion end, Dr. Vishal Nikam. Right arm over the wicket to Dr. Milind Gangude. He is in a great form, playing on 33 runs of just 14 balls. Next ball from Dr. Vishal to Milind. Again he is shuffling towards the outside the off stump for a lovely cheeky shot to the boundary again. He is a very clever batsman. He is not using his power, but he is using the pace of the bowler and just placing the ball behind the wickets to get the valuable 4 runs. It's a very good cricketing shot because in very less efforts and minimum wastage of energy, we can get maximum number of runs. Milind moves on to 37 runs, his individual score. Next ball by Dr. Vishal. Short of length ball, very well placed. Very good batting. Very mature batting according to me. Because he knows that if he stays on the crease, he just gets
1 or 2 boundaries in a over, and some singles or doubles. So the average of runs was reached about 10 runs and over, and that's quite handy in this situation over here. Next ball from Dr. Vishal. Right arm around the wicket toward the lefty batsman. Third ball, fifth over. Next ball by Vishal. Oh, lovely comeback by him. A very beautiful good length ball. This is the beauty spot on he has to ball, so the batsman will not be able to capitalize on big shots. Next ball from Vishal. Lovely ball and equally well played towards the boundary area for a boundary. Lovely, lovely, lovely shot. The ball just coming down towards us in the commentator box. So 4 more added toward the total. The scoreboard quickly moves to 60 runs. This is the just 5th over in progress. Dr. Dinesh Thakur, my co-commentator, is just walking away from the commentary box just now. He also played quite well during his team batting. 5th ball from Dr. Vishal. Right arm around the wicket to the lefty batsman. Next ball. What a lovely shot. Lovely square cut towards the mid wicket area. Mid off area for a boundary. Very well played shot. Now the home warriors are really building the pressure on the Nashik Robodogs team. If they are going to play by the same batting average, they are just going to cross the 120 run marks. Next ball from Dr. Vishal. Oh, again tried to hit it hard, just not able to connect it. So at the end of the over, 5th over, at the end of 5 overs, the score is 64 runs for the loss of 2 wickets. Milind Gangude is playing on 38 runs. Next over, the 6th over will be bowled by Dr. First ball by Dr. Milind, very well square cut towards the boundary by Dr. Milind Gangude. Scoreboard moves to 69 runs for the loss of 2 wickets. This was the first ball of Dr. Anturlikar. Dr. Milind Gangude just shuffling backwards, and a very poor piece of fielding by the fielder over there. This is the 6th over in progress. Very good ball. A dot ball after a long time. Scoreboard moves to 68 runs for the loss of 2 wickets. And
Very well played towards the long on boundary just for a single. Dr. Milind Gangurde is playing on his individual score of 43 runs. Very well played, 43 runs. This is the fourth ball of the sixth over, being bowled by Dr. Sushil Antulikar. Right arm round the wicket to a lefty batsman. Next ball. Oh, it was a bouncer ball. Just a single to the total. The scoreboard moves to 70 runs for the loss of 2 wickets. Dr. Milind Gangurde again on strike. He is playing on 43 valuable runs. Very well played, 43 runs from the 19 balls. Scoreboard is 70 runs for the loss of 2 wickets. This is the fifth ball by Dr. Sushil Antulikar. Right arm over the wicket to the informed batsman Dr. Milind Gangurde. Lovely ball, half pitch ball. It was very well played, but equally well caught by the long on fielder. Very good catch down the throat. Comes to an lovely innings by Dr. Milind Gangurde of 43 runs from just 19 balls. Very good catch. It is truly said that the catches win matches. So lovely catch to end the innings of Dr. Milind Gangurde of 43 runs from the 19 balls. So at the end of 6 overs, just 1 ball remaining of the 6th over, the scoreboard moves to 70 runs for the loss of 3 wickets. Very good applaud to Dr. Milind Gangurde by his teammates in the pavilion area for his lovely played 43 runs. Valuable 43 runs for the team in this crucial semi-final. This is the second semi-final being played between Om Warriors and the Nashik Road Robodogs. Last ball of 6th over by Dr. Milind Antulikar to the new batsman Dr. Kapil Palekar, right hand batsman. He is also a very good hitter. Last ball, right arm over the wicket to Dr. Kapil Palekar by Dr. Sushil Antulikar. Last ball, 6th over. Oh, had been there been LBW, definitely Dr. Kapil Palekar was caught just in front of the wickets. So end of the good over, successful over, because he got the valuable wicket of Dr. Milind Gangurde for 43 runs. He was going great guns for the Om Warriors team. Thanks team INA. धन्यवाद डॉक्टर जादव सर। 6 ओवर के समाप्ति हुई है। वाइड का इशारा आया अंपायर का। मिलिंद गांगुर्डे का बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ डॉक्टर सुदर्शन पाटिल खेल रहे 14 रनों पर। कपिल पालेकर आए बल्लेबाजी के लिए, इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन देखते हैं वहां पर फील्डर है या नहीं, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 रन के लिए बाहर। ओम वॉरियर CPL
4 रनों के साथ स्कोर 75 रनों पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। करंट रन रेट 12.16 का। डॉक्टर मोहन वारके अपना दूसरा ओवर लेकर इस बार लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, इसके के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक लगातार का ये दूसरा चौका उनका। टीम का कुल स्कोर 79 रनों पर 79 फॉर 3। डॉक्टर सुदर्शन पाटिल 22 रनों पर पहुंचे हैं। जैसे कि मिलिंद गांगुर्डे सर आउट हुए उसके बाद में पूरा चार्ज हालांकि सुदर्शन ने अपने हाथ में लिया है। एक कृष्ण बाहर गया, दूसरा कृष्ण अंदर है। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन एक टप्पा करने के बाद गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जाती हुई। लॉन्ग ऑन की जैसे कि ओवर पिच गेंद मिली, आ गया या अपने कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया ठीक बॉलर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए बाहर। लगातार तीसरा चौका इस ओवर का उनका। टीम का कुल स्कोर ओम वॉरियर का 83 रनों पर। ऐसा लग रहा था कि शायद मिलिंद गांगुर्डे सर आउट हुए तो शायद रन कम हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो जिस तरह से खेल रहे हैं उस तरह से डॉक्टर सुदर्शन सर इस वक्त पूरा चार्ज अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 रनों पर पहुंचे सुदर्शन पाटिल। डॉक्टर मोहन वारके गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला उन्होंने ऑन साइड में, लेकिन लॉन्ग ऑन से फील्डर आते 1 रन लेने का मौका। बड़े स्ट्रोक नहीं आते तो सिंगल्स के ऊपर काम चलते रहना चाहिए उस हिसाब से। और एक बड़ा शॉट आप लगाते ना, उसके बाद में आप सिंगल्स लेते, ये आपके करीब सही मायनों में आप क्रिकेट खेल रहे हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओम वॉरियर का 84 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। CPL 2023 आप सभी दर्शकों का जिस तरह से आप उत्साह में इस माहौल में आप अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर, ये गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बैक ऊपर जाकर खेलने की कोशिश की, गेंद हालांकि उनके लेग स्टंप को उखाड़ती हुई वहां पर दिखाई दी, और इसी के साथ ये एक और विकेट का पतन होता हुआ। 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर मोहन वारके को मिलने वाली कपिल पालेकर की एक बहुत ही बड़ी विकेट, क्लीन बोल्ड हुए। चौरासी रन 7वां ओवर चल रहा है इस वक्त। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी धूप कभी छाव, कभी जीत कभी हार, ये होते हैं क्रिकेट के अलग अलग अंग आपको देखने को मिलते हैं क्रिकेट में। और जब आप मैदान के ऊपर जाते हैं ना, तो आपकी प्रशंसा करना ये हमारा काम होता है। चाहे आप किसी भी पक्ष के हो, चाहे आप किसी भी टीम के खिलाड़ी हो, लेकिन कमेंटेटर का ये दायित्व होता है कि दोनों को एक साथ लेकर चले। With fall of Kapil Palekar, we have Parimal Sonavne on crease. Mohan Warke right arm over the wicket. A full length ball, a dot ball. Good end to the over. At the end of 7 overs, they scored 84 runs for the loss of 4 wickets. 7वें ओवर के समाप्ति का इशारा किया अंपायर ने। 7 ओवर के समाप्ति पर 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। As we have seen in the first semi-final as well, when the team has scored 100 runs, it was very difficult for the other team to chase down. Now this team is batting on 84, 3 overs to go. What do you want to say over this? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले टीम ने जैसे कि सेमीफाइनल में 100 रनों का लक्ष्य रखा हुआ था, ये टीम शायद 110 रन बनाएगी। यानी 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 84 रन बने हुए उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पर, तो एक बड़ा लक्ष्य जरूर होने के संकेत मिल रहे हैं यहाँ से। Well bowled. A slow off-spin bowling by Ashwin Parkhe. We've seen throughout the day that if you do not give any pace to the ball, it gets difficult for a batsman to play. But erred in the line
Way down the leg side for the another boundary in this over. Dr. Pawar is in an absolute stunning form, batting on 31 runs in 13 balls. Look at that. Way down the leg side, helped the ball towards the boundary to the fine leg region for the first boundary of this over. Dr. Pawar batting on 31 runs in 13 balls. Ashwin Parkhe, he needs to adjust his line. I beg your pardon, Dr. Sudarshan Patil, who scored 31 runs, but a good comeback by Ashwin Parkhe. Another tossed up ball, swept towards the sweeper cover for a single. Fielder has been there, so Ashwin would not mind this. So far only 5 runs in this over. The way that Milind Ganguly has batted earlier, that helped the team to reach the score of 89 runs. The projected score is 116 if they go with this rate. Another tossed up delivery. Superb bowling by Ashwin. Tossing the ball up, enticing the batsman to come out of the crease. With no pace whatsoever, batsman is getting beaten in the pace. 1 ball to go in this over. Another tossed up delivery, another dot ball. What a over! End of this over, given away only 5 runs, 89 runs at the end of 8 overs. Superb bowling by Ashwin Parkhe. Sushil Anturlikar, who is leading the side. अश्विन पारखे जिनके पहले ओवर में केवल 5 रन खर्च किए, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने इस ओवर में किया। 8 ओवर के समाप्ति हुई, 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 89 for 4 after 8 over. So the current run rate 11.13 and required. Projected score with this is 111 runs. And you have a bowling change here. Got Sachin Aher. He's been brought into attack from pavilion end. 2 overs to go. This is a penultimate over. Sachin Aher taking his own time. He likes to place his fielders in the perfect position. Good length ball. No room whatsoever. A sloppy fielding there. That might cost them. Bhandarkar with a throw on, but a poor throw. They stole a second run on a poor throw by Bhandarkar. 91 runs for the loss of 4 wickets. Sachin Aher, a good ball. Another shot of good length ball, and that just went to a 6. What a shot! What a shot by Dr. Sudarshan Patil. He is in excellent form. He is carrying over the innings from Milind Ganguly. Milind Ganguly scored 43 runs in 20 balls, and it seems that Sudarshan Patil has taken the baton over. You see Milind Ganguly running into the field, giving some word of wisdom to the other batsman. But what a batting by Sudarshan Patil. What a shot. मिलिंद गांगुर्डे सर की हमेशा तारीफ करता रहता हूँ। एक अच्छा शॉट लगाया तो उसके लिए पानी लेकर मैदान के ऊपर भागते हुए दिखाई दिए। Another shot of good length ball, but you have a fielder there, so only a single. Sudarshan Patil seems to be struggling with his fitness, limping towards the non-striker's end, only for a single. सुदर्शन पाटिल खेल रहे हैं 41 रनों पर। परिमल सोनोने को अभी तक खाता खोलना बाकी है। 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है। 98 for 4. Another good ball, another dot ball, right in the block hole. And Robotics want this batsman on strike, because Sudarshan Patil on the other end is taking charge. Another good ball, another dot ball. 1 ball to go in this over. 98 for 4, 1 over to go. 1.1 over to go to be precise. Parimal Sonawane batting on 0 runs in 5 balls.
Another dot ball. Good finish to the over, Sachin Ahir. End of 9 overs, 98 runs. सचिन आहिर के दूसरे ओवर के समाप्ति। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया उन्होंने। अब तक 2 ओवर कोई मिडन नहीं, 23 रन 1 विकेट। 9 ओवर के समाप्ति पर 98 रन, 98 for 9 over completed now. So the last over remaining now. Home Warrior team captain win the toss and elected to first bat after 9 over, 98 for 4. डॉक्टर सुदर्शन पाटिल 41 रनों पर खेल रहे हैं। 10वां ओवर, देखते हैं क्या कुछ होता है अंतिम ओवर में। ढेर सारे रन बनने चाहिए, ये अपेक्षा आप करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलग चित्र आपके सामने आ जाता है अंतिम ओवर में। Vishal Nikam is going to bowl the last over. He has conceded 13 runs in first over what he's bowled. Another full length ball played towards cow corner, and that is a boundary. Started off with a boundary. Sudarshan Patil batting superbly. What a start to the last over. इसी के साथ हालांकि ये 100 रन भी पूरे हुए ओम वॉरियर के। 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपेक्षा ये है कि शायद 110 रन या उसके आगे जाकर हालांकि ये रन भी बन सकते हैं। 5 गेंदों का खेल बाकी। Good comeback by the bowler Vishal Nikam. Shot a good length ball, rose to the batsman, did not give any room whatsoever. Went straight to the Sushil Anturlikar, who was keeping behind the stumps. Vishal is much impressive piece of bowling today. Another full length ball, tried to play towards cow corner. Could not connect the ball, gave away only a single. He would not mind this. Robodox, I beg your pardon. इस एक रन के साथ स्कोर 103 रनों पर पहुंचता हुआ ओम वॉरियर का। डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे सर ने 9 चौके लगाए अपने 43 रनों में, यानी आप इन्होंने साबित किया अपने आप को। Another shot of good length delivery played towards point region for a single. That brings Sudarshan Patil, in form Sudarshan Patil on strike. He is batting on 46 runs in 21 balls. He requires only 4 runs for his half century and 2 balls to go in this innings. 2 गेंदें बाकी है और 46 रनों पर खेल रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन पाटिल। क्या सुदर्शन पाटिल अपना 50 रन पूरा कर सकते हैं? आने वाले 2 गेंदों में आपको देखने को मिलेगा। Horizontal slap over the bowler's head for a boundary, and with this boundary Sudarshan Patil has completed his half century. What an inning! Beautiful piece of batting by Sudarshan Patil, playing so extremely well piece of batting today, and he knows that he will be stay there. Run will be counted and counted very speedily and fastly now. Super shot so far. Another full end delivery played over the long onside. A good try. A misfield went up the over of the fielder, and he closed the innings with a 6. That brings the total to 114 runs. If you see that, a full length ball by Vishal played over the long on region, went high up in the air. Fielder came under the ball. Unfortunately, spilled over to the boundary for a 6. डॉक्टर सुदर्शन पाटिल 56 रनों पर नॉट आउट रहे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। आखिरी क्षणों में जिस तरह से शॉट आने चाहिए थे वो हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले उनकी बल्लेबाजी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 56 रनों पर नॉट आउट रहे।
Second semi-final played between Robodogs and Om. Robodogs need 115 runs to win this game. We have seen in the earlier first semi-final as well the target of 101 runs. Veer Maratha, they failed to chase that down. It is going to be interesting to see if Robodogs can chase that down. And you have Sachin Ahir on strike. He just went high up in the air towards long on region and he took a catch. What a fabulous catch. An important wicket here. On a very second ball. Sachin Ahir, known for big hitting. He went high up in the air. Look at that. What a catch. Excellent catch. Superb catch by Sachin Patil. Superb catch. What a start. Om Warriors, they are off to a good start. Got a very important wicket on the second ball. Very second ball of this innings. 115 they are defending. And what a wicket. That brings Sushil Anturlikar on strike. We have Sushil Anturlikar who's leading the side. He also leads Nashik Masters in season cricket as well. A very explosive batsman and a good touch. And on the other hand, we have Bhandarkar, Dr. Bhandarkar, another explosive batsman. So Robodogs, they do have good firepower to chase this down, but it will be very interesting to see if these guys stay till the end. Meanwhile, Parimal Sonawane, a shot of good length ball straight into Milind Ganguly's hands. What a ball. What a ball by Parimal Sonawane. Another good ball, another dot ball. The pressure of not scoring runs is piling up now. जैसे कि विकेट लेने के बाद उत्साह में काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है परिमल सोनो ने। What a shot. Played over mid off region, went high up in the air. The first 6 of this innings came to the bat of Sushil Anturlikar. If you see that closely, a full length ball played towards mid off region, went high up in the air, outside the park. Another full length ball, good comeback. Good comeback by Sachin Patil. That was close. Dr. Bhandarkar was almost got out. End of 1 overs. At the end of first over, they scored 8 runs. पहले ओवर के समाप्ति हुई। पहले ओवर के समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परिमल सोनोने के पहले ओवर में ये रन आते हुए लेकिन एक बहुमूल्य विकेट भी लिया था और जिस तरह से कैचेस लिए जा रहे हैं उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। कैचेस विन मैचेस कहते हैं उस हिसाब से। हालांकि पहले ओवर के समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 115 रनों का विशाल स्कोर। 8 रन 1 विकेट। Yes, surely there was an excellent catch taken by Sachin Patil. He ran from long off to long on to deep mid wicket. Excellent catch. Meanwhile, Sushil Anturlikar wanted to play towards short fine leg region. What a fielding there. It is very heartening to see that people are throwing their bodies. They are giving more than 100% here. This excitement is amazing. What a shot! What a pull shot by Sushil Anturlikar. That went for the boundary.
Oh, that's a 6. Look at that. What a pickup shot by Suchil Anturlikar. He picked it up so fast. Went high up in the air towards deep square leg region for the second 6 for Suchil Anturlikar. I tell you what, as long as Suchil Anturlikar is on crease, this total can chase down. Another heave, went high up in the air towards deep square leg region, and oh, that would have been a wonderful catch. He was running backward, Parimal Sonaune. What an effort. Mind-boggling effort. That just went high up in the air. If you see, Parimal Sonaune was feeling at mid-wicket. He was running backwards and suddenly he turned and almost got hold of the ball. Oh my goodness. What is happening here? Superb effort. That brings Bhandarkar, Mr. Bhandarkar on strike, Aniruddha Bhandarkar. Aniruddha Bhandarkar, also known with his nickname as ABD. But Dr. Pradeep Raut, he is bowling superbly. Another dot ball. He is bowling at the good length area, not giving any room whatsoever to Bhandarkar. Bhandarkar tried to play it on the leg side, but not able to get hold of it. Another full length ball, tried to go over middle of region. Dr. Pradeep coming under the ball, and that's a good catch. Pradeep Raut caught on his own bowling. What a bowling, what a catch. Look at that. It went so high up in the air, almost touched the sky. But what a firm catch by Dr. Pradeep Raut. क्या स्कोर है? दूसरे ओवर के समाप्ति हुई, 2 ओवर के समाप्ति पर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ही गेंदबाजी के ऊपर कैच लेना, मैं तो समझता हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ बात होती है गेंदबाजों के लिए। एक अच्छी फील्डिंग और कॉटन बोल्ड लेना, ये बहुत बड़ी बात। और इस तरह के ऊंचे जाने वाले कैच को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। 2 ओवर के समाप्ति पर 15 रन 7.50 का औसत। देखते हैं आने वाले ओवर्स में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बॉलर को, या वो अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं। परिमल सोना ने अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए, और देखते हैं क्या कुछ होता है। Smart captaincy by Milind Ganguly. He has brought his ace bowler back in again. He wants to finish his game off because he's got Sushil Anturlikar on strike and he is a main batsman here. Meanwhile, full length ball swept towards sweep cover. Kapil Palekar fielding there. A good throw and he could be in trouble, and here he goes. Oh my goodness, that was close. Milind Ganguly could not correct the ball properly. A good throw by Kapil Palekar. Almost got rid of Sushil Anturlikar there. But comfortably home. Sushil Anturlikar batting on 15 runs in 8 balls. Another shot of good and delivery played towards point region for a single. That brings Vishal Nikam on strike. Vishal had a good outing in the last match. He took off late in the last match, but he definitely scored good runs in the death overs. Can he repeat the heroics in this match? There's a slow starter, off the mark with a single towards point region. Parimal Sonaune so far so good, not giving any room whatsoever. Milind Ganguly is very particular about his field. Another shot of good length delivery, tried to play towards square leg region but missed out completely. Parimal Sonaune would not mind this. He would not mind giving away single runs. Leg by the umpires. 2 balls to go in this over. With this kind of a score, the chasing team has to score consistently.
सर इसलिए हालांकि उनको भी एक बड़े बड़े शॉट के तलाश में रहना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रही है। परिमल सोना ने गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्का सा उन्होंने ढकेल लिया था, लेकिन वहां पर मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, लेकिन जब तक वहां पर थ्रो आता तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आपसी तालमेल होना चाहिए। नॉन स्ट्राइकर से यदि कॉलिंग अच्छी होती है तो रनआउट से भी आप बच सकते हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 22 for 2। Early wickets have really damaged the chasing for Om Warriors. They've lost 2 important wickets of Sachin Ahir and Aniruddha Bhandakar. So all the hopes are pinned down to Sushil Anturlikar and Vishal Nikam. सुशील अंतुरलेकर का स्वर परसों हमने देखा कि अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने मैच को जीता था, इसलिए उनके पास बहुत सारे बल्लेबाजी अभी भी बाकी है। जिस तरह से सुशील खेलेंगे वैसे वैसे हालांकि रन बनते जाएंगे। Rightly said that Sushil Anturlikar is a key in this chase. If Sushil Anturlikar stays there till the end, anything can happen. इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर नासिक रोबोटिक्स का 24 रनों पर पहुंचता हुआ। Kunal Thorne is the bowler, right arm over the wicket to Vishal Nikam. Another good length ball went past Milind Ganguly, that might race towards boundary. First boundary of this over and a first boundary to Vishal Nikam. Vishal Nikam would not mind this. A good ball took an outside edge, went past Milind Ganguly. He couldn't help it. These edges, they are so important. These edges need to be taken. If not, then they go to boundaries. मिलिंद गांगुली सर को एज को जज करना चाहिए था थोड़ा सा। A switch hit by Vishal Nikam. What a shot! Second consecutive boundary. What a shot by Vishal. विशाल के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। रिवर्स स्वीप खेलना ये कोई सामान्य खिलाड़ियों का काम नहीं होता सर, इसके लिए पूरे एफर्ट देने पड़ते हैं, इसके लिए पूरी तरह से जज के साथ खेलना पड़ता है। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नासिक रोबोटिक्स का 32 रन्स, 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। Another shot of good length ball, another slap towards point region, but a good field out there. Only a single to Vishal Nikam. Good comeback by Kunal. The way that these two are batting, Robodogs still do have a chance to chase it down. But a good bowling by Kunal Thorne. He has adjusted his line and length as well. He is not giving any room whatsoever now. Restricting batsman only for a single, so he would not mind that. इसी लाइन और लेन के साथ उनको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो अब गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी उनकी, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोई इजाजत तक नहीं दे रहे हैं। Still 2 balls to go in this over. A full and delivery play towards long off region for a single. Sushil Anturlikar wants 2 and he will get on this. This could be close. But what running between the wickets between these two? Sushil Anturlikar lightning quick between the wickets. Completed 2 runs easily. दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल बनता जा रहा है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है और जिस तरह से वो कॉलिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। Still 1 ball to go in this over. Another full toss ball played towards long off region. Will Sushil Anturlikar come for a second again? This time, good throw and restricts batsman to a single. Parimal Sonone, who's fielding at long off region. With the end of 4 overs, Om Warriors, Nashik Robodogs are 37 for the loss of 2 wickets. They require 78 more runs in stipulated 6 overs. Yes, it is another 36 deliveries to come now and 78 run requiring 37 for 2. देखते हैं कि दूसरा सेमीफाइनल जीतकर कौन फाइनल में प्रवेश करता है। आने वाला समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा, आने वाले समय का तगादा करना पड़ेगा।
जिस तरह से आप प्यार में करते रहते हैं उसी तरह से क्रिकेट में भी होता है। A very sunny afternoon here in Mahatma Nagar, Nashik. A slight breeze is passing through the ground. Excellent environment for cricket. We already have one team in finals, CPL Season 1 2023. Sankalpa Supernova beaten the Veer Marathas and they have reached to finals earlier. Now there's a second semi-final being played between OM Warriors and Nashik Robodogs. Nashik Robodogs chasing down 115 runs. Meanwhile, you have Sachin Patil, another amazing bowler. Sachin Patil plays for Evershine and Nashik Masters. Vishal Nikam on strike. इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, बैक पर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कम से कम 1 रन बचाने में कामयाब रहे। अब आपके पास एक ही भाईचारा है कि आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, रन को बचाना पड़ेगा। रन बना तो नहीं सकते लेकिन बचा सकते हैं आप। 1 रन के साथ स्कोर 38। Sachin Patil, left arm round the wicket, a very skiddy bowler. Look at that. Sushil Anturlikar wanted to go over the square leg region, did not come over to the bat. A very cunning bowler, Sachin Patil. सचिन पाटिल बहुत ही ग्यारहना गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद काफी नीचे रही, विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी बिना किसी रन के। फिर एक बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से बैट्समैन को बीट करने में इस बार सफल रहे सचिन पाटिल और क्या ग्यारहना गेंदबाजी, बहुत ही नथी-तुली गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। The problem with Sushil Anturlikar, it seems that he is not reaching towards the ball. He's just playing from where he's standing. He needs to reach towards the ball and hit the ball with the line. He's playing against the spin. इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर खेल दिया था उसको पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नासिक रोबोडॉग्स का। उनचालीस रनों पर 39। सचिन पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से हालांकि काबू में रखा, बैट्समैन को कोई इजाजत नहीं दी उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेलने की, और इसी के साथ एक कंजूस से ओवर की समाप्ति हुई। ज्यादा रन नहीं दिए इस ओवर में उन्होंने, 5वें ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के समाप्ति पर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 39 for 2 after 5 overs. So Vishal Nikam playing on 17 and Sushil Anturlikar playing on 18, whereas the crease now and the 24-run partnership between these two. This is the very most important piece of partnership. Sir, आपको क्या लगता है? Super partnership between these two. These are the two key players, as I said. Meanwhile, we have a top edge went over Milind Ganguly's head for another boundary. Good start to the over for Robodogs. Kunal Thorne is back into attack. As you said that this is an important passage of play here. Vishal Nikam and Sushil Anturlikar, they both are important wickets in this chase. They have an important role to play in this chase. And all the hopes are on Sushil Anturlikar, the man in form. But it seems that Sachin Patil has bowled so superbly in the last match, last over. He gave only 2 runs. पिछले मैच में सुशील अंतुलिकर, दिनेश कार्तिक हुए थे, अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था। जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ 2018 में अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने छक्का लगाया था और बातों बातों में बांग्लादेश की टीम पराभव का सामना करना पड़ा उनको। A full length delivery, what a ball! Sushil Anturlikar wanted to play towards short fine leg region. There's a bit of football there. And there is a race between, not out! Oi! That was close. That was so close. Om Warriors, they are celebrating. They are celebrating.
A lot of confusion back there in the middle. Oh my goodness. One time, keeper and a batsman, they're sprinting towards the wicket. And keeper won the race. Sushil Anturlikar not happy at all. What comedy of errors are these? It was a close run. Look at that. Milind Ganguly and Sushil Anturlikar, they both are sprinting. Meanwhile, another good ball by Kunal Thorne. Superb bowling by Kunal Thorne. Vishal Nikam on strike. Played towards a covers region for a single. Good throw to the bowler. With the fall of Sushil Anturlikar, the Robodogs have a great task at their hand. What do you think that Vishal Nikam will be able to chase it down? A full toss ball played towards point region for a single. Now singles and doubles are not going to help the cause. They will have to score more runs with this ball. End of 6 overs, they have scored 45 runs. 6 ओवर के समाप्ति हुई, 45 रन 3 विकेट पर 6 ओवर के समाप्ति पर 45 for 3। 6 ओवर के समाप्ति हुई, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर नासिक रोबोट्स का कुल स्कोर अभी भी आने वाले 24 गेंदों में यानी 4 ओवर का खेल बाकी है, उसमें अभी भी 70 रनों की उनको जरूरत। देखते हैं क्या वो 70 रन बना पाते हैं या नहीं, आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन सचिन पाटिल के पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी, पूरी तरह से उन्होंने काबू रखा बल्लेबाज को। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछलकर गेंद विकेट कीपर मिलिंद गांगुर्डे सर जिनके हाथ में गेंद चली गई थी। मिलिंद गांगुर्डे सर आज 43 रन बनाकर खेले, 9 चौके लगाए उन्होंने अपने 43 रनों में। इस बार खेल दिया था उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से ज्यादा रन नहीं मिलेगा। जहां तक एक रन का सवाल, एक रन बचाने की कोशिश फील्डर द्वारा जरूर। एक सक्षम कप्तान जब आपके पास होता है ना मिलिंद गांगुर्डे जैसा, तो टीम एक सशक्त बन जाती है। यदि कप्तान इस तरह के एफर्ट देते तो बाकी के खिलाड़ी भी उनका साथ निभाते हैं। इस बार गेंद हालांकि आगे आकर खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से चूकते हुए गेंद जाकर ऑफ स्टंप पर गिरी और इसी के साथ ये और एक विकेट का नुकसान होता हुआ नासिक रोबोट्स को, चौथा विकेट गिरता हुआ उनका। The ball just kept low and Vishal Nikam wanted to play it over square leg region. If you could see, he missed the length completely and got clean bowled. Sachin Patil, who's being as miserly as he could be. Look at that, very slow towards the crease. Went with the arm straight into the stumps. Castle it down. विशाल निकम जैसे एक अच्छे खिलाड़ी को आउट करने में सफलता मिली यहाँ पर सचिन पाटिल को। पिछले मैच में उन्होंने 2 या 3 बार उनको जरूर बीट किया था, आसार तैयार किए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने ये एक अच्छा कारनामा किया अपने गेंदबाजी में। 4 विकेट पर 46 रन, 21 गेंदों पर अभी भी 69 रनों की जरूरत। 69 रन रिक्वायरिंग, 21 डिलीवर्स टू कम नाउ। व्हाट इज विल बी हैपन। देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले समय में। समय का इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। दूसरा सेमीफाइनल
इस बार गेंद मिडल लेग स्टंप पर हल्का सा केवल ढकेल दिया उन्होंने ऑन साइड में। स्वयं बॉलर सचिन पाटिल फील करते, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। इक्का दुक्का रन से काम नहीं चलेगा, बीच बीच में चौके आने चाहिए, एक अच्छा आकार मिलेगा। हर एक गेंद पर चौका या छक्का लगता, ऐसा कहना तो मेरा बिल्कुल नहीं होता। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ एक विकेट मिलता हुआ। सर, जिस तरह से कैच पकड़ा गया उसके बारे में आपको क्या लगता है? Dr. Pradeep Raut is an excellent fielder. We have seen earlier he got an amazing catch on his own bowling, and this time also it went high up in the air. He was standing there at the mid-wicket region, stabled himself, stationed himself under the ball, and took an important catch. So with this wicket, the chase of Robodox seems to be falling down. It's just a mere formality has been left. 25 balls to be bowled. 5 विकेट पर 47 रन, 47 फॉर 5। जैसे कि विकेट मिलता हुआ डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक अच्छा कैच देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं हुई उनके इस कैच लेने में, तारीफ करनी पड़ेगी। सचिन पाटिल, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास उनका। इस बार बाय का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 48 रनों पर 7वें ओवर के समाप्ति हुई। 7 ओवर के समाप्ति पर 48 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आने वाले 18 गेंदों में 67 रनों की जरूरत सर। 18 deliveries to count now, 67 run requiring. If you could see, the Sachin Patil has bowled so miserly. He has given away only 4 runs in his 2 overs and taken 2 important wickets. So that's kind of a bowling that you need. And if you have players like this, your team's supposed to reach to finals. It is going to be an amazing finals between Supernova and Om Warriors. Yes sir, super piece of bowling by Sachin Patil. 2 over no made in 4 run and 2 wicket. What a terrific piece of bowling by सचिन पाटिल। 2 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा सचिन पाटिल का। Meanwhile, we have Pradeep Raut back into attack. A full length ball went high up in the air towards long on. Parimal Sonone coming underneath the ball. That was way high up in the air. Could not judge the ball properly. Another wicket might have went down. कैच हाथ में नहीं आते, कैच को लेना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तब कैच बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट भी लिया था, लेकिन उनके हाथ को लगकर गेम फिसलती उनके हाथ से। प्रयास उनका अच्छा रहा। A good comeback by Pradeep Raut. Almost had a wicket on his first ball. But the way that Om Warrior bowlers have bowled, they bowled so disciplined. They did not earn in the line much, so that resulted into number of wickets. Look at that. No room whatsoever. Only a single. And singles and doubles are not going to win the game for the Robodogs. इस वक्त अच्छे गेंदबाजी के सामने केवल इक्का दुक्का रन बनता जा रहा है। बीच बीच में चौके आने चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना नहीं कि आप जोखिम उठाकर चौका लगाए, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं था। लेकिन आप बड़ा गैप ढूंढकर आप चौका लगा सकते हैं। That needs a lot of skills when you want to score runs of a good bowling. Now Pradeep Raut, he is bowling in right areas. If you see that he is bowling right outside the off stumps, not giving any room, so it gets difficult for a batsman. In tennis cricket, batsman loves to go towards offside and wants to hit on leg side. Look at that. So he's bowling full towards stumps, which enables batsman to play straight. एक अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं इस वक्त प्रदीप राउत।
right into the block hole. Superb bowling. It is going to be an interesting match between Supernova and Om Warriors. They both have balanced sides. Now, since the 8 overs have been gone, the Robodogs are struggling at 51 for 5. 8 ओवर के समाप्ति पर 51 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 51 for 5 after 8 over. So the only 2 over to left now. Sudarshan Patil has come into attack from pavilion end. Sudarshan Patil, who has scored half century in a semi-final game today, in this match, in the first innings, Sudarshan Patil, he scored a half century. इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने ऑन साइड में, देखते हैं कॉर्नर के ऊपर फील किया जाता, 1 रन पूरा किया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 11 गेंदों में इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्का सा खेला उन्होंने, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाते हैं। A mere formality has been left to complete this match. It seems that Robodogs have almost got out of the game now. They need 62 more runs in 10 balls to be bowled. इस बार खेल लिया था उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर डॉक्टर प्रदीप राउट फील्ड करते, लेकिन तब तक केवल 1 रन लेने का मौका, इक्का दुक्का रन से काम नहीं चलेगा। बड़ा स्कोर आपको चेस करना है तो आपको बड़े स्ट्रोक भी लेने पड़ेंगे, शायद कभी कभी तो जोखिम उठाकर लेने पड़ते हैं, उसमें विकेट गिरने के आसार भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको रिस्क लेने पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। Only a miracle can save Robodogs from here on. 61 runs required in 9 balls. 9 गेंदें बाकी, 61 रनों की अभी भी जरूरत वहां पर मैच जीतने के लिए, लेकिन लक्ष्य बहुत दूर है अभी भी। जिस तरह से डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे अक्सर एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं और फिर बाद में अपने गेंदबाजों के हाथ में गेंद सौंप देते हैं कि आप अपना काम करो। 54 for 5 in 8.4 overs, 2 balls to go in this over. That just went high up in the air towards point region, only for a single. $55 for 5. इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, देखते हैं ऑन साइड में फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। फील्डिंग काफी दूर दूर जमाई जा रही है, जैसे कि ओवर के भी समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। 90 ओवर के समाप्ति, नासिक रोबोडॉग्स का कुल स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब केवल अंतिम 1 ओवर का खेल बाकी है और उसमें 59 रनों की जरूरत। 59 रन रिक्वायरिंग ओनली 6 डिलीवरीज टू कम नाउ। Last over of this match. 5 more balls to be bowled. Another good dot ball. डॉक्टर मयूर पंजाबी आए हैं गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर में। जब आप अंतिम ओवर लेकर आते हैं तो आपका दिल काफी मजबूत होना चाहिए। अंतिम ओवर में कुछ भी हो सकता है, आप सभी दर्शक जानते हैं, आपके क्रिकेट के काफी भगवान हैं। The Om Warrior side seems to be pretty much relaxed now since they have reached to the first ever final of CPL 2013 season 1. Parimal Sonone, who's fielding at short fine leg region. Moir Punjabi. And that just went high up in the air. Sachin Patil wanted to come underneath. That was way too far from him. That's way too far for Sachin Patil to come and grab the ball. So last ball of this innings,
and a match. And with this legal ball, Home Warriors have advanced to the finals. और इसी के साथ ये ओम वॉरियर ने फाइनल में प्रवेश किया। ये देखिए खुशियों की लहर सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। नासिक रेबोडोस केवल 61 रन बना पाए 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में। और इसी के साथ ये डॉक्टर अभिनव गाड़े 5 रन पर और प्रणीत सोनो ने केवल 9 रन बनाए, 14 रनों की साझेदारी। और इसी के साथ ये सुदर्शन पाटिल हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने आज। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कन्सल्टंट प्रीमियर लीगचा आजचा 3रा दिवस आणि ह्या टुर्नामेंटची सांगता या अंतिम सामन्याने होणार आहे। अंतिम सामना हा संकल्प सुपरनोवा वर्सेस ओम वॉरियर्स होणार आहे। संकल्प सुपरनोवाचे संघ मालक आणि कर्णधार डॉक्टर भूषण नेमाडे आपल्यामध्ये आहेत। संकल्प हॉस्पिटल आहे त्यांचं नाशिकमध्ये। आणि ओम वॉरियर संघाचे संघ मालक डॉक्टर मयूर पंजाबी, त्यांचं पिंपळगाव बसवंत इथे ओम हॉस्पिटल आहे। तर असा हा रंगतदार सामना आपल्याला आता बघायला मिळणार आहे। आणि या रंगतदार सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी आणि आपल्या पूर्ण टुर्नामेंटला सदिच्छा भेट देण्यासाठी मराठा विद्या प्रसारक समाज वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट नितीनजी ठाकरे आपल्यामध्ये उपस्थित झाले आहेत। मी सर्वांना विनंती करतो टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे। पूर्ण या टुर्नामेंटमध्ये आपण गेल्या महिनाभरापासून अत्यंत जीव ओतून काम करत आहोत। आमचे समिती प्रमुख डॉक्टर अनिरुद्ध भांडारकर सर असतील, को चेअरमन डॉक्टर भूषण नेमाडे, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मिलिंदजी गांगुर्डे आणि माझे सगळे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मेंबर्स
हे गेल्या 1 महिन्यापासून सतत अविरत अशी मेहनत करत आहे आणि त्या मेहनतीचं फळ आज आपल्यासमोर दिसतंय. नाशिक शहरातील आणि नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास 100 ते 125 कन्सल्टंट आणि सुपर कन्सल्टंट ही टुर्नामेंट पहिल्यांदाच उत्तर महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारची टुर्नामेंट खेळत आहे. आणि क्रिकेटचा अभ्यासाच्या दिवसामध्ये राहून गेलेलं आपलं क्रिकेट आज पुन्हा एकदा ग्राउंडवरती येऊन त्यांनी पुन्हा एकदा ते आजमावलेलं आहे. आणि कधी डाईव्ह मारून कॅच घेतील, कधी मस्त लेग कटर टाकून फलंदाजाला बाद करतील, अशा प्रकारचे विविध गोष्टी आज आपल्याला दिसलेल्या आहेत. आणि मी मनापासून नितीनजी ठाकरे सरांचं स्वागत करतो की त्यांनी वेळात वेळ काढून आज या आपल्या टुर्नामेंटला सदिच्छा भेट दिली. सरांना अर्जंटली मालेगावला जायचं होतं, पण तरी त्यांनी आपल्यासाठी वेळ काढला, अवधी काढला. मी त्यांचं मनापासून आभार मानतो आणि आमच्या समितीच्या वतीने स्वागत करतो. मी भांडारकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे नितीन ठाकरे सर, उंडी च्या कार्यक्रमाचे प्रमुख कारण त्यांना मालेगावला त्यांचा आज नागरिक सत्कार, मी त्यांच्या यानंतर आपण सरांचा सत्कार करणार आहोत. तत्पूर्वी मला असं वाटतं की आपण एक नाणेफेक सरांच्या हस्ते करून घेऊ आणि त्याच्यानंतर सरांचा सत्कार करूया. तर मी नाणेफेकीसाठी संकल्प सुपर नावाचे कर्णधार आणि ओम वॉरियर्सचे कर्णधार डॉक्टर परिमल सोनवणे आणि भूषण नेमाडे सरांना विनंती करतो. आहे सर. सर, दिस इज हेड, दिस इज टेल. कोण बोलतोय? विल बॅट. हेड्स आला आहे. संकल्प सुपर टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे. सर, खूप 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 धन्यवाद सर. येस सर. त्यानंतर मी आमचे पॅट्रॉन डॉक्टर अनिरुद्ध भंडारकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी ठाकरे साहेबांचा सत्कार करायचा आहे. आनंद राहुल इकडे थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. यानंतर मी ठाकरे सरांना विनंती करतोय की त्यांनी या उपक्रमाबद्दल थोडंसं 2 शब्दात आमचं कौतुक करावं. डॉक्टरांचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. कारण आपल्या बिझी शेड्यूलमधून आपण उत्तर महाराष्ट्रातल्या सर्व डॉक्टर्स करता इथे जो काही क्रिकेटच्या स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे त्याच्याबद्दल सर्व आयोजकांना मनापासून धन्यवाद. हे स्पर्धेचं पहिलंच वर्ष आहे आणि बऱ्याच वेळा आपण नवनवीन उपक्रम सुरू करतो पण ते पुरे कंटिन्यू होत नाही. दरवर्षी हा उपक्रम आपण चालू ठेवावा अशी आपल्याला या निमित्तानं विनंती करतो. खरोखरीच आपल्या बिझी शेड्यूलमधून डॉक्टर लोक हे सगळ्यांचं आरोग्य सांभाळण्याकरता प्रयत्न करतात परंतु स्वतःच्या आरोग्याकडे नेहमी दुर्लक्ष करतात असा अनुभव आहे. त्यामुळं हा जो काही संकल्प आपण इथं केला आहे त्याच्याबद्दल मी आपल्या मनापासून अभिनंदन करतो. फिजिकल फिटनेस हा नेहमीच महत्त्वाचा असतो आणि डॉक्टर लोकांना तो जास्त गरजेचा असतो. त्यामुळं फिजिकली आपण जर फिट असले तरच पेशंट्सवर सुद्धा जास्तीत जास्त चांगले उपचार आपल्याला करता येऊ शकतात आणि जास्त वेळ आपण आपल्या प्रोफेशन करता देऊ शकतो. या निमित्तानं आपण सगळ्यांना मी विनंती करेन की फक्त क्रिकेटच्या स्पर्धा आहे म्हणून आपण आज ग्राउंडवर आलात पण रोज आपण थोडा वेळ आपल्या या स्वतःच्या तब्येतीकरता द्यावा अशी विनंती करतो. मी स्वतः रोज टेनिस आणि स्विमिंगला असतो त्याच्यामुळे मला स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये मला इंटरेस्ट असतोच
आणि प्रत्येकजण आपल्या स्वतःकरता वेळ काढू शकतो. वेळ नसतो असं आपण जे म्हणतो ती आपण स्वतःचीच फसवणूक करत असतो. आणि आमच्या टेनिस निवेकला बऱ्याच डॉक्टर्स पण येत असतात, त्यामुळे ते तो वेळ काढतात. तसं आपण प्रत्येकजण इथं वेळ काढू शकतो, तो वेळ आपण काढावा. पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या निमित्तानं सगळ्या डॉक्टर्सला मी शुभेच्छा देतो. आणि आता फायनल मॅच ओम आणि संकल्प या 2 टीममध्ये आहे. दोन्ही टीमला मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि चांगल्या खेळाचं प्रदर्शन आपण कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. या ना. अर्धे खाली बसा, इकडचे पण अर्धे खाली. विशाल या ना. हां ते आहे. चलो चलो या अरे राहुल ये या कम ऑन चलो सगळे या. जरा अंधार लवकर पडतोय बरं का. आज जरा क्लाउडी क्लायमेट. आज थोडं पाऊस पडला. चलो कॉन्ग्रॅट्स सर. येस सर. चला गुड इव्हनिंग. काय म्हणता? हा येस येस आपली भेट झाली. भूषण नेमाडे माझ्यासोबत आहेत कर्णधार आणि सामना आहे. काय सांगतात? पोचले आहे. थँक्यू सर. तुम्ही एक संघर्ष केलेला आहे. तुम्ही पहिला दिवस तुमचा नव्हता, दुसरा दिवस थोडासा मायनस असा होता, तिसऱ्या दिवशी आणि सुदैवाने तुमच्या रन रेट चांगला असल्यामुळे तुम्ही उपांत्य फेरी गाठली होती. परंतु तुम्ही उपांत्य फेरीचा जो सामना ज्या पद्धतीने खेळला आणि ज्या पद्धतीने जिंकला खूप कौतुकास्पद आहे. तर मला वाटतं की फायनलला तुम्ही या गोष्टी पुन्हा एकदा दाखवून ही फायनल जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहात. काय नवीन बदल करणार आहे? नाही, टीममध्ये काहीच बदल नाही. जी सेमीफायनलची तीच आम्ही खेळवणार आहोत आणि जसं सांगितलं की सेमीफायनलला आम्ही आमच्या गेमचा दर्जा खूप उंचावला होता आणि आम्ही तेच कंटिन्यू ठेवणार. आणि जसं मी सांगितलं त्यांच्यावर प्रेशर आहे सायकोलॉजिकल. आम्ही त्यांना ऑलरेडी लीग मॅचमध्ये हरवलेलं आहे. धन्यवाद नेमाडे सर. थँक्यू आणि बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. नाही अंतिम सामन्यात ओम वॉरियर्सने ज्या थाटामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी या पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे, या ओम वॉरियर्स संघाचे कर्णधार डॉक्टर परिमल सोनवणे आपल्या सोबत आहेत. आणि काय सांगाल, अंतिम फेरीत तुम्ही पोहोचले याबद्दल काय सांगाल? तुमच्या मनामध्ये काय चालू आहे? तुमच्या मनामध्ये असं चाललंय की क्रिकेट हा गेम हा एकट्या माणसाचा नसून पूर्ण संघाचा असतो आणि या संघाने पूर्ण प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे बॅटिंग, बॉलिंग, फिल्डिंग या तिन्ही क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कारागिरी केली. आणि मिलिंद गांगुर्डे जे एक्सपिरियन्स प्लेयर आम्हाला लाभले, त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही उत्कृष्ट खेळी करू शकलो. त्याबद्दल मी माझ्या पूर्ण संघाचं अभिनंदन करतो आणि इथून पुढे असाच आम्ही प्रदर्शन करू आणि उत्कृष्ट क्रिकेट खेळू याची ग्वाही देतो.
डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे एकदम नावाजलेले फलंदाज आहेत. आय-एम-एचे वर्षानुवर्षापासून त्यांनी आय-एम-एच्या कितीतरी मॅचेस आपल्याला जिंकून दिलेल्या आहेत आणि असे अनुभवी आणि नावाजलेले फलंदाज, यष्टिरक्षक, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आज तुमच्या सोबत आहे आणि फायनलच्या आधीच्या दोन्ही इनिंगमध्ये त्यांनी जबरदस्त अशी फलंदाजी केलेली आहे आणि फायनलसाठी अंतिम फेरीसाठी ते सुद्धा आता सिद्ध झालेले आहेत. पण मला असं वाटतं की तुमची जे गोलंदाजी आहे ती गोलंदाजी वैविध्यपूर्ण आहे आणि सगळ्यात चांगला गोलंदाजीचा मारा तुमच्याकडे आज आहे. तुमच्या गोलंदाजांबद्दल तुम्ही काय सांगाल? गोलंदाजांबद्दल मी असं सांगू इच्छितो की अ, आम्ही फास्ट बॉलर्स, पेसर्स, कटर्स आणि लेग स्पिनर या कॉम्बिनेशनने बॉलिंग करतो आणि याच्या व्यतिरिक्त आमच्याकडे 8 टोटल बॉलर्स आहेत. आम्ही सध्या 6 बॉलर्स वापरतोय. पण बॉलर्स त्यांची लाईन लेंथ जी आहे ती एकदम काम माइंडने कंटिन्यू करतायत आणि त्यांची अशीच कामगिरी करावी अशी मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा करतो. विशेष करून सचिन पाटील यांची जी गोलंदाजी आहे ती अतिशय अलौकिक. दोन्ही बाजूनी ते चेंडू फिरवतात आणि बॅट्समनला त्याचा जराही अंदाज येत नाही. ते मधल्या ओव्हर्समध्ये जेव्हा बॅट्समनला जास्त रन करायचे असतात तेव्हाच ते धावा रोखण्यामध्ये आणि विकेट्स घेण्यामध्येही नावाजलेले आहेत. कुणाल तोरणे नवीन टॅलेंट जे आपल्यामध्ये आलं आहे, ही इज होल्डिंग द पर्पल कॅप. अजून प्रदीप राऊत इज अन एक्सलंट ऑलराऊंडर हू हॅज कम अप ॲज अन एक्सेप्शनल फिल्डर, बॅटर, बॉलर ॲज वेल ॲज फिल्डर. फाइंड म्हणता येईल. येस, सोनं निघालं आहे. आणि अजून सुदर्शन पाटील याने सेमीफायनलमध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला. सुंदर खेळी केली. त्याचे दोन्ही गुडघे अतिशय दुखावलेले आहेत. पेन किलरवरती तो कार्यरत आहे. तरीसुद्धा त्याने सुंदर उत्कृष्ट केली. त्याचे अभिनंदन. अजून एक सांगू इच्छितो माझ्या संघाबद्दल. विक्रम फडोळ जे आहेत त्यांना आजच्या सामन्यामध्ये हाताला फ्रॅक्चर झालं. तरीसुद्धा त्यांनी आज स्वतःहून सामन्यामध्ये येऊन एक उत्कृष्ट झेल त्याचंही मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद परिमल आणि बेस्ट ऑफ लक फॉर द फायनल्स. थँक्यू.
Parimal Sonavne, right arm over the wicket, way outside the off stump, play towards the covers region, good field there, only for a single. These two teams have come off an excellent performance in semi-finals. They both have scored more than 100 runs in the semi-finals and won the game comfortably. It is going to be an interesting tussle between these two. They both do have good firepower in their batting lineup. 8 overs match, 8 overs aside. Parimal Sonavne, right arm round the wicket. Went towards long on for a single. Milind Ganguly is being very proactive with his fielders, setting his field low. Devendra Kulkarni on strike. Had an excellent inning so far. Excellent season so far for Devendra. Well played towards covers for another single. A very cautious start for Supernova. Parimal Sonavne was excellent in the last game. Bowled superbly in the semi-final against Nashik Robodogs. A big heave. Wanted to play over mid-wicket region. Went past the batsman into the gloves. Parimal Sonavne. Three balls, 3 runs. Another ball played towards covers region. Pradeep Raut is a fielder. Good stop there. A slight confusion in the middle. Excellent fielding by Pradeep Raut. We have seen him taking 2 wonderful catches in the previous game. Excellent bowler and a fielder, Pradeep Raut. Definitely saved 3 runs for his team. 4 runs for his team. Well bowled. Tried to play cheekily. Tried to steer it towards third man. Beaten by the pace. And that is end of the over. End of the first over. Supernova, they have scored 3 runs. So very cautious start for Supernova. Now we have Dr. Pradeep Raut, who's going to bowl the second over of this final. Consultants Premier League 2023 Season 1 is the first ever Premier League for the consultants in Nashik district. It has been held here for the past 3 days. Today is the final day, and a final has been played between Om Warriors and Sankalpa Supernova. Dr. Pradeep Raut. A good length ball. Played towards mid-wicket region. Player coming underneath. A good attempt there. Almost got the ball. Kapil Palekar. An excellent fielder. Almost got the ball. It's difficult when you're running backwards. But he did give 100% to it. 2 runs for Devendra Kulkarni. A full toss ball. Played over square leg for the first boundary of the final CPL 2023. Came off the bat of Devendra Kulkarni. Dr. Pradeep Raut earned in the line. Went full. And Devendra Kulkarni capitalized on the full toss. Played over square leg region for the first boundary of this final, played between Om Warriors and Sankalpa Supernova. Devendra Kulkarni has scored 40 plus runs in the last game. He is in a good nick. He would like to make maximum out of his excellent form here. Pradeep Raut, who's been sensational in the last match. As I said, Pradeep Raut has been sensational in the last match. He is so disciplined. Got outside edge of Devendra Kulkarni, straight into the Milind Ganguly's gloves. First blood has been drawn by Om Warriors in the form of Devendra Kulkarni. An informed batsman. Look at that. A touchful ball played
tried to play it through point region or cover region, took an outside edge straight into Milind Ganguly's hand. With the fall of Devendra Kulkarni, we have Bhushan Nemade. पहला विकेट गिर जाने के बाद भूषण नेमाड़े मैदान के ऊपर जा रहे हैं। संकल्प सुपरनोवाज 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। पहले टॉस जीता संकल्प सुपरनोवाज के कप्तान ने, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फाइनल मुकाबला दोनों टीम के बीच में, ओम वॉरियर और संकल्प सुपरनोवाज के बीच में। एक अच्छा कैच डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे द्वारा देखने को मिला। डॉक्टर प्रदीप राउत तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा 4 रन का आता हुआ। हालांकि आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं तो इसी तरह के स्ट्रोक आने चाहिए। भूषण नेमाड़े सर जिस तरह से खेलते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ये बताती कि वो आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हैं। डॉक्टर प्रदीप फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद, जोरदार अपील अंपायर के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन नकारा अंपायर ने। अक्सर बॉलर का यही काम होता है कि अंपायर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाले, लेकिन अंपायर काफी सशक्त है वहां पर नासिक क्रिकेट एसोसिएशन के, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने ऑन साइड में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका डॉक्टर भूषण नेमाड़े को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Excellent running between the wickets. Bhushan Nemade, lightning quick, as we know. Stole the run in the hands of Parimal Sonone there. Now we have Parimal Sonone bringing the 3rd over of this match. Bhushan Nemade on strike. A very experienced campaigner. इस बार जैसे कि गेंद मिडल और लेग स्टंप पर खेल लिया था उसको डीप खेले के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात थे, 1 रन लेने में कामयाब रहे हैं वहां पर भूषण नेमाड़े। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय वहां पर संकल्प सुपरनोवास का। फाइनल मुकाबले में ओम वॉरियर के कप्तान डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे जी हालांकि फील्डिंग सजा रहे हैं। कीपिंग का एक अच्छा प्रदर्शन उनके पास से देखने को मिला अब तक। इस बार खेल लिया था उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन 1 रन से नहीं रुक पाते हैं। 1-1 रन हार जीत के बीच में फैसला भी तय कर सकते हैं। आपको बताने की वैसी जरूरत है नहीं, लेकिन बातों बातों में इशारा होते रहना चाहिए। टीम का कुल स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। A shot of good length ball, tried to play towards offside, went past the bowler. Bhushan Nemade wanted to hit it through the offside. He was trying too hard to cut the ball. Ended up taking a single that brings Dr. Pawar on strike. Way outside the off stump, out of the reach of the batsman. Parimal Sonone, an excellent bowler, a very wise bowler. He's trying to keep the ball away from the reach of a batsman. Seems that he has studied really well from the last match, because Dr. Pawar has scored most of his runs on a leg side. Look at that. He is keeping the ball way outside the off stump so that Dr. Pawar could not fetch the ball from outside off to the leg side. Super bowling. 2.5 overs, 17 runs for the loss of 1 wicket. Dr. Pawar batting on 2 in 7 balls. And that's a huge shot. What an effort. What an effort. That was almost a 6. Kunal Torne. Kunal Torne. What an excellent fielding. Look at that.
He just went down the track that went high up in the air. And it's a 6. It's a 6. Great shot. Great shot and an excellent effort by Kunal Thorne. Superb fielding. Now, at the end of 3 overs, Supernova have scored 23 runs for the loss of 1 wicket, and we have Sachin Patil, who's going to bowl from Pavilion End. He's had a wonderful last match. He bowled 2 overs, gave away only 4 runs, and got important 2 wickets. Now, it's going to be an amazing tussle between Bhushan Nemade and Sachin Patil. Left arm round the wicket. A shot of good length ball played towards point region. Fielder in pursuit. Bhushan Nemade, lightning quick in field. Took 2 runs comfortably. Bhushan Nemade would not mind this. Singles and doubles are always welcome. He's batting on 6 runs in 5 balls. Sachin Patil is being very stingy and very miserly. Look at that. A tossed up delivery went with the arm though. Straight to Kapil Palekar and a missed field there. A very sloppy fielding. But a good stop at the end. There's been a discussion and deliberation by their umpires and a boundary has been given. (33) 27 runs so far. (29 runs in 3.2 overs. Another cut shot played towards point region for a single. So far, so good. Bhushan Nemade scored 7 runs in first 3 balls of Sachin Patil's over. He's batting on 13 runs in 8 balls. Tell you what, this is going to be an interesting match here. Both the teams, they have played an excellent game throughout the season. And that's bowled right into the block hole. Sachin Patil. Change of line and change of length for him. He just went straight with the arm. A quicker delivery. Straight into the pads. Clean bowled. With the fall of Dr. Pawar, we have Dr. Dinesh Thakur in the middle. So Sachin Patil, extremely well piece of bowling today. Sankalp Supernovas fell off second wicket. टीम का कुल स्कोर 30 रन 2 विकेट पर. तीन दशमलव 4 ओवर में 2 विकेट पर 30 रन. संकल्प सुपरनोवाज, टीम कैप्टन विंडी टॉसन इलेक्टेड टू फर्स्ट बैट नाउ. 34-2. सचिन पाटिल बहुत ही ग्यारहना गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त. उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. पिछले मैच में भी उनके वजह से हालांकि टीम जीती. अब इस बार अच्छी गेंदबाजी उनकी. As I about to say that Dinesh Thakur is known for big hitting, and he wanted to go over deep mid wicket, but straight in the hands of Kapil Palekar. 2 consecutive wickets for Sachin Patil. Look at that. Dinesh Thakur tried to go over mid wicket region. Kapil Palekar stationed himself very well. First fumble, but on the second attempt took an excellent catch. Very important wicket for Om Warriors. So 3 wickets down and 30 runs for the loss of 3 wickets in 3.5 overs. 1 ball to go. 1 ball, still 1 ball to go. The final has been played between Om Warriors and
Sankalp Supernova, Bhushan Nemade, it's still in the middle. Supernova's expectations are pinned on Bhushan Nemade's shoulder. Sachin Patil, excellent as ever. Still one ball to go. A shot of good length ball, played towards fine leg for another boundary to close this over. Supernova would not mind this. At the end of 4 overs, they are at 34 for the loss of 3 wickets. They need much more of these. This should take some pressure off Bhushan Nemade's shoulder. He's the lone warrior there, standing on one side. By the end of Sachin Patil's over, a successful over, gave away 11 runs but took 2 important wickets of Dr. Pawar and Dr. Dinesh Thakur. And that brings back Dr. Pradeep Raut. Dr. Pradeep Raut, right arm over the wicket to Bhushan Nemade from pavilion end. A full length ball went past the batsman. We are halfway through. We are halfway through of this first innings. Excellent start to the over for Pradeep Raut. A full length ball played towards long on region. Sachin Patil is going to field the ball, and there's a fumble down there. Taking advantage of a fumble, Bhushan Nemade, so quick in between the wickets, got 2 runs. Bhushan Nemade would have to be very cautious about his approach now because he has already lost two of his important partners there. There's a lot of expectations on his shoulders. Another good length delivery. Seems like Bhushan Nemade wanted to play it over cow corner. He tried to play it with a horizontal bat. Could not connect the ball properly. Pradeep Raut, he has been so disciplined till the semi-finals. We have seen him bowling so quick and outside the off stump, not giving any room whatsoever to the batsman. He is doing his tricks. Another full length delivery, took an outside edge, went over the keeper's head for another fortunate boundary for Bhushan Nemade. Fortune favors the brave. Bhushan Nemade is trying to go over the covers region, got an outside edge, went over keeper's head. Keeper was helpless. All he could do is see the ball sailing over his head for boundary. So that's a much needed boundary in this over for Bhushan Nemade. Hard luck for Pradeep Raut. He has excellent set of skills. Another good ball. Another blind heave. It seems that Bhushan Nemade is getting impatient. I think the pressure of final has been so much on his shoulders that he wants to score on every single ball. 41 runs so far. Another full length ball played straight toward bowler's head. Sachin Patil in pursuit, but in vain. What a shot! Straight like an arrow. Went like a bullet. Bhushan Nemade. Look at that. Full length delivery played straight over the bowler's head. Sachin Patil was in pursuit, but in vain. Excellent shot by Bhushan Nemade. Stand and deliver. Still one ball to go in this over. Another full length ball. Wanted to repeat the heroics what he did in the previous ball. Missed out completely. End of the overs. End of 5 overs. Supernova batting at 45 runs. इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति हुई. 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर संकल्प सुपरनोवाज टीम कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 5 ओवर की समाप्ति हुई. 3 विकेट पर 45 रन. भूषण नेमाड़े बहुत ही एहतियात वर्ग के साथ खेल रहे हैं. 19 रनों पर खेल रहे. 13 गेंदों का सामना किया. 3 चौके लगाए अब तक. और जितेंद्र देशमुख 4 रनों पर खेल रहे हैं. एक चौका शामिल उनका.
5 ओवर के समाप्ति पर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं सचिन पाटिल को फिर एक बार गेंदबाजी के लिए लाया। पिछले ओवर में उन्होंने 2 विकेट अर्जित किए थे। Dr. Milind Ganguly, a superb captain, bring back Sachin Patil again. He went high up in the air. Same result, same shot. Kapil Palekar, same player. What an excellent catch by Kapil Palekar. Another wicket fell down. It seems that Supernova, they are crumbling like deck of cards. Look at that. A tossed up delivery outside the off stump, wanted to go over the deep mid wicket region. Kapil Palekar stationed there. Went high up in the air. A comfortable catch for Kapil Palekar. Third wicket for Sachin Patil. Excellent bowling. Now that should add into a misery of Supernova. Sachin Patil, 3 wickets so far for him. So much variation in his bowling. Now this time, arm ball. Played towards long off. Bhushan Nimade wants 2. And he will get 2. A comfortable 2 for Bhushan Nimade. So fast between the wickets. But we have to praise Sachin Patil for his bowling. Another arm ball played towards long on. Pradeep Raut is fielding there. Bhushan Nimade will go on to. He has taken a risk on his throw. 2 runs again. What running between the wickets. Bhushan Nimade so quick. He is taking runs on the throw. Excellent cricketer, Bhushan Nimade. Even at this age, he is so fast. 5.3, 49 runs for the loss of 4 wickets. Bhushan Nimade batting on 19. Prashant batting on 4. Sachin Patil, 1.3 overs, 15 runs. And he has grabbed 3 wickets so far. 3 balls to go. He's got 3 balls in his kitty. Going to a lot of drama now. Another arm ball. Did not give any room to a batsman. As I said, Sachin Patil, an amazing, amazing bowler. A shot of good length ball played over covers region. They might go for 2. Kunal Thorne is fielding at long off region. But comfortable 2 for Prashant. 1 ball to go in this over. A tossed up delivery, almost a wicket, and that it is. 4th wicket for Sachin Patil. Good stumping by Milind Ganguly. Super quick stumping by Milind Ganguly. Tossed up delivery outside the off stump. Sachin Patil, what a bowler. Completed his 2 overs quota, got 4 wickets. Look at that. A tossed up delivery, enticing the batsman coming outside the off stump. He steps down, Milind Ganguly did the rest. At the end of 6 overs, Supernova is at 51 runs for the loss of 5 wickets and only 2 overs to go. And they have all the hopes pinned down on Bhushan Nimade, who is going to be on strike. It seems that Kunal Thorne is going to bowl the next over. Bhushan Nimade, he's got 12 balls to play. Can he take his team to a respectable total? 75 runs is the par score here at 8 overs match. Can he reach to that total? He's got 12 balls left. Kunal Thorne.
Full length ball outside the off stump, called wide by the umpire. If you see here, bowlers are trying to be away from the reach of Bhushan Nemade's bat. A full length ball hit over the bowler's head for another boundary. Bhushan Nemade on song. A full length ball. Stand and deliver right over the bowler's head. One bounce outside the park. A superb shot by Bhushan Nemade. Excellent, excellent batting. Excellent start to the over, Bhushan Nemade. Whoa, that was swept towards deep square leg region, and that's a 6. What a batting! Bhushan Nemade, you beauty! Made some room, played high up in the air over square leg for a humongous 6. भूषण नेबाड़े सर अच्छी बल्लेबाजी का प्रयास कर रहे हैं। 62 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। कुणाल तोर ने गेंदबाजी के लिए तैयार इस ओवर में तीसरी गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद और बाहर जाते हुए वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त रनों में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर 63 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। Seems the pressure is on the bowler now. He's trying to get away from the batsman. In the process, he bowled another wide in this over. Full length ball played over the bowler's head. Pradeep Raut coming underneath, and that is the end of Bhushan Nemade. Fell short of the boundary. Bhushan Nemade. Kunal Torne. A slow delivery, full length ball. Bhushan Nemade wanted to go over the bowler's head, went high up in the air. Pradeep Raut, an excellent fielder, fell short of the boundary. Well played, Bhushan Nemade. 29 runs in 16 balls. With his wicket, Supernovas, they've scored 63 runs and still 9 balls to go. जिस तरह से एक अच्छा शॉट देखने को मिला था इसके पहले भूषण नेमाड़े के बल्ले से, लेकिन उन्होंने दूसरा शॉट खेलने की जरूर कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए डॉक्टर प्रदीप राउत बहुत अच्छा कैच लेने में सफल रहे। कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई और सीधी चली गई थी। विकेट कीपर डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे सर इनके ग्लोव में चली गई थी। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया है अब तक मिलिंद गांगुर्डे सर ने विकेट कीपर के विकेट के पीछे। कुणाल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी। लगातार 2 गेंदों में कोई रन नहीं, डॉट गेंदबाजी। आखिरकार मिलिंद सर तो यही चाहते हैं कि अपने जो गेंदबाज होते हैं ना वो काफी डॉट गेंदबाजी करे, कोई रन न दे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। इस ओवर में लगातार 2 गेंद डॉट डालने के बाद कुणाल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट करने की कोशिश और आउट का इशारा किया अंपायर ने। 7वां विकेट गिरता हुआ 63 रनों पर। और देखते हैं कि अंतिम क्षणों में किसको बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। 8 ओवर का ये फाइनल का मुकाबला संकल्प सुपरनोवाज और
ओम वॉरियर के बीच में खेला जा रहा है। दर्शकों में उत्साह की लहर दिखाई दे रही है इस वक्त। Last over to be bowled of this finals first innings. Seems that Sudarshan Patil, he is going to bowl the last over. "63 runs, as I said, 75 is a par score here at Mahatma Nagar ground. A shot of good length ball, way outside the off stump. Wide called by the umpire. 2 important runs for Supernova. Moving towards 65. 3 wickets in hand, 6 balls to go. Another shot of Goodland delivery down the leg side. Took an inside edge. Milind Gangulde is not happy with the effort from the bowler. He wants him to bowl into the stumps, and rightly so. टीम का कुल स्कोर 68 रनों पर पहुंचता हुआ इन 4 रनों के साथ संकल्प सुपरनोवा। देखते हैं पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय। इस बार गेंद मिडिल लेग स्टंप पर खेल दिया था उसको उसके के क्षेत्र में। फील्डर बहुत दूर है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश। जब तक थ्रो आता तब तक दूसरा, और इसी के साथ ये रन आउट हुए। सीधा थ्रो आता हुआ विकेटों के ऊपर और इसी के साथ ये रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। बहुत अच्छा थ्रो सर, जिस तरह से थ्रो किया गया उस थ्रो के बारे में आपको क्या लगता है? Well, fortune favors the brave. Parimal Sonawne, he took a chance. He threw the ball. And look at that. Oh my goodness. That is a bullseye. Another wicket fell down for Supernova. 68 for the loss of 7 wickets. Look at that. The ball just went into the hands of Parimal Sonawne and he took a chance. He threw the ball 1, 2, 3 directly on the stumps. Oh my God. 68 runs. Shot of Goodland ball played towards point region for a single. And a misfield there. That costed him another run. Milind Gangulde not happy at all with the fielding effort. He's been calm and composed so far. It seems that he's losing his cool today. And I understand that. Big games, they come onto your nerves. You have to keep your nerve. A shot of Goodland ball down the leg side. Missed the opportunity to score over short fine leg region. If you see the field, we have a short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on, long off, covers, point, short third man. Another shot of Goodland ball, way down the leg side, another wide. He need to re-bowl the ball again. 72 runs. They are inching towards the par score. Supernovas, 2 balls to go, 72. The par score is 75. Another Goodland ball played towards deep mid wicket region. Pradeep Raut and Kapil Palekar in pursuit. A good throw to the Milind Gangulde's hands. But in vain, 2 runs comfortably done. 74, 1 ball to go. Sharad Shirole batting on 4 runs in 3 balls. Dr. Anuj Nehte, 4 runs in 1 ball. Last ball of this innings. Sudarshan Patil played towards square leg region. Parimal Sonawne, what a catch! What a catch! Moving towards his right. Excellent catch by Parimal Sonawne. He can do nothing wrong today. Superb catch, running towards his right. It's difficult when you're running, but an excellent catch. And that is the end of Supernovas. They have scored 74 runs for the loss of 9 wickets in 8 overs. They have put up a target of 75 runs for Omkar Warriors. And Omkar Warriors, they are going to chase it down. Since they have a lot of firepower, it's going to be an interesting match between these two. Because Supernova, they have Bhushan Nemade to open the innings.
इस तरह से 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ संकल्प सुपरनोवाज ने 75 रन का टारगेट रखा हुआ है जीत के लिए ओम वॉरियर के सामने। देखते हैं क्या ओम वॉरियर 75 रन बना पाती है नहीं, आने वाला समय बताएगा। ये फाइनल मुकाबला ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या 75 रन बन पाते 8 ओवर में या नहीं, आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। Welcome back. Welcome back to the chase. Omkar Warriors, they need 75 runs to win this game. Meanwhile, Bhushan Nemade, right arm over the wicket. Pradeep Raut on strike. He went high up in the air. And the first ball wicket. First ball wicket for Bhushan Nemade. And a celebration back there. What a start. What a start for Supernova. A very important wicket. Look at that. A smooth action. Shot of good length ball. Pradeep Raut wanted to go over deep mid wicket region. And a catch. First ball wicket for him.
And that brings Milind Ganguly, the man in form, the leading run scorer of this tournament. Orange cap holder, Milind Ganguly. That brings Milind Ganguly on strike. He is bit too early than his expectations. A full length ball played cautiously towards covers region for a single. Off the mark, Milind Ganguly and Om Warriors. Excellent bowling by Bhushan Nemade. We have a left hand, right hand combination here. Sachin Patil on strike. He has got an excellent inning so far. Sachin Patil has got 3 wickets of his bowling. Can he do the same with his bat as well? Can he score good runs for his team? Because Om Warriors, they have lost early wicket, a very first ball wicket for Om Warriors. Now this right hand left hand combination is going to put the bowlers in trouble. Well bowled Bhushan Nemade. Look at his follow through, booming with the confidence. Bhushan Nemade, a very light on his feet, a steady customer. Another shot of good length ball. Went past the batsman so fast, he just could not connect the ball properly. Went straight into the gloves. Bhushan Nemade, 2 consecutive dot balls. Excellent start to the finals over. Amazing bowling by Bhushan Nemade. 4 balls so far, 1 run, 1 wicket. Another full length ball, a full toss ball played towards square leg for a single. He would not mind that. Sachin Patil must be at relief. 1 ball left of this over. Milind Ganguly on strike. Is he going to go after Bhushan Nemade? Only 2 runs have scored so far in this over. They need to chase down 75 runs. And he will. He tried to go over short fine leg. Got an outside edge. But a good field back there. Definitely saved 3 runs for his team. End of an excellent over. 1 over 3 runs and got 1 wicket. पहले ओवर के समाप्ति हुई. पहले ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट पर 3 रन. ओम वॉरियर 75 रनों का पीछा कर रही है. 8 ओवर में 75 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. देखते हैं, फाइनल का कड़ा मुकाबला है तो निश्चित रूप से अंतिम गेंद तक ये मैच हालांकि चलता रहेगा. डॉक्टर वैभव पवार को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए. डॉक्टर मिलिंद गांगुली खेल रहे 2 रनों पर और सचिन पाटिल खेल रहे हैं 1 रन पर. एक साझेदारी बनती रहनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में. इस बार गेंद लेग स्टंप पर हल्की सी पैड पर लगती हुई, कोई रन नहीं वहां पर. स्कोर अभी भी 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. डॉक्टर दिनेश ठाकुर, अपेक्षा ज्यादा रही है उनके पास से लोगों की और उसको वो खड़ा रहने की कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं डॉक्टर वैभव किस तरह से गेंदबाजी करते हैं. Milind Ganguly is in excellent form so far in this season. He has scored bunch of his runs towards leg side. He loves to play on a leg side. This time, steered the ball towards covers region for a single. He is very cautious and definitely, why not? This is the final of CPL season 2023 season 1. If he wants to win this game, he would like to stay there till the end. And if he stays there, Om Warriors will definitely have a great chance to win this game. Right hand, left hand combination. We have seen this going to be a trouble for bowler. Bhushan Nemade taking his sweet time to set his field up. We have mid-off, extra covers, point, short third man. Dr. Vaibhav, left arm over the wicket.
to left-hand batsman Sachin Patil. A good length ball played towards longer on the fielder station there. Milind Ganguly won to a fumble. Dinesh Thakur is fielding there. A poor throw. They got 2 runs on his fumble. Comfortable 2 for Sachin Patil. These small moments are so important in this game. These are the deciding moments. A team which feels better will win this game for sure. A full length ball to Milan and a drop. A dolly. The catch has been dropped. He has taken excellent catch in the last over, but he's dropped a very simple one now. Excellent bowling by Dr. Vaibhav. Almost created a chance. Another wicket for him. Unfortunately, dropped down by the fielder. I tell you what, if you lose catches, you will definitely lose the match. That was an inside edge. Wonderful ball by Dr. Vaibhav. Milind Ganguly wanted to slap it through the mid-off region. Got an under-edged. Super bowling by Dr. Vaibhav. Home Warriors, they have all the hopes pinned down on Milind Ganguly, the man in form. He had scored bunch of his runs for his team throughout the tournament. So they definitely want Milind Ganguly to score more runs in this final. Milind Ganguly feeling that pressure, batting on 3 runs in 5 balls. A full length ball played towards the mid-off region and another drop. Another drop. This is disheartening. 2 catches, 2 dropped, 2 important wickets. One of Sachin Patil, one of Milind Ganguly. Is it going to be costly for Supernova? Look at that. Another dolly. Pressure, pressure. It's a pressure of finals. At the end of 2 overs, 11 runs for the loss of 2 wickets. They require 64 more runs in 6 overs. जैसे कि दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक जीवदान मिला है, उस वजह से हालांकि वो मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर क्या ड्रॉप हुआ, लेकिन दिनेश ठाकुर उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, उनको समझ में दिया कि हो सकता है ऐसा, लेकिन आप इसके बाद में अच्छे फील्डिंग करो. ये होता है, कप्तान की एक जिम्मेदारी होती है अपने खिलाड़ियों को एक संभाल कर लेने का. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का टारगेट सामने रखा हुआ है मैच जीतने के लिए. ओम वॉरियर देखते हैं. So 36 deals to come now, 64 run requiring, 9 wicket on his hand. लेकिन देखते हैं दोनों ही खिलाड़ियों का एक एक कैच ड्रॉप हो चुका है, तो इसका किस तरह से वो फायदा उठाते हैं आने वाला समय आपको बताएगा. डॉक्टर दिनेश ठाकुर आए गेंदबाजी के लिए. इस बार अच्छा स्ट्रोक स्ट्राइक के रूप में खेलते हुए वहां पर भूषण नेमाड़े फील कर दे, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए. दिनेश ठाकुर आए हैं गेंदबाजी के लिए. इस 1 रन के साथ स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Milind Ganguly on strike. Milind Ganguly on strike. Dinesh Thakur and Milind Ganguly, they play for the same team, Nashik Masters, throughout the season. So they know each other's game really well. They have played a lot of cricket between them. So it is going to be an interesting tussle between these two. Dinesh Thakur, right arm over the wicket. A full length ball played over short fine leg for another boundary in this over. As I said, it is going to be costly for Supernova. They have dropped Milind Ganguly when he was batting on 3 runs. And it seems like that
Super batting, the man in touch, the man in form, Milind Ganguly. The only threat that Supernova has. What a shot by Milind Ganguly. Shifting his balance outside the off stump, playing it over the short fine leg for a boundary. He has scored most of his runs in that region. Meanwhile, Dinesh Thakur, another full and delivery. It rose to the batsman, played towards backward point for a single. A sensible batting by Milind Ganguly. He is not going after the bowler. He's playing the ball to its merit. Good comeback by Dinesh Thakur. A very sensible ball. 3 balls bowled so far. Given away 6 runs. Milind Ganguly batting on 12. Sachin Patil batting on 5. They both got 1 life from Supernova. A slow ball. Slow ball by Dinesh Thakur. Super bowling. Smart bowling by Dinesh Thakur. He doesn't want to give any pace to Sachin Patil. He understands. This is final. Another full length ball played towards long off. Bhushan Nemade is patrolling the boundary there. A small fumble. But restricted batsman for a single. Last ball of this over. Milind Ganguly is going to face this ball. He's already fetched a boundary in this over. They require 57 runs in 31 balls. So they require 10 runs per over. Is he going to go after this ball? He should. Will he? A good ball. Very good ball. A good precious dot ball by Dinesh Thakur. Excellent end to the over. End of 3 overs. Om Warriors, they're batting at 18 runs for the loss of 1 wicket. तीसरे ओवर के समाप्ति हुई 3 ओवर के समाप्ति पर ओम वॉरियर 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी आने वाले 30 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। डॉक्टर मिलिंद गांगुली खेल रहे हैं 12 रनों पर, सचिन पाटिल खेल रहे हैं 6 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में 17 गेंदों में 18 रनों की साझेदारी बनती हुई। दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक योगदान मिला था इसके पहले ओवर में। अब देखते हैं उस योगदान का दोनों ही बल्लेबाज किस तरह से फायदा उठा पाते हैं। आने वाले 30 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। देवेंद्र तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश उनकी, खेल दिया था उसको, उस खेले के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए बाहर। सर 6 रनों के बारे में आपको क्या लगता है? As I said, this is the weakest link of Supernova. I believe this is the over they are targeting. Om Warriors, they are lagging behind. They need to score 11 runs every over. And this is the over they are targeting. If they score off much more runs in this over, they are definitely back into the game. Devendra Chaudhary, who's had an excellent last game. But tell you what, he's slow in the air. A good ball. Sachin Patil wanted second. Milind Ganguly running through it. Devendra Kulkarni. A misfield there. Good running between the wickets. Between Sachin Patil and Milind Ganguly. 2 runs of the second ball. 8 runs so far in this over. Great start to this over for Om Warriors. Devendra Chaudhary, right arm over the wicket. Another full length ball. Milind Ganguly want a quick single. With this cheeky single, Milind Ganguly is on strike. He wants to make maximum out of these last 3 balls remaining of this over. And he is in great form. Milind Ganguly. He's got short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on. Short fine leg has been put down. Now it's a fine leg. We have a short third man, backward point, covers, long off. Devendra Chaudhary, 3 balls to go in this over. A switch hit. What a shot. Played in the gap for the first boundary of this over.
through the bat of Milind Gangurde. A very innovative shot. Devendra Chaudhary, very slow in the air, gave all the time in the world for Milind Gangurde to play this shot. Played comfortably between short third man and a backward point for the first boundary of his bat. 2 balls to go, 13 runs so far in this over. This is the over that Om Warriors want to capitalize on. 2 balls to go. Milind Gangurde on strike. Another good ball. Tried to play over keeper's head. Milind Gangurde failed to connect the ball. A very risky shot. Is it that worth? 1 ball to go in this over. 13 runs so far. 31 for 1 in 3.5. We are going to be halfway through of this over. Full toss ball played towards deep square leg. Dinesh Thakur fielding there. A good stop. They want 2. And that could be wicket, and it is. Sachin Patil. He got out. Good throw at the end by Dinesh Thakur. Straight into the hands of Devendra Chaudhary, who did not do any mistake whatsoever. Look at that. Good field. Good pickup. Good throw. Straight into the hands of Devendra Chaudhary, who was standing there with the stumps. And he did not do anything wrong down there. So an important wicket fell down for Supernova. At the end of 4 overs, 32 for 2. They require 43 runs in 4 overs. चौथे ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट पर 32 रन। अभी भी आने वाले 4 ओवर में 43 रनों की जरूरत। देखते हैं क्या रन बन सकते या नहीं, लेकिन दूसरा एक बहुमूल्य विकेट गिरता हुआ सचिन पाटिल के रूप में, रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। हल्की सी नाराजगी उनके चेहरे पर दिखाई दी। मिलिंद गांगुर्डे 17 रनों पर खेल रहे हैं इस वक्त। देखते हैं 4 ओवर के समाप्ति पर 32 रन बनाए हैं। करंट रन रेट 8 रन प्रति ओवर का अब तक दिखाई दिया, लेकिन देखते हैं आने वाले 4 ओवर में कितना स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं मिलिंद गांगुर्डे। We have 2 important key chase players for Om Warriors are in the middle. Both are. One is the leading run scorer and other is player of the match from the last semi-finals, Sudarshan Patil, who scored 50 runs. Sensational inning. He has scored 50 of merely 20 balls. And this too required 43 runs in 24 balls. It's going to be an interesting contest between Devendra Kulkarni and Sudarshan Patil. Sudarshan Patil on strike. Devendra Kulkarni is going to bowl right arm round the wicket. Right arm over the wicket. We have short third man, point, deep point, covers, long off, long on. Short fine leg, deep square leg, deep mid wicket. Outside edge, going past the point region, only for a single. That brings Milind Gangulde on strike. 42 more runs required in 23 balls. ओम वॉरियर का कुल स्कोर 2 विकेट पर 33 रनों पर पहुंचता हुआ। अभी भी 23 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। देखते हैं क्या डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे सर एक बड़ी हिट करते हैं या नहीं, आने वाला समय बताएगा। थोड़ा बहुत जोखिम उठानी पड़ेगी। विकेट तो गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि विकेट नहीं गिरते, विकेट आखिरी गेंद तक गिरते रहते हैं, लेकिन रन भी बनते रहते हैं। ये बात भी डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे अच्छी तरह से जानते हैं। ये सबसे बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। देखते हैं इस गेंद के ऊपर क्या चौका लगाने की कोशिश करते या छक्का लगाते। देवेंद्र कुलकर्णी गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। फील्डिंग काफी दूर दूर जमाई जा रही है डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे सर के लिए। देवेंद्र कुलकर्णी तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे स्केले के ऊपर से, लेकिन गेंद उनके पैड को लगती हुई वहीं पर लुढ़कती हुई, किसी भी रन का इजाफा नहीं है। स्कोर ओम वॉरियर का 33 रनों पर
2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने गिरे जिसके बजाय रन कितने बने हैं ये तो आपको पहले देखना पड़ेगा। विकेट को इतना महत्व नहीं होता, लेकिन मिलिंद गांगुली जैसा एक बड़ा विकेट होता है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक अच्छा रोल अदा कर सकता है अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात दिनेश ठाकुर फील्ड करते थ्रो करते, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर 34 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 34 for 2। Warriors need 41 more runs. 3 balls to go in this over. So far, so good. Devendra Kulkarni gave away only 2 runs so far in this 3 balls. What he's bowled. Sudarshan Patil on strike. He needs to score maximum run out of this over. Can he do this? A full length ball. Right in the block hole. An important dot ball. Pressure. Pressure is mounting on Home Warriors batsmen. It is not that easy. As I said, 75 is the par score at this level. Supernova. Devendra Kulkarni taking his own time. Sudarshan Patil on strike. A full length delivery, wide ball called by the umpire. An extra delivery to be bowled. Extra run is given. These are important moments of this game. 2 balls to go in this over. 3 runs so far have scored of this over. A very tidy over so far by Devendra. Wonderful ball. Tried to cut through the point region. Failed to connect the ball. An important dot ball. सो देवेंद्र कुलकर्णी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोई इजाजत तक नहीं दे रहे हैं, बैट्समैन को पीछे हटकर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं इस वक्त। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोई इजाजत नहीं दी देवेंद्र कुलकर्णी ने। इस ओवर में बहुत अच्छी और जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं देवेंद्र कुलकर्णी। फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए खेल दिया था। ठीक बॉलर के हाथ को लगकर गेंद जाती हुई कॉटन बॉल का चांस उनको जरूर था, लेकिन स्ट्रोक बहुत जोर से आया था, उनके हाथ को लगकर गेंद हालांकि फिसलती हुई वहां पर बाल बच गए वहां पर देवेंद्र कुलकर्णी। और इसी के साथ ये 5वें ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट पर 35 रन। अभी भी आने वाले 3 ओवर में 18 गेंदे 40 रन चाहिए। What an effort by Devendra Kulkarni. It was so quick towards him. It was slapped towards bowler. It is very difficult to catch the ball in a follow through, but Devendra Kulkarni did his best. So at the end of 5 overs, 35 for 2, they require 40 more runs in 3 overs. And who is going to bowl this over? And none other than Dinesh Thakur. Dinesh Thakur has taken the baton himself. And we have Milind Ganguly on strike. What a contest here. A leading run scorer and an excellent bowler. Dinesh Thakur going to an excellent contest. What a field. First ball of this over. Dinesh Thakur, right arm over the wicket. Full toss ball. Went over the square leg. Fielder coming underneath. And it dropped. Close to the boundary line. Could have been an important wicket. And it's a 6. It's a 6. What a shot. Oh my goodness. What a drama. Sixer. Look at that. It went so high up in the air. First ball 6 to Milind Ganguly. Excellent batting. 17 balls, 34 runs. A full length ball played towards cow corner for another boundary. What a batting. Excellent batting by Milind Ganguly. A second consecutive boundary in this over. First ball out of the park. Second ball towards deep mid wicket region for boundary. 10 runs so far in the 2 balls bowled. Home Warriors. All the hopes are pinned down on this guy, Milind Ganguly. Dinesh Thakur, a bit expensive here.
10 runs so far in these first 2 balls. A full length ball played towards off to covers region and a misfield and another boundary. 14 runs so far in 3 balls. What a game it is. This game has turned on its heads here. Milind Gangurde, what a player. What a player. A game changer. Game winner, Milind Gangurde. He's a leading run scorer. Leading from the front, Milind Gangurde. Oh, good comeback by Dinesh Thakur. That stayed low. Milind Gangurde expecting the ball to come to the west high, but it stayed low. Good comeback by Dinesh Thakur. 2 balls to go in this over. Excellent over so far for Om Warriors. They have got 14 runs in this over. Still 2 balls to go. 49 for 2 in 5.4 overs. The required rate is 11.14. A ball played towards point region. The fielder in pursuit, but that might go in when comfortably 2 runs for Milind Gangurde. He must be happy with 2 runs because he's got a strike for another ball and he would like to make maximum out of the last ball left. इस तरह से टीम ने 50 रन भी पूरे किए. टीम का कुल स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 51 for 2. डॉक्टर दिनेश ठाकुर गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं. टीम का कुल स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर. दिनेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए आते हुए, हालांकि वार्निंग दिया जरूर उन्होंने. 13 गेंदों में 24 रनों की जरूरत. देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या चौका लगता या और बड़ा स्ट्रोक लग पाता. इस बार आगे आकर खेला उन्होंने. देखते हैं एक टप्पा करने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई. 4 रन के लिए मिलिंद गांगुर्डे को रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. इसी के साथ ये 55 रनों पर 6 ओवर के समाप्ति हुई. 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर. आने वाले 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत. Excellent batting by Milind Gangurde. Man in form, 38 runs in 20 balls. Great players deliver when it demands. Man rising up to the occasion, Milind Gangurde. What an inning he is playing for his team. Superb inning. Om Warriors require 20 more runs. This is going to be a penultimate over. And Bhushan Nemade has taken the baton on himself. Sudarshan Patil on strike. Bhushan Nemade has bowled an excellent first over. He's got wicket of his first ball. Bhushan Nemade. Dinesh Thakur is being very expensive. 2 overs, 27 runs. Bhushan Nemade, right arm over the wicket to Sudarshan Patil. A good length ball played towards square leg region for the boundary. He started off with the boundary. It seems that momentum has shifted and this has shifted towards Om Warriors. 16 more runs required. 16 more runs required in 11 balls. An amazing match is being played here. A full length ball, a dot ball, a precious dot ball. This match is shifting like a pendulum. Nobody knows what is going to happen on the next ball. And every next ball is going to decide the future of both the teams. Another full length ball went high up in the air. This might be caught, and it is. What a catch. What a catch by Devendra. Superb catch, an important wicket here. Bhushan Nemade had struck another wicket for Supernova, bringing Supernova back in the game again. With the fall of Sudarshan Patil, we have Kapil Palekar in the middle.
As I said, this is going to be a penultimate over. This over is going to decide the fate of the match very soon. We have still 8 balls to go in this over. 10 balls to go. Bhushan Nemare, a true leader, leading from the front, got an important wicket for his team at a very crucial moment. This is a very delicate passage of play here. These next 3 balls are going to decide the fate of both the teams. Right arm over the wicket, Bhushan Nemare. A full length ball played towards square leg region. They might go for 2, and surely so. A good throw in the end, but good running between the wickets. Milind Gangude and Kapil Palekar. Kapil Palekar, sensible batting. They still require 14 runs in 8 balls. What a match we have. It's a nail-biting match we have. An excellent nail-biter here. Kapil Palekar played to a short fine leg. That might be a run out, but no throw. That brings Milind Gangude on strike. 13 more runs required in 7 balls. Last ball of this over. An important ball. This is a make or break ball for both the teams. Can Bhushan Nemare take a wicket of Milind Gangude? And can Milind Gangude hit this ball out of the park? Almost close. He wanted the run. He is... What an effort. What an effort. Both are the leaders. They are leading from the front, giving 100% for the team. Milind Gangude and Bhushan Nemare. Bhushan Nemare ended with his spell, 2 overs, 10 runs, 2 wickets. They require 12 runs more and still 6 balls to go. Who is going to bowl this over? What a nail biter. What a match to end this season. A true reflective match, reflecting the nature of this tournament. Consultants Premier League 2023 Season 1. We have Om Warriors and Supernova fighting the battle in the final match of this Season 1. Milind Gangude, a leading run scorer, who's batting on 38 in 21 balls. Kapil Palekar batting on 3 in 2 balls. And they require 12 more runs in 6 balls with Milind Gangude on strike. It seems that Devendra Kulkarni, he is going to bowl the last over. This is going to be a nail biter, trust me. An amazing finish. A huge turnout here at the ground. A lot of spectators here. What a match we have at our hand right now. Excellent players, excellent teams, excellent attitude. Devendra Kulkarni, right arm over the wicket, 6 balls to go. Milind Gangude on strike, 12 runs required. Tense situations. Pressure. Pressure is on everyone. A full length ball played towards long on. Milind Gangude denied the single. He wants to take all the baton on him. He wants to take all the onus on him. 5 balls, 12 runs, no single. It seems that Milind Gangude wants to take on Devendra. The intentions are clear. Pressure. Pressure situations. Folks, it is not easy. Weak-hearted guys should not watch this. 5 balls to go. A shot of good length ball, played over the deep square leg region for fantastic 6. Milind Gangude, you beauty. What a shot. He denied the single on the very first ball. But look at what he has done. He has taken the bowler out of the park. Look at that. Stable, steady, waiting for the ball. And the time has come. He has hit the ball out of the park. 6 more runs required in the next 4 balls.
Amazing match. Devendra Kulkarni. A full length ball played towards long off. Deva coming in. Another drop. An expensive drop here. Third catch dropped by Supernova. Milind Gangulde. Will he make the most of it? 4 more runs required. 3 balls to go. This is Dolly. This is Dolly. Another Dolly has been dropped. Milind Gangulde. Fortune favors the brave, it seems. And he is taking his chances. He wants to take this team over the winning line. Milind Gangulde. 3 balls to go. 4 runs needed. What is going to happen next? Another full end delivery. Played over short third man region. But for a single. Kapil Palekar. Kapil Palekar on strike. 2 more runs required. 2 balls to go. 10 situations here. 3 more runs required. 2 balls to go. 10 situations. Do we have a super over here? Do we have a super over here? It is going to be seen. The fate is going to be decided in the next 2 balls. Devendra Kulkarni. Right arm over the wicket. 2 balls to go. Kapil Palekar on strike. A full length ball. Played straight over the bowler's head. Bhushan Nemade in pursuit. He stops the ball. Milind Gangulde run for 2. 2 more runs required. In 1 ball. Huh? Equal ka? 1 more run required. Scores are level. 1 run required. Only 1 ball left. 1 run required to win this game. The scores are level. What a match we have. 1 ball, 1 run. Do we have a super over here? Do we have a super over here? 1 run required for Home Warriors. What a match. Superb match here. Everybody is inside the ground. Kapil Palekar on strike. Devendra Kulkarni is going to bowl. Last ball of the season 1. CPL 2023 season 1 final is being played between Home Warriors and Supernova. 1 run required. 1 ball left. 10 situations here. Kapil Palekar on strike. Heartbeats are raising. The temperature are raising. A lot of cheering from the ground. This is amazing. 10 situations here. Holy moly cow. One ball to be done. Oh my goodness. My heart is in my hand. 1 ball to go. Devendra Kulkarni to Kapil Palekar. What is stored in future? Who is going to be the winner of this season? And a straight ball, straight to the hand. That could be a run out, but it is not. Kapil Palekar successfully completed a run. Home Warriors, they have clinched the victory from the jaws of defeat. Oh my goodness. What a match. A last ball thriller. Home Warriors, they are the champions of season 1 CPL 2023. They have beaten Supernova on the very last ball. Successfully chased down the score of 74 runs in 8 overs. Milind Gangulde batted superbly, leading from the front. A superb match. An amazing match. Sachin Patil, man of the match for Home Warriors. Supernova, they fell short, but what a match. Congratulations to both the teams, Sankalpa Supernova and Home Warriors. And we congratulate Home Warriors for their first ever win
the first ever title of CPL 2023 Season 1.
Consultant Premier League Season 1. What a nail-biting final. And it's been privileged to see both these two teams playing such a wonderful cricket. दिल की धड़कने कुछ समय के लिए देवा ने रुका देती फाइनल बॉल डालने के पहले. क्या होगा? What a final. And I would like to congratulate the winning team. I would like to congratulate the runner-ups, and I would like to congratulate all the participants. Now it's time to say thank you to many people. Without them, it was really impossible to conduct such a wonderful event. The sponsors for the event: Dr. Abhishek Bagul, Meghananda Dental Clinic, Safalya Hospital Pediatric Team, Dr. Nilesh Nikam, Nikam Hospital, True Lab, Dr. Nikhil Kazale, Medicare Services, Eye Speech and Hearing Clinic, Samir Kale, Dr. Nitin Dhatrak. He sponsored the auctions. Delta Healthcare, Dr. Kapil Palekar, Jagadamba Hospital, Dr. Vaibhav Pawar, Lotus Hospital, Dr. Pritesh Junagade, Tidme Hospital, Dr. Ajit Tidme, Dr. Sudhir Sanklecha for Radio Vishwas Bites, Dr. Meenakshi Dinesh Thakur, Gajanan Dental Clinic and Spark Diagnostic, Dr. Parimal and Dr. Rohal. Many thanks for you all. Now I would like to invite our chief guest, our President of IMA, Dr. Rajeshri Patil Madam, to come on the dais. जेव्हा सेमीचे मॅन ऑफ द मॅच ते सांगणार आहे ना, तेव्हा ते बेस्ट कॅच आणि हे पण सांगायचं. मी तेव्हा सांगेल की ते बेस्ट कॅच आणि मॅक्सन आणि बोलून Now it's time to give big round of applause for the organizing team. I know it's so much difficult to organize such a huge event on very short period of notice, just 1 month, and these guys have done fantastic job. 3 cheers for organizing team. Hip hip, hip hip, hip hip. I would like to invite all of them on the dais. Dr. Aniruddha Bhandarkar, the patron, who actually started with this concept, आणि ही कन्सेप्ट त्यांनी आपल्या टीम समोर मांडली आणि 1 महिन्यामध्ये एवढं मोठं लग्न उभं राहिलं आणि आज ते पूर्णपणे छानपणे पार पडलं आहे. ऑर्गनायझिंग चेअरमन डॉक्टर नितीन चितळकर, को चेअरमन डॉक्टर भूषण नेमाडे, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मिलिंद गांगुर्डे, ऑर्गनायझिंग ट्रेजरर डॉक्टर कपिल पाळेकर, डॉक्टर मुकेश खैरनार, ऑर्गनायझिंग जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश ठाकूर, डॉक्टर सचिन आहेर, डॉक्टर अमोल राजदेव, and executive committee members Dr. Vishal Nikam, Dr. Jitendra Patil, Dr. Vaibhav Pawar and Dr. Parimal Sonone. Many congratulations, and I would like to say thank you to all of you, because I know what efforts you guys have put. All 3 days you are on the ground, on the field. I would like to say thank you to Dr. Nitin Thakre sir, who was there before our final match. He is the president of the Bar Association Nashik and Sir Chitnis of MVP Nashik. It's time to present few awards. Many players have given their best in this tournament. आपण खूप चांगली बॅटिंग बघितली, खूप चांगली बॉलिंग बघितली, खूप चांगली फिल्डिंग बघितली. कुठल्याही प्लेयरला अवॉर्ड फार इम्पॉर्टंट असतो, कारण त्याचं ते मनोधैर्य उंचावत असतो. आणि आपण बघितलं की हियर वी हॅव सीन सो मेनी प्लेयर्स प्लेइंग लाईक अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. दे हॅव गिवन their 3 days of the practice and won so many awards. So we'll start with the man of the match awards from the day 1.
The first match between Sankalpa Supernova and Nashik Painkillers. Man of the match Ganesh Sangle. Woo! Fantastic batsman. The second match was played between Neuro plus Veer Maratha and Sahyadri. The man of the match, Dr. Kunal Desai. Woo! The hard hitter, the good bowler, and the best fielder also. A complete package for his team. The third match between Om Warriors and Nashik Robodogs. The Sachin Aher. The stylish left-handed batsman who have sent ball many times out of the park. Congrats, Sachin. The fourth match between Neuro plus Veer Maratha and Sankalpa Supernova. Again, this time Kunal Desai. Woo! Collecting so many trophies here also in the CPL after IMA tournament. I would like to invite the President-elect of the IMA, Dr. Vishal Gunjal, on the dais. The fifth match between Om Warriors and Sahyadri Sheras, Dr. Pradeep Raut. The young man, the dynamic player, the rising star of the IMA. Congratulations. The sixth match between Nashik Painkillers and Robodogs, Dr. Sushil Anturlikar. The hard hitter, stylish batsman. The match was nail biting and the Sushil scored 13 runs of last 2 balls. Congratulations. That's the surprise. That's the surprise. How he scored 13 runs of the last 2 balls. The next day again we started on the 4th. The first match between Robodogs and Sankalpa. Again Sushil Anturlikar, man of the match. This time his performance was with the ball. 2 overs, 12 runs and 3 wickets. Second match, to Neuro plus Veer Maratha and Om Warriors. Pradeep Raut, 69 runs of 35 balls. Congrats, Pradeep. Few bowlers have also won the man of the matches. I know the Mahatma Nagar ground is very difficult for the bowlers because the batsman hit the ball many times out of the park. So between Sahyadri Shera and Nashik Painkiller, Santosh Borse. Santosh is not there. Somebody from his team kindly collect his trophy. Congrats, Hanuman. The fourth match between Sankalpa Supernova and Om Warriors. The hard hitter batsman Dr. Bhushan Nemade, 31 runs, just 14 balls. Congratulations, sir. Fifth match, the Sahyadri Shera and Nashik Robodogs. Again Sushil Anturlikar for the blazing 49 runs out of 25 balls just. Congrats, Sushil. The final match on the day second, Nashik Painkiller versus Neuro plus Veer Maratha, Navnath Zondale. 2 overs, 2 wickets, just 18 runs. Somebody. Congratulations, Navnath. The final day of the CPL 1, 5th, this Sunday. First match, Om Warriors between Nashik Painkillers. Dr. Milind Gangurde. What a fantastic inning. This inning made them entry in the semi-finals.
between Sahyadri Shera and Sankalpa Supernova, Nilesh Aher. The match was tied. I would request the Malak to collect the trophy. The next match, Nashik Robodog versus Neuroplus Veer Maratha, Mukesh Khairnar for his 23 runs of 16 balls. Super. The first semi-final was played between Sankalpa Supernova and Neuroplus Veer Maratha, and the man of the match goes to Devendra Kulkarni. 46 runs of 32 balls. Congratulations, Deva. And Deva is also getting one more. For this match, there is another award given by Dr. Dinesh Thakur and Dr. Meenakshi Dinesh Thakur for Best Catch of the Match award. First semi च Next. The second semi-final was played between Om Warriors and Robodogs, and this time Sudarshan Patil, just 56 runs of 23 balls. What a blazing inning! The final entry for the Om Warriors. What a fantastic inning by Sudarshan, a stylish left-handed batsman. I would like to thank the team owners who have shown faith on IMA CPL team, and within, I think on the WhatsApp, just the message was flashed ki we are organizing this tournament and we are searching for the owners. And within 15 minutes, we got 6 owners. So, such a wonderful response given by all of them. The first team, Nashik Painkiller, Dr. Vishal Gunjar. Malak. Thank you. Sankalpa Supernova, Dr. Bhushan Nemade. Nashik Robodogs, Dr. Pranit Sonavne. Is he here? Hello Pranit, come on the dais. Neuroplus Veer Maratha, Dr. Vishal Savle. And Sahyadri Shera, Dr. Anil Nagre. Woo! Om की टीम नहीं है. The Om Warriors, Dr. Mayur Punjabi. शेवटी ठेवले होते winner. Thank you all. All of these owners have shown faith on their players, and I know की खूप चांगलं team bonding झाले. Different doctors from the different faculties, they all come together. They practice for 1 month, and now the results are here. Thanks to CPL, thanks to team owners. Few more important awards. The best fielder, Dr. Pradeep Raut. Woo! Congrats, Pradeep. The best wicket keeper, Dr. Milind Gangurde. Woo! Sir is calling Devendra on the dais to share the award. The big-hearted man. The sir has given his award to Devendra. The true sportsmanship. 3 cheers for Milind sir. Woo! Congratulations. The best bowler, Dr. Kunal Torne. Woo! The purple cap holder. Congratulations.
the best batsman, Dr. Milind Gangurde, the orange cap holder. नाही ते नाही सचिन पाटील नंतर शेवटी झाला. The man of the match for the final between Om Warriors and Sankalpa Supernova, Dr. Sachin Patil, for his 4 wickets. The man of the series award goes to Dr. Milind Gangurde for his fantastic effort. He batted very well in the nail-biting matches, and because of him, all the efforts, his team is in the final and they have won the tournament. Paisa vasool bhai. I would like to request Dr. Aniruddha sir to say a few words about CPL. हॅलो नमस्कार. आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर राजश्री पाटील मॅडम त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यांनी फोन केल्याला इथे आलात. शेवटी ते घर आहे आपलं, म्हणून थँक्यू व्हेरी मच मॅम. CPL हा इनिशिएटिव्ह म्हणजे हा सगळ्यामुळेच झालेला आहे. हा एकट्यामुळे कोणामुळे होत नसतो. इट्स अ टीम वर्क. म्हणजे आम्ही आत्ताच IMA स्पोर्ट्स संपले आणि जस्ट आम्ही बोलता बोलता मी नितीन चितळकर, मिलिंद गांगुर्डे, विशाल निकम, भूषण नेमाडे आम्ही जस्ट बोलत होतो की काहीतरी वेगळं करूया. त्यात सचिन आयर आणि मुकेश खेरनार म्हटलं सर आपण NPL टाईप करायला काय हरकत आहे. आणि त्यातनं ते आम्ही असा विचार केला की काय हरकत आहे. मग असा विचार केला आपण पुढे घेऊया. पण आम्ही म्हटलं पुढे का घ्यायचं, आजच घेऊया. आणि त्यातनं खरंच एक कौतुक वाटतं की विदिन 2 डेजमध्ये आमचे 90 रजिस्ट्रेशन झाले होते प्लेयर्सचे. आणि मला माझ्या कमिटीमध्ये माझे चेअरमन डॉक्टर नितीन चितळकर, को चेअरमन डॉक्टर भूषण नेमाडे, थोडा सगळ्यांचे नावं घेतो आहे प्लीज थोडा घ्या. सेक्रेटरी मिलिंद गांगुर्डे, ट्रेजरर डॉक्टर मुकेश खेरनार, डॉक्टर कपिल पाळेकर, नंतर जॉईंट सेक्रेटरी डॉक्टर सचिन आयर, अमोल राजदेव, अजून कोण होतं, दिनेश ठाकूर, डॉक्टर जितेंद्र पाटील, नंतर वैभव पवार आणि विशाल निकम आणि डॉक्टर परिमल सोनवणे. मला या सगळ्यांचं कौतुक करावं असं वाटतो. आणि हे सक्सेस झालेलं आहे, हा जो CPL सक्सेस झाला हा फक्त यांच्यामुळे नाही तर सगळ्या हे जे 90 प्लेयर्समुळे सुद्धा झालेला आहे, लक्षात ठेवा. आणि दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज आम्ही तर फक्त काम करत होतो, पण आम्हाला जो सपोर्ट यांच्याकडे मिळाला, जो रिस्पॉन्स जो प्लेयर्सकडनं मिळाला तो अतिशय उत्साही आणि लगेच मिळाला. आणि मी असं डिक्लेअर करतो हे जे CPL जाईल हे आता कंटिन्युअस एक तर हाफ इयरली का इयरली चालू राहील. आपण नेक्स्ट CPL जी राहील ही जी नेक्स्ट CPL जी ती नाईटमध्ये राहील हे पण डिक्लेअर करतो मी. सो थँक्यू व्हेरी मच. आमचं काही कमिटीकडे काही चुकलं असेल तर तेवढं माफ करा. अजून काही सुधारणा आम्हाला करता येईल तर आम्ही जरूर करूया. आम्हाला सजेशन द्या. थँक्यू व्हेरी मच. जय IMA. या Thank you, sir. I would like to request Dr. Rajeshri madam to say a few words. Dignitaries, Bhandarkar sir, other dignitaries and dear friends. Actually, I'm new on this ground, but it is so amazing. म्हणजे IMA मध्ये 1 वर्ष माझं खूप छान गेलं, पण दिस इज चेरी ऑन द केक. इट्स टोटली डिफरंट. आणि व्हॉट आय लाईक अबाउट दिस इज द स्पोर्ट्समन स्पिरिट. आणि ही जी स्पोर्ट्समन स्पिरिट आहे ती आपल्या IMAच्या वातावरणात आहे. सो इट इज फन टू वर्क हिअर. सो थँक्यू भंडारकर सर फॉर दिस व्हेरी नॉवेल कन्सेप्ट जी आय एम शुअर इट इज गोइंग टू be famous throughout the state and throughout the country. म्हणजे this is not going to be limited to Nashik itself, and people might want to be a part of the CPL more than they would want to be IMA president. This feeling I have right now.
Congratulations to the winners and my best wishes to those who have not won. You will next year. Wish you all the best. Thank you for inviting me. Thank you for making IMA a huge part of this. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, Nitin. Thank you. Thank you, ma'am. कन्सल्टंट प्रीमियर लीग सीझन 1 साठी काही इंटरेस्टिंग अवॉर्ड्स सगळ्या प्लेयर्सला देण्यात आले. द अवॉर्ड्स वेर गिवन बाय डॉक्टर दिनेश ठाकूर, अथर्व सिद्धी क्लिनिक, कर्मयोगी नगर, अँड डॉक्टर मीनाक्षी दिनेश ठाकूर, द गजानन डेंटल क्लिनिक. इतके सुंदर एनवलप बनवले होते, हाताने ड्रॉइंग केलेले, फॉर द बेस्ट कॅच ऑफ द मॅच अँड द बेस्ट सिक्सेस. आय वुड रिक्वेस्ट मीनाक्षी मॅडम टू कम ऑन द डायस. All these envelopes, all these drawings are made by hand. Madam, and ha Kaka, you are always there with us. Thank you, Kaka. The best catch for the first semi, Dr. Devendra Chaudhary. Congratulations, sir. Super sixes, Dr. Suhas Kotak, semi-final 1. Second semi-final, the best catch, Dr. Sachin Patil. Good catch, sir. The catches win the matches. And also the sixes also win the matches. The most sixes in second semi-final, Dr. Sudarshan Patil. Woo! For the final, a single catch can save so many runs, and on the final delivery of the first inning, Dr. Parimal Salone took a wonderful catch and saved 4 runs for his team. That catch made lot of difference. And the maximum sixes, Dr. Milind Gangurde. Woo! Collecting so many awards today. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you, Kaka. Now it's time to invite the runner-up team, Sankalpa Supernova, on the dais. Nova, chalo Goa. Bhushan Nevade sir and his team is the owner of the team. A true sportsman. Very well played. They were 3 down on the day 1. Made very good comeback. A deserving team in the final. Congratulations, Sankalpa Supernova. Nova. Direct Goa. Many congratulations. And the final trophy. For this, all the players played a wonderful cricket for last 3 days. The Om Warriors. Many congratulations. The players and their families. We have got very good spectators from all the family members of all the doctors, and they were following all the matches very well.
So I would like to thank all the family members who spared all the players for the 3 days. थांब आता 2 मिनिटं थांब जाऊ मला 3 cheers for home warriors. Hip hip, hip hip, hip hip. Oh, please don't go, please wait on the dais. Vote of thanks. सगळ्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम बाकी राहिला आहे अजून, द वोट ऑफ थँक्स. आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट डॉक्टर नितीन चिताळकर. द विनर्स, यू कॅन क्लिक फोटोज आफ्टर सम टाइम. द ट्रॉफी इज विथ यू नाउ. डॉक्टर नितीन सर इज गोइंग टू से फ्यू वर्ड्स. कन्सल्टंट प्रीमियर लीग 2023 सीझन 1 अत्यंत यशस्वीरित्या ही टुर्नामेंट पूर्ण झालेली आहे आणि ओम वॉरियर्स डॉक्टर मयूर पंजाबी यांचा संघ विजेता ठरला आहे. सीझन 1 चा विजेता ठरला आहे. त्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. रनर अप ज्यांनी हृदय जिंकलेले आहे असे संकल्प सुपरनोवा डॉक्टर भूषण नेमाडे, संकल्प हॉस्पिटलचे संचालक, या दोघांचेही मी मनापासून आभार मानतो. आणि त्या व्यतिरिक्त जे 4 संघ मालक आणि 4 संघ होते त्याच्यामध्ये विशाल गुंजाळ सर, त्याच्यानंतर विशाल सावळे सर, डॉक्टर आनंद नागरे आणि डॉक्टर प्रणित सोनवणे, या सर्वांचा मी मनापासून आभार मानतो. IMAच्या अध्यक्षा डॉक्टर राजश्री पाटील मॅडम अत्यंत शॉर्ट नोटीसवरती वेळात वेळ काढून आज रविवारच्या दिवशी या पारितोषिक वितरण समारंभाला हजर झाल्या, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यानंतर मला CPL साठी ज्यांनी ज्यांनी स्पॉन्सरशिप दिली त्या सर्वांची नावं राहुल सरांनी तर घेतलेलीच आहे, पण पुन्हा एकदा त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो आणि असंच सहकार्य आम्हाला भविष्यात त्यांच्याकडनं मिळत राहो ही अपेक्षा व्यक्त करतो. त्यानंतर 96 प्लेयर्स रजिस्टर झाले होते, त्या सर्व प्लेयर्सचं मी मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांच्यामुळे ही टुर्नामेंट सक्सेसफुल होऊ शकली. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझिंग कमिटी, कारण यामध्ये सगळ्यात जास्त पडद्याआडची मेहनत असते. ट्रॉफीज आणण्यापासून असेल किंवा मग सॉफ्ट कॉपीज बनवणं असेल, डिजिटल मार्केटिंग असेल, बऱ्याचशा गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. माझी ऑर्गनायझिंग टीम ही सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहून दिवस रात्र या गोष्टीसाठी मेहनत त्यांनी घेतली. मी विशेष उल्लेख करेल काही लोकांचा, मी सगळ्यांचा उल्लेख नाही करत कारण सगळ्यांची नावं घेतली आहे, पण डॉक्टर अमोल राजदेव, डॉक्टर जितेंद्र पाटील, डॉक्टर कपिल पाळेकर, डॉक्टर सचिन आहेर, या सर्वांनी वेगवेगळ्या गोष्टींवरती त्यांनी दिवस रात्र काहीच बघितलं नाही. 9 वाजता रात्रीचे इथे की 10 वाजतात की 11 वाजतात ते इथे येऊन मंडप लागलाय का, बाकीच्या गोष्टी झाल्या आहेत का, केटरिंगचं असेल डॉक्टर दिनेश ठाकूर, या सगळ्यांनी जीवतोड मेहनत घेतली म्हणून ही CPL सक्सेसफुल ठरली. या सर्वांचा मी मनापासून आभार मानतो. सगळ्यात शेवटी मी आभार मानतो आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर अनिरुद्ध भांडारकर सर, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय यातली कुठलीही गोष्ट पॉसिबल होऊ शकली नसते. त्यानंतर आज या सामन्यासाठी जे काही प्रेक्षक इथे उपस्थित राहिले त्या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. महात्मा नगरचे सर्व रहिवासी असतील, इथे येणारे जॉगर्स असतील, त्यांनी आम्हाला 3 दिवस सहन केलं, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. महात्मा नगर आणि ही ऑनलाईन तुमच्यापर्यंत ज्यांनी पोहोचवली ते यूट्यूब, डॉक्टर गणेश उमरीकर आणि त्यांचे सहकारी, या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. त्याच्यानंतर AG डिजिटल स्कोरिंग, त्याच्यानंतर NDCAचे सर्व अंपायर्स, त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो. महात्मा नगरचे SGCAचे कोच डॉक्टर श्री शेखर घोष आणि त्यांचे सर्व ग्राउंड्समन यांचंही मी आभार मानतो. 3 दिवसामध्ये जे काही फूड आपल्याला मिळालं ते आमचे IMAचे वर्षानुवर्ष सेवा देणारे श्री ठक्कर, त्यांनी आम्हाला हे चांगलं अन्न दिल्याबद्दल, चांगलं फूड दिल्याबद्दल, वेळोवेळी आम्हाला हायड्रेशन दिल्याबद्दल, फळं उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो.
बॅनर ज्यांनी बनवले ते सिद्धिविनायक ॲडवाले आणि ट्रॉफी लँड जाधवचे ज्यांनी आम्हाला ट्रॉफीज दिल्या त्या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि अशीच भविष्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने ही स्पर्धा चालू राहील. त्याच्यानंतर मोतीवाला कॉलेजचे फिजिओथेरपी कॉलेजचे डॉक्टर वैभव महाजन आणि त्यांची टीम यांनी 3 दिवस आम्हाला जी मोफत सेवा दिली त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. कुणाचं चुकून राहिलं असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. Waiting. Hooray! Hooray! Waiting for the next season, CPL 2. Woo! With lot of surprises. Supernova and Om Warriors. Congratulations again. Thank you all. ठीक आहे दादा. माईक वायर आहे वायर. दीदी उठ गं 1 मिनिट. हा झालं कन्फ्युज झालं. कर जमा कर. थांब 5 मिनिटं तिकडून करू दे मला साइन आउट.